and start the proceeding. Thank you. Hello, Namaskar, and good morning, everybody who are present in the hall. I request all the students to please come forward and sit here, please. आगे आ जाइए आगे आ जाओ बेटा. I take the privilege of starting the proceedings of today, and the first speaker for it is Professor Alok Dhawan. He is at present the director of Center of Biomedical Research at Lucknow, but he has many accolades to his this thing. He was previously that he was the director. He was the director of Indian Institute of Toxicology Research in Lucknow. He also has worked as a director, the founding director, and in the Institute of Life Sciences at Gujarat, Ahmedabad. He has worked a lot on nanomedicine, both in humans as well as in bacteria. And let us listen to him what he has to say today about these nanoparticles. Dr. Alok Dhawan, please. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ कुछ विषय पे चर्चा कर सकूं। मैडम मंजू शर्मा का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया। नासी का आउटरीच प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो साइंस को एक करियर की तरह देखते हैं, चाहे वो साइंस और सोसाइटी हो, चाहे एक्चुअल रिसर्च हो, चाहे साइंस कम्युनिकेशन हो। तो बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें आप विज्ञान में अपना योगदान दे सकते हैं। आज जो मैं बात करूंगा दैट इज सपोर्टिंग रिस्क इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जब तक आप रिस्क को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश, कोई भी संस्थान आगे नहीं बढ़ता है। और इसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा, कुछ आपके साथ मैं अपना शेयर करूंगा कि कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ एक नया एक तरीके से फ्रेज है आजकल जो हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि अगले साल आ रहा है अप टू 2047, तो जो हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, they will be taking us to the 100th year of our independence. So I think it's very important for us to understand where we are going, what are the key elements that we need to know. And when we talk about Atmanirbharta, when we talk about supporting risk, I think the government throughout, since our independence and even before that, have been looking forward to how they can implement various schemes. And the only person that I think of, and I think many people mentioned yesterday also, was the most respected Dr. APJ Abdul Kalam. आज भी लोग कहते हैं कि वो साइकिल पे रॉकेट लेके जा रहे हैं। So that shows two things. खासतौर पे आज के बच्चों को होगा, बड़ी-बड़ी मशीनों के पीछे ना भागे, अपना दिमाग से अच्छी मशीन नहीं आपके पास। फ्रूगल माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आप कम पैसे में, कम लागत में अच्छी साइंस कर सकते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, उसके बाद उसको कैसे आंसर करना, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा इसके विषय में, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए कैसे हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कल ये मुझे पता लगा कि ICMR 1911 में दूसरे नाम से चल रहा था, but I was not aware, so I apologize to Dr. Patoj who's sitting here, he was the former DG ICMR. But formally अगर हम इन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी, और धीरे-धीरे करके अलग-अलग समय पर जैसे-जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और अंत में एक डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी 1986 में हुआ, उसकी भी सेक्रेटरी हमारे साथ बैठी हुई। तो बहुत ही अद्भुत दिन आज हमारे लिए कि दो सेक्रेटरीज जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े विभाग संभाले, ICMR और DBT दोनों हमारे बीच में। इसमें एक खास बात थी कि क्योंकि CSIR शुरू बन गया था, तो पता नहीं आप लोगों ने रॉकेट बॉयज देखी नहीं, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म पे थी, देखने वाली थी। कैसे उस टाइम पे कैसे रिसर्च होती थी, कैसे आसानी से फंडिंग मिल जाती थी। उस समय जब इसरो को लॉन्च करने की बात हुई,
तो कहा कि भाई इसरो के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसरो को लॉन्च करें, दिस हाउ द फिल्म गोes. So ultimately it was decided, okay, we'll launch it based on the fact that it is strategically important. लेकिन आप इसका जो प्रोजेक्ट है वो CSR से अप्रूव करा, तो इसरो का प्रोजेक्ट actually got approved from CSR and then only it was launched. So I thought this is how the ecosystem over the period of decades evolved in India, and I think it has done fairly well in terms of the evolution of the ecosystem. अगर मैं CSR, क्योंकि मेरा सारा जीवन CSR की था, तो मैं उसकी बात करूं तो हर एक प्रदेश में ऑलमोस्ट एक CSR की लैब है, 37-38 laboratories across the country depending on the problem that had to be solved. तो मैं कल मैडम से बात कर रहा था कि जैसे अगर नमक के ऊपर चर्चा होती थी, सेंट्रल सॉल्ट मरीन सेंटर जो है वो गुजरात में एस्टैब्लिश हुआ, केमिकल्स की बात होनी थी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में एस्टैब्लिश हुई. इस प्रकार से बायोलॉजी की जितनी लैब्स थी, CDRI, सीमैप, IITR और NBRI वो लखनऊ में एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि सबसे पहला पुराना मेडिकल कॉलेज KCMU था, तो इसके ड्रग डेवलपमेंट की शुरुआत की. तो एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी, इन सब ने एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया. इस समय जितने बड़े CEOs या जितनी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, वो ज्यादातर या तो CSR टेक्नोलॉजीज को आगे लेके गए. जैसे आपको बताऊं, पहला जो ट्रैक्टर था स्वराज, वो CSR टेक्नोलॉजी था, या आप अमूल का दूध जो ड्राई मिल्क पाउडर लेते हैं वो CSR टेक्नोलॉजी. लेकिन उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी पे CSR के ठप्पे की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनका ऐसा पब्लिक फंडेड मनी आप उन लोगों को दे दिए टेक्नोलॉजी. सो टू द इफेक्ट कि आज जो हम सिरेमिक टाइल यूज करते हैं वो भी CSR टेक्नोलॉजी. So over a period of decades, we have used technologies that have come from these laboratories, and they have not only educated people or trained people in certain fields, but they provided a lot of entrepreneurship, lot of employment to people. I think that was remarkable. इसरो क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में, तो मैं आपको कहना कि कितनी ये अभी प्रोफेसर कटोल से बात हो रही थी, we need to have a mission in our mind. Just for the sake of doing work, we should not do work. एक टाइमलाइन होनी चाहिए, मिशन होना चाहिए, क्या अकम्प्लिश करना होना चाहिए. तो अगर हम इसरो की बात करें तो धीरे-धीरे करके देखिए आप, ये मार्स ऑर्बिट मिशन की बात हम करते हैं. उस टाइम में अहमदाबाद था. There was a lady who was involved in this mission, and she was given the task to make a camera for this mission. 2 महीने के अंदर 200 ग्राम का कैमरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से बन के उस लेडी ने दिया. जो फर्स्ट फोटोग्राफ उसको शॉर्ट फॉर्म मॉम दिया गया था, मदर बोलते थे, मार्स ऑर्बिट मिशन. तो मार्स ऑर्बिट मिशन की जो पहली फोटोग्राफ्स खींची गई थी उस कैमरा से खींची गई. So I think this is remarkable how, and you must have seen this time almost 50% of the people who are involved in decision making in ISRO are ladies. So I think it is again very remarkable how phenomenally well the women scientists have done in ISRO. और आगे आने वाले मिशन जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे तक हम 2040 में हम मून पे होंगे. मैं So it is remarkable. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अगली स्लाइड पे कुछ उसके ऊपर भी ध्यान आपका आकर्षित करेंगे. ये इसलिए भी होते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक फेंस पे बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि आगे हमें कहाँ जाना है. परहैप्स आप जब इस तरह की चर्चाओं में प्रतिभाग खुद भी करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा कि कहाँ हम जाएंगे. और इसी प्रकार की एक हमने कराया था फंक्शन. इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2023 में एक इनैक्टमेंट हुआ है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, जो कि SCRB को आगे लेके जाएगा. SCRB खत्म हो गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. इसका एक फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, उनको रिसर्च फंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी. तो मैं समझता हूँ इससे भी एंटरप्रेन्योरशिप हर एक स्तर पर डेवलप होगी. जहां पर आपके टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको आगे लेकर आपको जाने में बहुत फायदा पहुंचेगा. जिस संस्थान से मैं आता हूँ उसका सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च नाम है. ये एक ऐसा संस्थान है भारतवर्ष में इकलौता जो कि NMR के फील्ड में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है. और साथ ही सिर्फ ये काम अपना जो है वो ज्यादातर पेशेंट केयर के ऊपर काम है इसका. और हम लोग ने अगस्त में यहाँ पर एक वुमेन ड्राइविंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 200 PhD छात्र और अर्ली करियर फैकल्टी ने प्रतिभाग किया. लेकिन इसमें जो बहुत जरूरी चीज थी वो ये था कि हम लोग ने कोशिश करी जो इंडिया में टॉप लीडरशिप थी साइंस की,
चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो एकेडेमिया में हो, उनको हमने बुलाया। और आप नीचे देख पाएंगे कुछ लोग जरूर हैं जो हमारे मेल स्पीकर्स थे, but there were also very high order male speakers that we found had really contributed in the field. चाहे वो रिकी केज हो, he is a 3-time Grammy Award winner of environment. But what I'm trying to say is that all these people from industry and academia have actually trained lot of youngsters, and ultimately they have gone on to become entrepreneurs. They have gone on to become academic leaders as well. And one personal story I'd like to share, that there was a girl attending this series or this workshop of 2 days. She had completed her MSc in mathematics, and after this workshop was completed, she was fine. But I think somewhere around March this year or April this year, there was an advertisement for a PhD program, and she said, "I'd like to pursue a PhD." So currently, after attending this program, she got excited and she is now joining PhD in August this year at IIT Jodhpur. So I think even, and I'm aware of that girl who has joined because she was my daughter-in-law. Others I don't know, but I think if people get converted towards good quality science and research, I think these kind of workshops are very fruitful. And I must say, madam, आपको बताना चाहूँगा, she's also opened a startup of her own, which will be registered this month itself. So I think to that extent, this was quite successful. ये प्रीवियस इंस्टीट्यूट का बताना चाहूंगा, ये टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये भी भारतवर्ष में इकलौता एक सीएसआई का संस्थान है जो कि टॉक्सिकोलॉजी पे काम करता है, और इसका हिंदी में नाम विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। तो डॉक्टर शर्मा साहब यहाँ बैठे हैं, कल से बहुत विश्व चर्चा हो रही है, but I think टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच इज ट्रांसलेशन नेचर। जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उसकी टॉक्सिकोलॉजी होती है, तभी प्रोडक्ट मार्केट में आता है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो ये पानी बोतल आपके सामने रखी है, जो पहली कमर्शियल वाटर बॉटल लॉन्च हुई थी, उसकी टेस्टिंग हमारे इंस्टीट्यूट ने करी, तब लॉन्च हुई। सो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इंस्टीट्यूशन हैज कंट्रीब्यूटेड। प्लास्टिक टेस्टिंग कहीं नहीं थी, इस इंस्टीट्यूट ने 1986 में एस्टैब्लिश करके प्लास्टिक टेस्टिंग शुरू करी। बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग लेके आए जो कि इंस्टीट्यूट में जरूरत थी, और आगे चल के हम लोग को देश को आगे ले जाने में, आत्मनिर्भर बनाने में काम आए। इस संस्थान में बेसिकली 4 वर्टिकल्स हैं, बेसिक, अप्लाइड, रिसर्च तो है, लेकिन एंड में अगर आप देखेंगे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चले। और यहाँ पर एक हमने सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन रिसर्च सितार करके खोला था, जिसमें एवरीथिंग इज अलाइंड। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे या आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, तो आपको बेसिक साइंस का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना बिजनेस मॉडल का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर एमबीए के छात्र छात्राएं बैठे हैं, आपको बताना चाहूंगा, जब आप एमबीए करके मैनेजमेंट करने जाते हैं तो आपको भी साइंस का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कि क्या चीज आप सेल करेंगे, क्या चीज आप मार्केट करेंगे, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इस आज के संदर्भ में, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं, तो हमने सोचा कि हम एक वाटर को एग्जांपल लेके आगे चलते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ने वाटर के क्षेत्र में योगदान दिया, कैसे उसने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग के घर में फिल्टर्स लगे, लेकिन एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप करी, जो कि एक तरीके से कंज्यूमेबल फ्री थी। इट वाज बेस्ड ऑन वेरी लो लेवल करंट which will disinfect the water. It will take care of all the microbes, and majority of our problems are because of the microbes in the water. तो अगर microbe free water हमको मिल जाए तो उतने में काम हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को जब हम लोग आके लेके पढ़े तो हमको पता लगा कि ये केवल 1 पैसा प्रति लीटर की दर से वाटर को डिसइंफेक्ट कर देती है, and that is very useful as you don't have to renew anything. ऑटो इसमें जो क्लीनिंग है वो भी ऑटो है, वो अपने आप ऑटो फ्लश करके साफ कर देती है। And as soon as we brought this out, इसकी भी एक छोटी स्टोरी थी। We got a project from CSIR. It was a mission project for developing technology for 18 months. But because this was 100% engineering problem, so we hired certain engineers to help us. तो हमारा जो initial thought process था बहुत ही साधारण सा एक फिल्टर बनाना था, बट व्हेन वी कॉन्टैक्टेड इंजीनियर्स, उनका नहीं साहब इसको आईओटी इनेबल्ड बनाएंगे, टोटली ऑटोमेटेड बनाएंगे, तो हमने कहा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हेन वी हैड दिस इंजीनियर्स ऑन बोर्ड, विद इन 3 months
we got this first prototype ready within 3 months. Okay, this was the first prototype. हमारा 18 महीने प्रोजेक्ट था, 3 महीने में खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को बाकी 15 महीने मिले इसको मार्केटिंग करने के लिए. So then we went ahead and understood, of course, the business plan was laid down beforehand, but we knew the stakeholders. So we met the stakeholders, and this technology was transferred to 2 stakeholders. It was very much appreciated by the then Honorable Minister of Science and Technology, who also tweeted our technologies, saying that it would be very useful for the rural development or rural folks, because it is running on solar energy as well. And one of the technology was transferred to an entrepreneur in Delhi in 2018, and the other one was transferred to an entrepreneur from UP. The other I would like to share with you is, again, how the risk has been supported. So there was one scientist at our institute जो कि डेटा साइंस में इंटरेस्टेड थे, तो उनको इटली भेजा गया 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में. जब लौट के आए तो उसके बाद एक ग्लोबल बर्डन डिजीज की कॉल आई. उन्होंने कहा सर मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ. जरूर आप करें अप्लाई. इंडियन डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे हम डिजीज बर्डन के. और आप विश्वास मानिए कि आप ये देख सकते हैं 2016 से 18 के बीच में ये नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं. तो 18-19 पब्लिकेशन लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में उस संस्थान से निकले. अगर हम उसको प्रमोट ना करते, हम उसको बिलीव ना करते, तो यहाँ तक हमारा संस्थान न पहुँचता. मैं समझता हूँ जहाँ पर भी किसी के अंदर एक स्पार्क दिखे उसको उजागर करना चाहिए. आई थिंक वी शुड एंश्योर. मैडम मुझे बता दीजिए जब खत्म करना. अब इसके फायदे क्या पहुंचते हैं? तो ऑफ कोर्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज से जो भी रिजल्ट निकले, निष्कर्ष निकले, उनको बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स उन्होंने यूज किया. लेकिन उससे हमको ये पता लगता है कि किस एरिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि किस दिशा में हमारी डिजीज कंडीशन जा रही कंट्री वाइज. वो भी तो चाहे वो इंडिया रहा हो, ब्राजील रहा हो, इन सब ने उस डेटा को अडॉप्ट किया और पॉलिसी की तरफ मूव किया. ये लास्ट कहानी मैडम जहां बोलेंगे रोक दूंगा. जब मैं छोटा बच्चा था, it is 2005, and this is a very interesting story, and I will end with this. I was interacting. I had gone for some other piece of research, interacting with 2 chemical engineers, and this is an actual photograph of the day which the story actually happened. Vladimir Taravara is a Russian person working in Michigan State, and he was Shayyad Hassan. Again, both of them were chemical engineers. तो इनके साथ डिस्कशन फ्राइडे को ये हो रहा था. दिस इज द फ्राइडे ऑन व्हिच दिस डिस्कशन हैपेंड कि हम लोग नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, आप इसकी टॉक्सिकोलॉजी कर दीजिए. एंड आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग 2005 मुझे नहीं मालूम था नैनो पार्टिकल क्या होता है. सो वेरी आई वुड से in a way that it doesn't offend them and doesn't offend us as an institute. मैंने उनसे कहा कि I come from a government institution, so I have to take permissions from the director, only then I can commit anything. तो मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या बात कर रहे हैं. Then I went back to my lab and then I studied about nanomaterials, what is happening at that point in time. And then I wrote an email to my director. That is where risk support comes. This was the long email I wrote to him कि साहब ये काम हो रहा है, he was the director then. और यूरोप में और यूएस में बहुत तेज काम हो रहा है. आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस काइंड ऑफ वर्क इन इंडिया. टॉक्सिकोलॉजी शुरू करनी चाहिए नैनोमटेरियल्स की. उन्होंने देखिए क्या लिखा, डियर राघव प्लीज गो अहेड, बेस्ट विशेस सीएम गुप्ता. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो 2 चीज मैं बोलता हूँ. एक, if there is a crazy person to take up some problem may not be successful, that is true in entrepreneurship, let him do it or let her do it. आप सपोर्ट कर दो, उतना ही बहुत है. ठीक है. दूसरा, आप स्पीड देखिए. जिस दिन मैंने भेजा, मैं मैडम कल कह रहा हूँ सुबह 6 बजे डायरेक्टर उठ के ईमेल का जवाब दे रहा है. तो लीडरशिप को बहुत दर्शाता है कि किस समय भोर प्रातः आपने एक डिसीजन ले लिया. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एंड यू विल सी हाउ द हिस्ट्री वाज मेड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जब मुझको जवाब मिला, मैंने मंडे को उनको जवाब दे दिया कि हम करने को तैयार हैं. जब मैं वापस जाऊंगा तो उसके बाद मैं उस पे काम शुरू कर दूंगा. दिस वाज द पेपर दैट केम आउट फ्रॉम दोस पीपल. एनवायरमेंटल साइंस टेक्नोलॉजी का पेपर है 2006 में. ये व्लादिमीर का और हशम का मोस्ट साइटेड आर्टिकल है उनकी हिस्ट्री में. अब तक इससे ज्यादा साइटेशन किसी आर्टिकल को नहीं मिला. क्यों? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया. अगेन आई कम टू द पॉइंट कि जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोचें तो पूरा सिस्टम समझ लें एंटरप्रेन्योरशिप का. अगर आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे आएगी. सो दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, दे आइडेंटिफाइड पीपल हु कुड कोलैबोरेट. This has more than 350 citations now.
So for them, it was the best publication, and this was the starting of nanomaterial toxicology in our country. So I think both ways it was a win-win situation. And this later on became policy, so I'll share that with you. So this was another interesting paper. I have taken out all the details. अब आप इस पे ध्यान दें, ये 18 जनवरी 2009 का पेपर है. इसके तुरंत बाद यूरोपियन कमीशन से हमारे पास फोन आया और अब तक इसके 750 साइटेशन ज्यादा हैं. अप्रैल 22 में ये पूरा पेज उन्होंने एनवायरमेंट पॉलिसी के ऊपर हमारे पेपर पे लिखा. उनका इस तरह का अगर काम होगा तो हमें पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाएगी. जब पॉलिसी बनती तब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होती, तब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आएगी, तब एनवायरमेंटल यूज के लिए इसको जो है वो अप्रूवल्स मिलेंगे. तो अगर हम इस पे चर्चा करें, 2005 पे शुरुआत हमने उनको लिखा, 2006 में फरवरी में लौटा, अप्रैल में हम लोग ने फैसिलिटी सेटअप करना शुरू की, डीएसटी में प्रोजेक्ट डाला, वो फंड हुआ, 2007 में एक सोसाइटी बनाई, 2008 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी. ये भी एक चैलेंज था. जो उस समय के डायरेक्टर थे, मैंने उनका बोला आप लोग आपका तो भी काम बहुत थोड़ा सा, आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं. ऐसे दो ही तरीके हैं सीखने के, या तो मैं सब विश्व घूमूं वहां क्या हो रहा है, या विश्व के सारे एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ बुला लूं तो सब लोग सीखें. So he said that's a good way of thinking. So we got the experts. We did an international conference within 2 years or 3 years of our establishing this facility. Then we got several projects throughout, international projects, and then CSIR took this seriously and they funded a mega project, a mission program on environmental health and safety. For 5 years, about 12 CSIR labs were involved, and that created a lot of capacity within the country, not only in terms of human resource, but also capacity building in terms of the laboratories. And then in 2011, we did another conference where we released our first guidelines for safe use of nanomaterials. 2016, we established the imaging facility. 2017, we became the CSIR was positioned globally among top 5 in the world. 2017 July, because of the work in nanomaterial toxicology, the University of Bradford awarded me the honorary DSc. This was the first in their history for anybody outside of the UK. And in 2017, we published our first book on nanomaterial toxicology by the Royal Society of Chemistry. And then we had a series of books on the various work that we had done in nanomaterials. So this was the guidance document that we published. Later on, a guideline for evaluation of nanopharmaceuticals was published, which was a joint effort of CDSCO of the Department of Biotechnology and the ICMR. And it was released in 2019. I was one of the authors as well as the editor of this nanopharmaceutical guideline. A lot of inputs went through because of the work that we had done in the institution. So what we started as a small research project actually transformed into the guideline. I mean, just 100%. Done. So this became policy. Later on, the agricultural people also came forward, and another guideline for agri-based inputs in nanopharmaceutical was formulated. So now a lot of people from the pharma sector and from these sectors have come forward with products. The European Commission came up with a guidance document. They cited 4 or 5 articles of ours. The Nano Mission came up with a guidance document that was basically based on our guidance document. We trained people from 8 countries, European countries, to come and participate and learn how the toxicology of nanomaterials is done, and they went back and established it in their own countries. So you can see एक छोटी सी जो चिंगारी थी जिसको बढ़ावा मिला वो यहाँ तक पहुँची कि अब हम विदेशों को भी ट्रेन कर रहे हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनकी भी एंटरप्रेन्योरशिप इस एरिया में डेवलप होगी. मैं समझता हूँ कि और इसमें मैं खास तौर पे इस लड़की को बोलना चाहूँगा. शी वाज फ्रॉम यमुनानगर. बस ये लास्ट है आधा मिनट अगर I think because it's an all girls affair, so I should share her story. She came to me with her mother after completing her masters, and she said I want to do a PhD. इनकी मदर इनको लेके मेरे पास आई जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो मेरे वो कहे सर ये मैं आप क्लास बच्ची छोड़ के आ रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा. तो मैंने कहा मैडम मेरा काम नहीं है, पर आप बच्ची मैं तो जानता नहीं था लोगों से. तो मैंने कहा भाई आपकी बच्ची है, इफ यू डोंट ट्रस्ट हर टेक हर बैक. तो ये क्या मतलब? हमने कहा ये मतलब है आप हमसे क्या ख्याल रखना मतलब आपके बच्चे को ट्रस्ट करते क्या? What I was saying is if you don't trust the person across, then you don't get anything in return, right? So she said नहीं हम तो बच्चे को ट्रस्ट करते. तो हमने कहा साइंटिफिकली आप मेरे ऊपर छोड़ दो. Individually she has to take care of herself. Wherever she is, I am her local guardian, don't have to worry. चलिए.
Then this girl came back. जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो आगे टीचर्स हैं कृपया ध्यान न दें जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो ये लड़की लौट के आई, बोली सर ये बताइए मुझे करना क्या है। That was the first thing, and I was sharing this yesterday over dinner. तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, बस यहीं पर एक खिड़की है ये। मैंने कहा बेटा इस खिड़की को खोल दो। तो बड़े आराम से इस खिड़की खोल दी। सेकंड फ्लोर पे लाती हूँ। मैंने कहा नीचे कूद जाओ। आप कुछ सुन लेना बच्चों। बोली सर क्या आप कह रहे हैं? फर्स्ट डे विद इन द आवर ऑफ हर जर्नी। तो हमने कहा तुम्ही ने तो पूछा क्या करना है। मैंने कहा तूने पावर पॉइंट बनाया जिंदगी में? बोले यहाँ से बनाया है। मैंने कहा एक पावर पॉइंट की स्लाइड खोल दो। उसने खोल दी। राइट क्लिक करो। राइट क्लिक किया। मैंने कहा गाइड्स ले आओ। गाइड आ गई दो। मैंने कहा कहाँ स्लाइड लिखी? कुछ लिखा है इसमें? बोले नहीं। तो हमने कहा गाइड तो तुमने दे दिया, तो लिखा कहाँ? लिखेगा कौन? आप। प्रॉब्लम कौन ढूंढेगा? आप। गाइड गाइड है बस, ये आपको अलाइन करता चलेगा बीच में। Wherever you require the alignment, you'll align. Wherever you require some input, they will give you input. But if you expect the guide to tell you the problem, guide to solve the problem, become a good technician. आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे, लेकिन अच्छी वैज्ञानिक कभी नहीं बनेंगे। वैज्ञानिक तब बनेंगे जो अपनी सोच होगी, अपनी प्रॉब्लम होगी, कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि इस लड़की ने हमारे यहाँ पीएचडी खत्म करके एनआईएस में काम किया। अब एक चार्ल्स रिवर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एक वर्टिकल की शी इज द हेड ऑफ दैट वर्टिकल। ओके, इट इज अ सीआरओ नाउ इन द, शी सेटल्ड इन द यूएस नाउ। And she struggled in the first 6 months or so, but ultimately she found her niche. I think she alone has over 3,000 to 4,000 citations of her publications, which is equivalent to some faculty members in the university. तो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक इकोसिस्टम देते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक इकोसिस्टम दें। महिलाओं के विषय में मैं जरूर कहूँगा कि इकोसिस्टम goes beyond the boundaries of science. And again, एक छोटा सा हम लोग ने इनिशिएटिव लिया था मैम, that in our institution at IITR, the girls used to go back home at about 5:30 in the evening. So when I became director, मैंने पूछा कोई क्यों जो लेडी साइंटिस्ट क्यों लोग चले जाते हैं? बोले साहब यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है शाम को, यहाँ को कोई जाने के लिए साधन नहीं होते हैं। तो हमने एक छोटी सी so we put a video cameras in all the 360 degrees का जितना public spaces थी CSIR IITR में सब कवर हो गए video cameras. Within I think 3 to 4 months, the girls were playing badminton at 9 p.m. in the evening. Canteen की उनको प्रॉब्लम थी, कैंटीन 7 बजे तक खोली तो बाकी खा लेती थी रात में। खेलते रहते थे वो लोग, काम करते रहते थे। ऊबर आना शुरू हो गया, पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। रात में वहाँ पर उनको साधन मिलने लगे, सब हो गया। So I think it is important for people like us, people, the male members sitting in the front, they should realize there are very small issues with women. If we are able to create that ecosystem, they can flourish. Same is true in entrepreneurship. There might be small ticklish issues which can be taken care of by us. And I think once again I compliment the National Academy of Sciences, the Pacific University, and of course the organizers who have done a wonderful job in organizing such a brilliant conference. And I'm sure that एक चीज जरूर करिए, जो भी आप लोग के recommendations तो government तक पहुंचेंगे मैडम, so I'm sure that something will come. So इसके साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। Thank you very much, sir, for this enlightening lecture. जिस तरह से आपने भी प्रोग्रेस किया, बाकी सबको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो भी आगे बढ़े। Thank you very much. Speaker is Professor L.B. Padma Srivastava. She head Department of Neurology and Neuroscience. She is being awarded the Padma Shri by President of 2016. She has been fellow of PINSA, UNASI, and also FSS. She will speak on AI neurology and
Something about it. Good morning. I'm really sorry about this technical glitch. Something just it's not been my day. I've just got out of the wrong side of the bed. I guess. So thank you so much for the kind invite, especially to Manju ma'am and everybody out here for giving me the honor to address you. So I actually am the ex-head and the ex-chief of neurosciences at Ames because I've left Ames. Just 10 years ago, I've joined another sector, but we'll come to that a little later. So I was not really, I didn't know who I was addressing to, so this is going to be more technical and more of pure neurology-oriented talk, but I would like to start off saying, I want to quote a couple of lines from one of the recent non-fiction books that I've been reading. It says that the twin revolutions of this century is basically biotechnology and information technology. And it also says that at one point of time, would the innovations of mankind make him irrelevant? So that's a huge question that it's like an elephant in the room that we probably are currently ignoring. So I'm going to talk about artificial intelligence because that's the first word and what it actually means in terms of clinical science and the clinical practice is based on the cogent pillars. It has to be sound clinical science. It has to be ethical practice. So this is again a famous quote from Hippocrates who says that life is short, art is long, opportunity fleeting, experience treacherous, judgment difficult, and nothing else summarizes the time-sensitive management of some critical illnesses that we often face. Seriously, this is so nicely summarized by Hippocrates there. So we are now faced with an industrial revolution. Machines outperform humans in physical tasks. And then it said that for every job that man lost, another job was created to supervise the machines. But then there's also this famous conclusion which says that there would be an era where it's not artificial intelligence or machines alone which would rule or the humans would rule, but it would be the AI and humans in cooperation, not in conflict with each other. It's a cooperation with AI and humans will probably be better than having the standalone verticals of humans or AI. So what is artificial intelligence? And I'm sure this is like Karen Coach in Newcastle, so most of you would be aware more of AI than I'm a simple clinician. That machines are now capable of performing those tasks which were traditionally attributed to be just human attributes. Problem solving, thinking, cognition. Those are not thought to be machines. So you have several subtypes, and again, I'm not going to go into the
the integrity of the AI and machine learning, but we now know that as it has evolved from simple, Google Maps to that of deep learning, and those innovative things that the machines are learning by themselves, spitting out those algorithms, which sometimes is a black box for us. So the rule-based expert algorithms this is the classic navigation maps on Google, and every driver uses a Google map. He has a smartphone. You're all well aware of that. And the trained AI algorithm, in principle, acquires enough power, it gets power to outperform the human, the reasoning skills and preempting and preventing or probably managing any of the challenges that may come across in performing that particular skill or task. So that becomes sort of something that human beings may not understand. So there's probably a time, according to that non-fiction book that I was reading, that maybe everything gets then determined on the algorithms, and then you become everything virtual. You have a virtual money, you have a virtual bank balance, you have a virtual performance. And I think that you're still doing it. You're actually not dealing with absolute currency. It is always, an app to another app or a system which is in the virtual world. So coming down to clinical science, and if you have to apply it to the core neurological science, I'll start off with stroke because that's one single most important problem in neurology, which is life-threatening. And I speak to you, and Sir has this is a beautiful talk, sir. I really thank you for that. So in that, he did say that you have this the time sensitiveness of certain resolution of certain problems. And I must tell you that in stroke, what he said about disease burden across the society and the publications of global disease burden. One such publication was in 2017 in Lancet, which again came from the collaborative work of ICMR, the PHFI, the Ministry of Health and Family Welfare. Probably maybe some of your scientists may be involved in that. That actually texted out the tectonic shift that we've had in the pattern of disease burden across states in the country. So from something like 1990 to 2016, it seemed that they from non-communicable, which actually emerged as the most important of non-communicable, from non-communicable came that big paradigm from one of mental child health, the potable water, cleanliness, and all the communicable diseases. And I'm not talking about COVID era at all. So the NCDs we know now are top 6. It's not even 5 because the 6th one is non-alcoholic fatty liver disease. It got just introduced in November 2022 when we released the guidelines for most of these NCDs. So in that, as I speak to you, there is a stroke happening every 40 seconds, every stroke death is happening every 4 minutes. So it is humongous, it is staggering, the statistics are really draconian, and it is something which you can't shut your eyes about. So, and then there is a timeliness in that management of stroke. So every point of care in the stroke chain of survival is time sensitive. You need to recognize the time, you need to rush to the right person at the right time, and then you have a clock, then the clock needs to go in time. So in that, can we get in the artificial intelligence to help us out, to smoothen out and make it optimize this stroke chain? So it said that every single thing which I've listed out here, whether it is monitoring the functions, predicting the stroke prognosis, and prediction of whether someone is likely to get a stroke in the population, in every which way you can think about, AI seems to have an edge if it is currently put into the algorithm. I'm not saying it can do it without humans. So this is the current figures of stroke as it stands in India, and then and there's also a number of stroke facilities that we have in India. So it is said that stroke-ridden hospitals, we are 1.4 billion, and we probably will be having another Australia in the next decade or so. So that's not
improbable. So with the 1.4 billion population, the stroke-ready hospitals we have in India are 300. And the primary stroke care centers are about 700. So I think in Udaipur probably we have two. And every day you have 4,500 strokes happening. And if you're looking at the clot license rate in India, that is, there's a clot and you have to dissolve the clot ASAP. Otherwise, you have zillions and trillions of neurons are lost forever, and still haven't found this thing about brain transplant yet. So IV thrombolysis rate currently is just 1 to 2%. So that really sounds dysfunctional. That's so the basic two tenets in stroke management time is a sense, and a large part of it is about stroke imaging. In fact, with this, the Amazonian advances in imaging, whether it is CT-based or MR-based, we know everything. We know whether it is a stroke. If it is a stroke, is it a bleed in the brain or it is a clot? And if it is, which artery is blocked? Is it a big one? Is it a small one? How can I dissolve that clot? Do I need just an intravenous drug, or do I need to do some contraption like putting a wire and taking it out? What would happen if I do that? Would there be bleed in the brain? What about my stroke recurrence? What would be the prognosis? What have you? So the entire tapestry of what can happen in stroke, you can get it, whether it is CT or MR based, in 6 minutes flat. And that kind of an advance is what has made us get those kind of data. Everything depends upon the big data and the big data analysis. The AI is entirely based upon how much data you get it. The bigger the data, the better and more likely or true would your algorithms which it comes up. So therefore now, using this data and using the AI, you are able to identify all what I have told you in less than 6 minutes. In fact, there are now the packages or the apps which are available, which are commercially available. So using that, what happens now is you can apply that app there, and the color-coded system is then generated, which tells you, when I say LBO, it's a large vessel occlusion. All of you can have your own the little fingers, use your own little fingers. That is the size of your internal carotid artery. Put it into your, across your neck. That's the size of your internal carotid, which is a main artery going into the brain. And half of this has a vertebral artery behind in the neck. And these are the arteries which are going to supply the entire brain in a classical network of, they branch out and becomes a tree. So if this artery is blocked, or the major branch is blocked, it's called a large vessel occlusion. So you are able to know that using AI very quickly, because if there is a large vessel, then it's not going to be some simple small hospital which is going to give you an IV. You need to go to a bigger setup, and you need to go there ASAP. Don't waste time. And then there has been a lot of work which has been done already. What I'm talking to you is not off the hat. These are published literature which actually have used this automated software called Rapid. The thing is, this Rapid software has been used, and they took out this data from Rapid software, and they used the data which they got from published data in using the human eye, and then correlated, and they found that definitely it seemed to be doing the work. And there is a challenge called IRIS challenge, which goes on in terms of, it's basically environmental engineering, and they give out these challenges about optimizing and kind of inventing newer things. And in that 2019 and counting, they had found that a lot of participants and servers say maybe they come out with the think tanks are basically young people and young minds, and they generally think out of the box. When we also had our stroke week, 29th October was the International Stroke Day. And then we actually do this public awareness. Last year, I had actually given this topic to school children, and I asked them, not stroke ready or how do you reduce risk factors and etc. brain health. But I told them, how do you make India stroke free? And it was amazing how they came out with such innovative ideas. And I always thought, maybe you should have this really young minds who are not corrupted by, challenges of practicality and think big. And they should get into the think tank of within the government where they do some of these changes. So the other thing is that if you have an ischemic stroke, then hemorrhagic transformation is that turns into a bleed. Now, what are the chances of that?
that also has been thought to be outperformed by this AI. But when I talk of this CNN, these are actually artificial neural networks which are being formed by the machine, and they're called deep convolutional neural networks. Some of those terms are so the tongue twisters. I don't even get into it. I don't understand engineering, but it is great to work with them. And I do have dialogue ongoing, and I've been working with IIT Delhi Biomedical Engineering for a while now, wherein we've also developed low-cost assistive devices for life after stroke. So long-term outcome again, AI has been able to use. Usually what we do is we look at the CT or MR, we look at the angiograms, we look at the vessels. It's just like heart attack. You do a CAT, you look at one vessel block, two vessels block, three, you do a bypass or you do an angioplasty stenting. It's the same story except that the organ is now the brain. And there is no muscle in the brain. And always says, my heart bleeds. Well, the heart never bleeds. The bleeding happens in the brain. It's funny though how we have this emotional things which are so different from science. But it's been said that prediction of long-term outcome as well has been done by the machines. So again, how do all these networks work is that you just feed in the data. And when we all now are realizing data is so important, probably the data would be a main currency in future. That data about now freely we are giving away data, isn't it? For any app, then you need to feed in your personal data, and that we probably whether it is a Myntra.com or whatever it is, it'll ask you where you are, your address, what is your gender, what is your age, and then accordingly, then we keep getting those something will pop up and say that look, I've got this new application or a new dress or this, and it comes up, and I think that based upon what data they already have about you. So I think the data would be the ones which maybe now there are few grocers like maybe Google or Facebook or maybe somebody else. But then ultimately over the next century, I'm sure most of us would not be alive, but then for the younger people and the young ones who come after the younger generation, we probably will have to deal with this system wherein everything becomes virtual. There is AI and humans, and a lot of it would be virtual data on which most of our preferences and everything is dependent. And that's what was actually being seen here as well. That then they looked at the pure clinical scores. I'm looking at a patient, taking his vitals, there is a neurological examination. And the other thing is this neural network, which is AI based, wherein whatever little data I feed in, what I'm trying to get out of my clinical sense of seeing 1,000 patients, this AI is giving me in 6 minutes flat. So it's sometimes pretty scary. So in the terms of application of AI and stroke, it seems to have a very heavy impact in terms of the entire clinical course of stroke, and in conjunction with the tele-stroke networks, this automated imaging, automated interpretation, automated data analysis will quickly give you this algorithm. Do I thrombolize? I don't thrombolize. Do I give a mechanical thrombectomy along with thrombolysis? What would happen to the patient? What would be the prognosis as well as how am I going to prevent the strokes? Okay, so now and then this cardiac arrhythmias, of course, this becomes now a sort of it is a old news, I guess. All of you have these Apple watches, and it's screening out your heartbeat, whether there's any irregularity, your blood pressure, you're doing 10,000 steps, and so on and so forth. So it's actually been said that AI-based detection of cardiac arrhythmias, especially in patients who don't sudden cardiac death. We have a lot of young patients who just drop down dead. Now that could be genetic, that could be 100 other things, and still there's a research going on that. So detecting these cardiac arrhythmias and also in rehab and various other issues. Let me tell you one thing. When I say time sensitive and for clot lysis, it has to be 4.5 hours of onset of stroke. That is really something else. You should know what is a stroke, come to the right place. It may well over be 12 hours, 24 hours. There are a lot of people who come much beyond the rigid time window frames. We now have a pathophysiological based assessment, which is based again on imaging, and that is what is called as a mismatch. So there is a problem, but the brain is still alive, it's not dead. So I need to pick up that percentage of brain which is dying but not dead, which is called penumbra.
And that again seems to be better picked up using apps using AI. So technology is able to tell you about prediction, about triaging essentially the emergency movement in terms of picking up and rapidly going to a system which can deliver you the care optimization, monitoring, imaging, outcome, and also probably newer development. And when you're looking at the data, it's image based, it's actually dissecting out each component into pixels and able to define that into a module where you can superimpose and then probably derive this. This is a repetition of what I told you already. And aspects is a score which is clinical scoring, where I delineate out there are different regions in the brain. I'm not getting into a lot of you may not really know what are the actual, the anatomy inside the brain, but enough to understand that there are regions which are, each region in the brain is pretty eloquent in the sense that it would be important for certain functions. Now, when I'm standing up here, I'm talking to you, I want the word which I have to choose to communicate, whether the automatic movements, I have a balance, I'm standing in front of you. These are all actions which we take for granted. Reflexively, we do that. But when the brain stops functioning, this function just stops. Believe me, it's a lifelong doing. So this areas where they map out, and it actually will determine the severity of an insult or which artery or how large was the thing. So whether it's now this is essentially all the arteries, and so these are the large vascular fusions. And as I told you before, it can pick up. And this is a rapid system, as I told you, as an AI, and it gives you this color-coded signals telling you, look, this is pink, this is green, the green is bigger than pink, so there is a dying brain which is not that. Go ahead and be aggressive in your approach. But this rapid AI is horrendously expensive. It is being developed outside. There are few systems who are using it. So we've developed Cure AI. So this is an Indian-based system. So now we have one of those, there's another Make in India concept, which is fast versioning in its application, and it's been now done. And we've used this QRI stroke solutions, whether it is Q aspects, and perfusion, and angiogram. This is now being adapted, and it is in use in certain big hospitals in the country. So there are a lot of potential issues which can even be confusing. So it is that when you're looking at the data, and it is data is not very accurate. There are, sometimes we are on the task forces when we look at projects being submitted to DP, there always is call for proposals, and AI is the buzzword. So a lot of them come with apps and AI. And then they come up with this AI solutions using the 100 patients. And that, we totally reject it because we can't get an AI with 100 subjects or data coming from, say, 100 parameters. So irrelevant information, not sufficient information, untimely, confusing, missing. And then you have this algorithms that it spits out itself for which the human brain can't understand. That becomes terribly, that's a black box. So there are a lot of stroke centers in India. We can do corrected sonography assessment of blood score. Get the AI is being used for that. Stroke risk assessment, I told you before, that is being done, including the artificial, this what is called as atrial fibrillation, very, very irregular heartbeat. Outcome prediction, and I've told you that as well. And on the future seems to be really, really, the horizons are receding. It is unimaginably big in the sense that we're all horizons, it can just go into the galaxy as to what we can do with this AI. So also in epilepsy, the other big thing in neurology, it's able to determine if it is an epileptic event, whether it's a non-epileptic event. It will tell you the predictor of recurrence of seizures. And remember, seizures are extremely common. And with the big stigma attached to it, we don't even want to have so the big treatment gap with epilepsy. So in diagnosing, in prevention, all this, it's and even inter-observer variability is being decreased when you look at the machine learning and AI application for management of epilepsy, both diagnostic as well as in management. So in neuromuscular disorders, again, you've heard of things like motor neuron disease. That's again all these diagnostic things using EMG, EPS. You can do AI. Lot of degeneration disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's dementia.
This can assist in rehab, in also getting assistive devices. In emergencies, continuous monitoring. You don't need to have a nurse sitting there and look at, or a neurocritical person looking at, the vitals. There would be a sudden beat. There will be close monitoring which will be required. Okay, sir. So I'm going to. There are a lot of gadgets which are already equipped. You have a smartphone, smartwatch, tablet-based device. All these are there. The classic is your Apple watches and all. But I'm going to now. There are. There's a lot of. What I would say, greatness in future when you adapt this. There are what I call as digital twins. Some of you know what digital twin is. You have actual heart and you have a digital heart. So you actually perform everything. You can do artificial surgery on it. The same thing with the brain. Heart itself, heart at least you can handle it. Brain you can't take out and handle. So the artificial twin becomes extremely, it's poised in a very critical aspect in trying to understand that. So there are a lot of barriers, and all what we have said, the legality, the licensing, and who's really responsible? Can you make a robot or a machine responsible if something goes wrong? And you recently heard about a robotic surgery having gone horrendously wrong when it performs something. So there is a concern for malpractice, liability, consistency, and everything. So these are all published reports which are there. Huge number of literature. The literature is being accrued. This big dark side, which we still don't understand, and maybe AI will again help us understand the dark side as well. But then, when you develop something and you don't understand what you have developed, and you created a giant. I get reminded of the Jurassic Park series sometimes of having a respect for the power sometimes that you have created. So this is what they said. The man tamed nature to become powerful, invented myths to unite the species, redesign life. But does he know himself anymore, or have his inventions made him relevant? So, but it's not the strongest of species that survive, not the most intelligent. It's the most responsive to change and to adapt. We need to adapt to change. And this is the last four of the photographs. This is a beautiful photograph. Okay. Both are facing poverty, but the daughter still sees dad as a king, and he sees her as his whole world. This is what money can't buy. And here it is, this speaks about humanity. A big salute to this photographer. Can you really, it brings tears to my eyes when I see this. And look at this. This is an actual photograph. I clicked this. This is the floods in Calcutta. I won't say floods. This is when it rains heavily. This is what happens in downtown area. This is near the airport, and that's a little dog. Okay, and both these women carrying the dog with them. And look at this patriotism. Can you beat this? And look at the grins of these little children. They've got nothing. You define poverty this way. Can you say that they're idiot poor in what they're doing? Tell me that. And look at this. This is the last. Can an AI do all this? And I still believe that there is something in humanity and humanism and being human that just can't be machines, whatever it tries to invent and reinvent and outtake. So finally, I think it is a cooperation of AI and humans which will probably be the way forward. And so I do believe that we can make it a friend and not become our enemy. Thank you. Very impressive, excellent talk on the usage of the artificial intelligence in the platform. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Medhavi Gautam. She is actually from Jaipur, and the one thing which I would say that she's MSc and PhD in home science. She mainly works as a nutritionist and as a consultant nutritionist for both for children, for homes, as well as for institutions. And Medhavi Gautam is here for you. Please listen to her and see what she has to say on nutrition and how we can improve our nutrition. Very good morning to all of you, and thank you very much
to the entire organizing team and OES sir to invite me here. It's my honor to be here in front of such big dignitaries. And I was asked to talk about nutrition and how nutrition can help in developing empowered women. And I am a clinical nutritionist working from last 19 years in this field, and try to deal with all the women. Being a woman, I understand the plethora of work we all do, and also try to give away as much as messages I can give to all the women, because we know we are already empowered. We don't need to be empowered more. First, I'll start with understanding the women's unique nutritional needs. So, because we are trying to balance the demands of family and work and coping with the social pressures to look and eat in certain way, and there are so many things around us. Food can our mood, boost our energy, but also help us to maintain a healthy weight. It can be a huge support through different stages of women's life. As children, boys and girls, their dietary needs are largely similar. But when puberty begins, women start to develop unique nutritional requirements. So as we age and our bodies go through more physical and hormonal changes, so our nutrition needs continue to evolve, making it important that our diets evolve to meet these changes as well. While women tend to need fewer calories than men, our requirements for certain vitamins and minerals are much, much more higher than men. Hormonal changes are associated with us. We have menstruation, childbearing, menopause. That means women have to have higher risk of anemia. They have weakened bones. Osteoporosis is quite high in women. We require higher intake of nutrients like iron, calcium, magnesium, vitamin D, B9, and I'll be discussing that. Because I am talking about women, so I'll start with girls, and then I will just go ahead, because here we are mothers of younger girls also. We are mothers of childbearing age also. Menopausal age के भी लोग हैं, and old age people also. I'll be touching all the points here. So as women, many of us are prone to we are prone to neglecting our own dietary needs. ये सबसे common irony है यहाँ पे, that as women we will take care of everyone in the family, right from the youngest to the eldest to the oldest. We will take care of the surroundings, we will take care of the padosi, we will take care of everyone. But when it comes to us, probably we will be the last person to choose nutritionally good food for us. खाना खा लिए सब लोग, उसके बाद में we will sit with our thalis. We'll take whatever is left around, and it is not just with some section, it is probably wide away in all the sections. कि खा लिया नहीं खाया खा लिया, बैठ के खा रहे ठीक है, खड़े खड़े खा रहे ठीक है, भाग लो 10 मिनट में खा रहे 5 मिनट. So we are actually not just eating food to have good nutrition, but we are just eating food to fill our stomach. That's exactly what is happening. And we need to understand that food is the foundation stone, nutrition is the foundation stone of our body. And we have to take care of this. And हर बार मैं एक चीज तो हमेशा quote करती हूँ, and I really like this dialogue from movie जब भी मैं करीना बोलती है मैं अपनी favorite हूँ, है ना करीना का dialogue. And I want all the women to understand this, that this is actually the dialogue. You have to keep it in your head every time, that you are your own favorite and you have to take care of your nutritional demands. Important thing is to build your own dietary choices around you with all the vital nutritional needs. Nutrition requirements vary, and right diet can help us to stay healthy and vibrant throughout your ever-changing life. So as we go through these different stages of life, I'll start with nutrition in girls in childhood and early teens. The best guarantee of the growing girls get is the nutrition they need in diet. There should be abundance of fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, and so whenever I'm talking about the story of women, there are two most important nutrients which every time in every stage comes in. I'm not talking about the macronutrients. I'm not talking about the proteins, carbohydrates, the fats, and all. I'm talking about the micronutrients, which are two most important micronutrients, and that's your iron and your calcium. These are the two most important micronutrients which are mostly neglected in every stage of our life. Getting enough calcium is important in all these stages of ages, but it's particularly important during the adolescence and early adulthood, when the bones are actually absorbing the calcium.
Calcium and vitamin D are often paired as in fortified foods and in definitely in milk. And our body needs vitamin D in order to absorb calcium. The recommended dose for calcium is 1300 milligrams a day for girls from the age of 9 to 19. And natural sources of calcium are all your dairy products, milk and milk products, and there are a lot of green, dark green leafy vegetables also. You definitely require vitamin D and protein, both are required for the absorption of calcium. Milk, yogurt, cheese are most of the commonest calcium sources in our diet. Uh, there are many foods also which are supplemented with calcium and vitamin D. Vitamin D intake should be around 600 units per international units per day for most of the children. And second important nutrient is iron. It's essential for healthy blood cells. Iron becomes especially important when girls begins to menstruate. With each period, a woman loses a small amount of iron. 57% of Indian women are iron deficient and suffering from anemia. The grade definitely varies, mild, moderate, and severe. But 57, can you believe? More than half of the population of women are suffering from यहाँ पे भी randomly अगर मैं hemoglobin profile करवाऊँ ना, so I think half of the ladies here will also come into that category. And the best part is कि हम लोग क्या होता है कि 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11. In fact, I'll not say 12, but 9, 10, 11 वाले hemoglobin, we say we are good at this. We are doing good. We have a lot of energy. रात को सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ. 1 मिनट भी थकान महसूस नहीं होती मैडम. एंड मेरे पास क्लिनिक में ऐसे भी होते हैं जब मैं कहती हूँ कि नॉन हेमोग्लोबिन है, यू शुड थिंक अबाउट इट नाउ, तो बोलते हैं अरे क्या बात करूँ मैडम, हमारे तो 6 पे डिलीवरी करवा दी हमने. तो hemoglobin is one thing जिसको एक्चुअली इतना नेग्लेक्ट किया जाता है. एंड it is not about the present day how you are actually working and doing the things, but it is about the entire life, because this is about the lifestyle we are talking about. So आपको ये देखना है कि लॉन्ग रन में आपको कितना ज्यादा आपके लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है. Until the girls begin to menstruate, they need about 8 milligrams of iron per day between the age of 14 to 18, and the recommended intake then climbs to 15 milligrams. Good sources of iron include all dark green leafy vegetables, beans, lentils, sprouts, jaggery, cereals like bajra, poha, and breakfast cereals. Some of the breakfast cereals are also fortified with and supplemented with iron. There are many multivitamins which have iron, but मैं हमेशा एक चीज को highlight करती हूँ कि in case if we can do it with diet, why not we do it with diet? Supplements in itself say that they are supplements. Supplement मतलब कि आपको उसको diet के साथ supplement करना पड़ रहा है. और वो तभी पड़ रहा है जब हम उसको actually diet में ले नहीं रहे हैं. So if we have a habit to eat such kind of things, and why I'm saying from early childhood, because that's where we are building the habits. And एक बार वहाँ बन गई फिर बाद में आप कितना भी कोशिश कर लो कि हम हमारा हैबिट्स को सुधार ले, तो वो होता है ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में हमारे को ये मैनेज करना कि आप अब क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन प्रोफाइल कम हो गया तो सडनली आपको think about eating good iron rich dishes and I will become a power woman. That's not exactly how it happens. So you have to have it in your daily practice कि आप कोशिश करो कि you have to have at least 3 to 4 times आपका हफ्ते में greens का consumption होना चाहिए. That's how it is. Now we come to the next stage, that is the childbearing age. So यहाँ पे एक और जो add on हो जाता है, that is your folic acid. This is a form of B vitamin which helps prevent neural tube defects which can be devastating and fatal. Many foods are now fortified with folic acid. Most of the women get enough as part of their diet through foods such as again dark green leafy vegetables and resources of folic acid. It is recommended that women take pregnancy supplement. That is, I think many of you have, most of you have gone through this, and you know that you have been supplemented for folic acid tablets in your pregnancy. The recommended dose is 400 to 800 micrograms per day. I'm sorry, I'm having a really bad throat. B12 is the another important micronutrient which we have to cover in our childbearing age, and that is your folic acid. Vitamin B12 is essential for nervous system development and function. Pregnant women who are especially vegetarians or vegans, nowadays vegans are in trend, so I have written that.
may fall short of B12 because B12 is mostly present in animal products, and in vegetarian products it is actually milk products where you can have your B12, some amount of B12 from. There's also one algae which is a vegetarian source called as spirulina, which you get and it is really high in B12 also. Then in teenage and adult women, you need around 2.4 micrograms of B12. Recommended levels is 2.6 for pregnant women and 2.8 for lactating women. Choline is another micronutrient where some studies show a very link of low choline levels to increased risk of neurotube defects in kids. Recommended level have been established for this nutrient, but it is not easy to get enough from your diet. So supplementation is a possibility. Eggs are source of choline. Other choline-rich food includes your milk and milk product, peanuts, and in case if you're a non-vegetarian, some butter. Omega-3 fatty acids. This is a very important fatty acid. I'm sure you must have heard about it. Good fats में आता है ये actually. और why it is important because आपने दो terms सुने होंगे DHA और EPA ये बड़े commonly ads में भी बहुत इसको करते हैं कि ये वाला फलाना ऑयल लीजिए इसमें DHA और EPA होता है तो आपके लिए heart friendly है और बड़े ads आपको ये चीज़ propagate करते हैं. So we have to see that omega-3 fatty acids are consumed in your daily diet, not by any supplementation, but you can easily get it by a lot of things in your diet. Because DHA and EPA, they actually have many roles in body, including the brain health, healthy brain health, and nerve cells. Some studies show that omega-3, especially DHA, can help prevent the preterm births. Even women who don't plan to have children should be sure that they take a lot of amount of omega-3 fatty acids. Mainly you get it from, they are popular as you get it from fish liver oil, but it is as far as vegetarian part is concerned, you get it from flax seeds also. So you should take, you should consume at least 1 teaspoon of grounded roasted flaxseed daily in your diet. Preferably after your meals, so you get a good amount of omega-3 fatty acids. Also, you get it from walnuts, chia seeds, kidney beans, and canola oil. These are the healthy oils that have been shown to reduce the risk of heart diseases also. And heart disease is again #1 killer in women. Vitamin D, the nutrient that skin cells produce when they are exposed to sunlight. In food, you get it from fortified cereals, milk, and any legume. The recommended daily dose is 600 international units. Now, here I need to mention कि सन एक्सपोजर की तो बात हमने कर ली, हमें पता है सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन पता है आपको कब मिल रहा होता है वो? जब हम लोग सब भागम भाग में लगे होते हैं किचन के अंदर, तैयार होने के अंदर, और बच्चों को तैयार कर रहे हैं, रवाना कर रहे हैं, खुद ऑफिस के लिए भाग रहे हैं. That is the time when you are actually getting vitamin D, and that is the time when we are not available for vitamin D. So कोशिश ये करें, जैसे हम लोग के वेस्ट बड़ा कल्चर है सन बेलिंग का, तो कोशिश ये करें कि हफ्ते का एटलीस्ट एक दिन आप अपने लिए निकालो जिधर आप तसल्ली से बैठो सूरज में जाके सुबह 8:30-9 से पहले, और अपने आराम से कुछ बढ़िया आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट आल्सो लेटर ऑन, अच्छे आराम से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके बैठो, रानियों जैसा फील करो, और अच्छी एक बार सन बेलिंग लो हफ्ते की, तो रानियों जैसा. मैंने आगे 9 नहीं लगाया है, मैंने केवल रानी बोला है, तो आप लोग वैसा फील करें. ट्राई टू टेक एटलीस्ट 1 डोज ऑफ विटामिन डी इन अ वीक, because that's exactly when we get maximum amount of vitamin. As the sun goes higher, as the heat is UV rays are coming up, तो विटामिन डी का धीरे धीरे आपका असर जो है वो कम हो जाता है. मतलब the skin doesn't take that much of it doesn't absorb that much of vitamin. Calcium, again, in childbearing age, you have to be very sure that you take enough calcium. 1000 micrograms is the dose. The dose lies between 1000 micrograms to 1300 micrograms of calcium per day. Iron, again, it remains equally important and critical nutrient. Between the ages of 19 to 50, women need at least 18 milligrams of iron per day. Pregnant women, iron demands actually shoots to double up. That is around 27 milligrams per day, as the volume of blood is almost doubles, and when women is pregnant, dramatically there is an increase of iron demand.
After delivery, the lactating women need far less iron, only about like 9 milligrams, because they are no longer menstruating. But as soon as the woman stops breastfeeding, again she should shoot up the iron demands again to 18 milligrams per day. Now, these are few diet tips for women who have now undergone menopause. Again, वही सबसे important nutrient मैंने आपको शुरू में बताया calcium, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ. So you have to boost the calcium intake along with vitamin D and magnesium to support the bone health and prevent osteoporosis. Women have a higher risk of osteoporosis than men. Why? Only reason is after 30 women starts depleting calcium physiologically from the body. आप naturally आपका body जो है ना, आप चाहो नहीं चाहो कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लग जाता है आपसे. तो एक तो हमारा कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है. 30 से पहले हम बच्चे पैदा कर चुके होते हैं. और बेस्ट पार्ट ये है कि हम कैल्शियम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम दवाई लेना भूल जाते हैं. दूध हम लेते हैं केवल तब तक जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में वी आर ओवर पैम्परिंग आवरसेल्फ, फैमिली इज ओवर पैम्परिंग अस, एंड सडनली व्हाट हैपेंस, जैसे बच्चा हुआ द फोकस इज ऑल शिफ्टेड टू द चाइल्ड, एंड हमारे पे होता है फोकस फॉर 45 डेज, जापा कहते हैं जिसको. उसके बाद में फोकस सारा बच्चे पे शिफ्ट होता है, मदर का भी, फैमिली का भी, एंड वी टेंड टू लूज द ग्रिप of the kind of food we were taking in our pregnancy. तो second loss जो आपका कैल्शियम का हो रहा है वो वहाँ हो रहा है. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त में भी आप कैल्शियम लूज कर रहे हो अपने बॉडी से. तो पहला लॉस हुआ आपका प्रेगनेंसी के वक्त, because your calcium is gone to the babies. Second loss is while feeding you are not supplementing and you are losing calcium. और तीसरा सोने पे सुहागा हुआ आपका 30 के बाद जब वो डिप्लीट होना शुरू हो गया naturally. So that is why we have no profile of calcium. And vitamin D हम इतना अच्छे से लेते नहीं हैं, so our bones are tend to be more fragile than men. And osteoporosis हमारे में women में ज़्यादा होता है. Menopause के बाद में you have to be very sure that you have a good supplementation of calcium, so that वो जो हमारा हम already जो कमाल कर चुके हैं पहले वाली stages में, उसको हम कैसे तैसे बचा के रख सकें, ठीक है? Then in case then you have to limit on the sugars. White flour products, white flour means not milk. White कलर प्रोडक्ट्स की बात करूंगी तो मैं उसमें आपका चीनी लाऊंगी, मैदा लाऊंगी, व्हाइट ब्रेड लाऊंगी, पास्ता लाऊंगी, नूडल्स ऑब्वियसली ऑल रिफाइंड. कॉफी इज अगेन वन थिंग व्हिच आई विल वांट कैफीन आप लोगों को कट डाउन करो मेनोपॉज स्टेज में. अगेन दैट ईजेस इन हॉट फ्लैशेस इन केस यू हैव हैड. Eat more of good fats. I've already spoken about omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids, these are essential fatty acids, and that also boosts hormone production and give your skin a healthy glow. Try to eat flax seeds. मैं आपको बता चुकी हूँ, it should be grounded and roasted, and उसको आप जरूर लें so that you can avoid those hot flashes. Now I talk about the elderlies. Nutrition for women during senior ages. After menopause, women's body actually changes again. The requirement of iron drops because women are no longer menstruating. Requirement of some other nutrients again drops because body is losing its ability to absorb and metabolize them. क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इस वक्त, तो हमारे बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो एल्डरलीज में एक्चुअली इफेक्ट होता है. आई होप दिस इज विजिबल. So there are a lot of changes which happen. There's decreased ability of taste and sweets. You know, आपका बड़े लोगों में there is a very common thing कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा, खाने का स्मेल नहीं आ रहा. That's the commonest problem senior elderly face, and that's because the taste buds are affected. The taste and the olfactory nerves have started ending. Saliva production goes down. इसकी वजह से आपका taste और smell ये दोनों चीज का थोड़ा सा issue हो जाता है elderly में. Then there is reduced sense of thirst and there's dry mouth. Again, because saliva production has gone down, the salivary glands are affected. There is difficulty in chewing, eat dangerous हो जाते हैं, दांत जड़ जाता है mostly. तो muscle contractions जो है वो भी बहुत ज़्यादा malfunction होने लगते हैं. Motor movements जो होते हैं ना वो slow होने लग जाते हैं elderly में. And also the esophagus muscle contraction is also affected, and that is why also the chewing is affected. And then there's bioavailability of vitamins and minerals and proteins goes down क्योंकि हमारा HCl production जो होता है स्टमक के अंदर और इंस्टिंक्टिव फैक्टर्स है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है. So because of that, the availability of all these nutrients actually goes down. So there are so many problems which actually comes in because of aging. So we don't have any control over them. So what control we have is actually again to take care of the nutritional requirements, and the first on the list is calcium.
Although some bone is inevitable with age, some bone losses are inevitable with age, women can slowly process of getting enough calcium. Women between ages to 50 to 70 need around 1200 milligrams of calcium per day and 600 international units of vitamin D. Women older than 70 requires 1200 milligram calcium and 800 international units of vitamin D because the skin becomes less efficient in converting the sunlight to vitamin D as we age. जैसे आपका स्किन जो है वो बहुत लूज हो जाता है और so you need higher amounts of vitamin D in the later age of age. And then only supplementation is the answer because उस समय जाकर आप कहो कि खूब सारा दूध पियो, खूब सारा चना खा लो, आप ये खा लो, वो खा लो, is not possible. So at this, definitely at that age, supplementation is the answer. B12, the ability to absorb this crucial vitamin also declines as women age. The diet is about B12 again. आपको मैंने बता दिया आपको vegetarian sources, spirulina and vegan milk products. You need to be very sure about the fluid demands of elderlies. Fluid तो definitely बढ़ाना ही है. अच्छा, and why this elderlies? I should actually highlight this for all of us here and not just women, also men here. मैं अगर रैंडमली पूछूं कि इस सभा में जितने जने बैठे हैं उनमें से कितने जने जो हैं एक दिन का कम से कम 10 ग्लास पानी पीते हैं? 10 20 भी लेते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं. मतलब वैसे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 10. I think what about people we are here is more than 60-70 people. Hardly 10 जनों ने हाथ उधर पूछा किया 10 ग्लास के ऊपर. And if I say कि आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? सर आप तो पीते हो, आप तो 20 ग्लास पीते हो. बट व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली क्या होता है, एक बड़ा अच्छी सी चीज है हमारी बॉडी जो करती है, हमारा बॉडी जब हाइड्रेशन लेवल्स पुअर होते हैं ना तो इट एक्चुअली वांट्स वाटर. पर होता क्या है कि वो एक हंगर पैन की तरह हमें रियलाइज होता है. पानी की इच्छा होती है पर हम पीना नहीं चाहते, हम पानी पीने की बजाय जाके कुछ खा के आ जाते हैं क्योंकि हमें कुछ लगता है कि हंगर पैन आ रहे हैं, कुछ हंगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मुझे कुछ खाना है. तो वी गो एंड ईट एंड वी डोंट ड्रिंक वाटर एट दैट टाइम. और उससे क्या होता है कि योर हाइड्रेशन लेवल्स अगेन ड्रॉप एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर डेली प्रैक्टिस. तो बेस्ट पार्ट ये होता है पानी पीने का या फ्लूइड आपके रिक्वायरमेंट्स का दैट यू कीप सिपिंग वाटर एवरी टाइम. सो कीप अ वाटर बॉटल अराउंड विद यू. थोड़ा पानी आप पीते रहो पूरे दिन. तो उससे क्या है कि एटलीस्ट यू हैव कवर्ड दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट व्हिच वी वांट. Apart from that, dahi doodh chhach from dete hain, that also includes your food intake. But yeah. Oh, sorry. So that's about fluid. And how to check the fluid requirement in elderly is only one way. Obviously, don't measure it. We will go by the color of urine. बहुत dark yellow color का अगर उसको urine आ रहा है तो they have to understand कि उनका fluid requirement बढ़ाना है. Light pale yellow color का है तो it's okay. Now, the commonest health problem I've already discussed, osteoporosis, anemia. This is one thing which I will actually want to highlight here in this gathering because ये एक चीज़ है जो हम अपने साथ में लेके चलते हैं. As a women, or men also have stress. I don't say that, but women they are happy in taking stress. हमें मजा आता है कि हम इसका भी ले लें, उसका भी ले लें, उसका भी ले लें. And the only thing which I want to highlight here. Because I've worked on antioxidants myself, my PhD has been on antioxidants in depression and anxiety patients, and we have seen how good natural antioxidants actually work in beating the stress. And these are the three colors, traffic lights, red, green and yellow, which you have to every time remember whenever you're eating food. कि आपको इन तीन कलर्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके रखना है because these are abundant in vitamin A, C, which are natural antioxidants. And the third antioxidant is vitamin E, जो आपका आता है आपके nuts and seeds में. So you have to have handfuls of nuts and seeds also. I will also touch briefly about millets because this is International Year of Millets, and this was one thing which was always practiced in our Indian context. हम हमेशा से ज्वार बाजरा खाते आए थे. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में सडनली हमने गेहूं पे बहुत जोर दे दिया. But we have to now see millets are why wonder foods because cereals होते हुए में इनके पास में आपको आयरन मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, इसमें प्रोटीन्स मिलता है, इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर्स मिलता है जो आपको एक मतलब होता है ना एक छोटा सा पैकेज है जिसमें सब कुछ आपको मजेदार मिलता है. वो वाली चीज मिलेट्स में आ जाती है. ट्राई टू इनकॉर्पोरेट millets at least thrice in a week. I will not say to 3
replace it every day because minutes also have immense amount of inhibitors जो आपके बहुत सारे nutrients को absorb होने से eventually रोकते हैं. तो try to incorporate it in at least 3 meals in your week. तो उस तरीके से आप रखो. Jawar and bajra are the commonest millets we find in our state, and ragi is very common and popular millet also. कोरोनरी डिजीजेस में अच्छा रहता है, शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, डाइजेशन में अच्छा रहता है, वेट मैनेजमेंट में it's a big antioxidant and it also helps in detoxification of your body. I will just go random. फटाफट से आपको बताती हूँ how much of protein you should take in your day. आपका जो fist size है and the thickness of your fist, इतना प्रोटीन आपका रहना ही रहना चाहिए आपका एक मील के अंदर. fist size and thickness, चाहे वो आपका पनीर वगैरह हो और दाल लेते तो वही हो गया आपका मुट्ठी पर, जितना अपना मुट्ठी में आ रहा है ना. So that is how you are estimating your protein requirement. At least add 2 fist size servings of low density vegetables, तो उसमें आपके dark green leafy vegetables आ जाते हैं. और मैं फाइबर्स पे इसलिए बार बार हाईलाइट करती हूँ, मैं यहाँ फटाफट बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और फाइबर्स पे इसलिए बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट हेल्थ को भी ध्यान में रखना. ऐसे वो पहले बोलते थे ना कि सारी बीमारियों का जड़ आपका पेट होता है. Why? Because we all know that most of us know that our immune cells, 70% of our immune cells reside in our gut. हमारे gut में रहते हैं. And घर अच्छा रहेगा, साफ रहेगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे. That's how it goes with our body also. Keep a check on the fiber part because these are natural prebiotics and probiotics available for you. तो अच्छी मात्रा में fibers लीजिए और आपका weight management में हेल्प करता ही है. Also, when I'm talking about gut health, try to incorporate dahi daily in your diet so that you can keep that natural probiotic in your Eat lots of fruits and vegetables. Cut down on your saturated fats and sugars. Sugars मैं आपको बता ही चुकी हूँ. Saturated fats में actually जो major जो अपना आता है वो घी आता है. So I don't say to stop on ghee, but जब एक proportion की बात करते हैं fats की, तो it should be always 2 and 1 वाला portion. 1 portion should be ghee, तो 2 portion will be the unsaturated fats जिसमें आपके oils आ जाते हैं. Oils आ जाते हैं and second again आपके good fats में आपके nuts and seeds आते हैं. So handful of nuts and seeds daily, almonds, walnuts, and your seeds of flax seeds आ गए, sunflower seeds आ गए, and all those whatever you want. Sugars फिर से मैंने बोला whites को replace करो आप, jaggery लो, honey लो, आप dates लीजिए, अंजीर का मीठा लीजिए. And these are natural sugars which you can get rather than taking too much of whites in your diet. Salt, please keep a check on your salt. Do not take too much of salt. It should be not more than 5 grams per day. तो वो सैलेड ड्रेसिंग की तरह ले रहे हो या उसको खाने में सब्जियों में ज्यादा ऐड करके ले रहे हो, टेबल ड्रेसिंग हो रहा है वो नहीं. नो कैफीन आफ्टर 2 PM. ये मैं बार-बार इसलिए हाईलाइट करती हूँ. संडे तो अभी भी चाय ली थी, वो भी ब्लैक टी. Why not caffeine after 2 PM? Because caffeine actually inhibits the calcium absorption also. Try not take too much of caffeine because it also hampers your sleep cycle later on. Sleep cycle, good sleep cycle is very important for your good mental and physical health both. So yes, sir. So that's all I want to say. Get active and try to be healthy on your weight because you need to have any amount, one good exercise in your day, which can be anything from walking to whatever Zumba aerobics you want to do. So please be active along with healthy diet. Thank you very much. Very important and on the nutrition of women. एक कमेंट में करना चाहता हूँ, जहाँ आपने पानी की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए. ओल्ड एज के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो वुमन हो चाहे मैन हो, उनको प्यास लगती है लेकिन फील नहीं होती. तो जो भी पास में है वो पानी उनको आधा घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी पिलाते रहे. ये थोड़ी प्रॉब्लम ओल्ड एज के अंदर होती है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिहाइड्रेशन होने से उसको बचाएं. थैंक यू सो मच. The next speaker is Dr. Sudipti Arora. She is a research scientist and assistant director at Dr. B. Rao Institute of Biotechnology in Jaipur again. She is an environmental research scientist. She is the founder director of the Prakriti Sustainable Integrated Foundation. She has received the patent for vermification technology for wastewater treatment, which is the main focus these days. She has received national and international funding grants for this work with research on water and wastewater management
She is a recipient of several awards. For you, Dr. Sudipti. Thank you so much, ma'am. So, hello, good morning, everyone. I am Dr. Sudipti Arora, research scientist at Dr. Veeral Institute of Biotechnology, Jaipur. And the title of my today's talk is Rural Renaissance, Empowering Communities and Fostering Entrepreneurship with SMT Interventions. So, I'll just share a brief journey of my experiences so far. Before that, I would like to give heartfelt gratitude to Pacific University and NASI for organizing this wonderful workshop, 2-day seminar, and I'm really honored and truly inspired by all the eminent talks, and seriously this makes me so happy. So this is my brief which ma'am has already shared. I would just like to share a little brief of my journey, where it all started and what I'm doing right now. So it's not a very long journey, it's just few years back when I was doing my MTech in environmental engineering from MNIT Jaipur. And as a part of my dissertation, my guide asked me to monitor the STPs around Jaipur. So there were 18 STPs that I got the opportunity to monitor. And the story says that when we went to collect the samples, so it was always available. But some random days when we used to go off time, like without informing, there were no samples. So हमें पता चला कि उन्हें पता है कि मैम 9:30 आएंगे तो 8:30 STPs on होते थे. That was the story. So to actually sharing this with a bit of brief that none of the STP was working as per the standard. Not even a single STP in Jaipur. And this whole project came as a guideline recommendations to RKCB as a project that there is an urgent need of transforming the STP system in Jaipur and worldwide, of course. And one of the things that was really of concern was pathogens. So Alok sir was also mentioning that microbes and pathogens were really ignored thing that time. In spite of the fact that we had UV or chlorine, it was not working well. So this made me enter into another journey of doing my PhD at IIT Roorkee, where I was determined to form a low-cost solution. Because ये भी पता चलता है कि क्यों STPs काम नहीं कर रहे, उसका बहुत important reason होता है कि cost effective भी नहीं है systems. So I was always wanting to work on a system which is nature based. We should not go against the nature. कि STPs चलाने के लिए खूब electricity लगती है, that was not the thing. So I worked on this technology. I call it as vermifiltration, the power of earthworms for treatment of sewage. And after working it for over 7 to 8 years on this technology, finally I got a patent. So the story started here again. In 2020, I got another important and significant opportunity that is called wastewater-based epidemiology. As a curious scientist, I was just going through internet जब सब लॉकडाउन में थे कि अच्छा ये WB कुछ है जो ट्रैक डाउन कर सकता है कोविड वायरस को सीवेज में, एंड दैट मींस वी कैन डिटेक्ट इट अर्ली कि आपकी कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल जयपुर लॉकडाउन में है बट जयपुर में कोविड वायरस आया है कि नहीं आया, ये क्लिनिकल टेस्टिंग से हो सकता है 10 डेज बाद पता चले या पता चले भी नहीं, बिकॉज सम ऑफ द पेशेंट्स कुड बी एसिम्प्टोमेटिक. सो दिस एक्चुअली मेड मी वर्क on this concept as early as on 4th May. I asked my team, let's go and collect sample, and everybody said no. And we didn't get the permission. Everybody was so scared. I asked one of our vice principals that, ma'am, आप चलोगे क्या मेरे साथ? I want to collect the sample. And उस समय में कोई आइडिया नहीं था कि हमारे पास क्या प्रोटोकॉल्स होंगे. हमने बस रैंडमली नेदरलैंड्स के और यूएस के पेपर्स उठा के एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए. So this journey started in 2020, and I'm happy to share that after struggling, going to the government with the data that this technique has potential, एक बार consider करो, and again they were like, no, we can't do it right now, we didn't have the permission. But I continuously was doing this. I was continuously sampling कि हमें कुछ hopes थी कि इस technology में कुछ hopes है. So these are, then I convinced my team and everybody, lab assistant went on board, and we actually could monitor and detect the wave. So I'm happy to share that ये graph आप देखो, ये सेकेंड वेव का ग्राफ है. डेल्टा वेव जब थी तो एवरीबॉडी वाज सो स्केयर्ड क्योंकि ये बहुत डेंजरस वेव थी, एंड वी कुड डिटेक्ट इट ऑन फर्स्ट अराउंड इन 15 फरवरी के आसपास, एंड द फर्स्ट सिग्नल, एंड लॉकडाउन एक्चुअली केम इन अप्रैल. सो 20-25 डेज पहले हमें सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो गए थे कि
जयपुर में डेल्टा वेरिएंट आ चुका है. So this then now at this time when I again shared this with data to Delhi, because state government was not helping me much, so I asked Delhi government to help me. Luckily, I got the support. I got by this time I was managing with my own institutional grant, but then I got funding from SCRB. I'm happy to share that now I am in the committee of INSAGOG, and now I am reporting this data every week to SCRB in the INSAGOG committee. So this shows the perseverance that I had hopes in science and technology. So we are now able to monitor not even the data graphs, but also the variants. And this is, and of course, when we were doing this, we published our papers in good journals. Even in Lancet, our paper was published. So we were in news, and people were recommending our work even worldwide. So this opportunity gave me this opportunity. So one thing led to another, and I was selected as one of the fellow for water sector in IWA Breakfast Fellowship. So as you can see, there were 14 fellows selected across the globe. The idea was to maintain gender equality, but 8 girls and 6 boys were there, so it was more than 50%. And with this opportunity, I visited New York UN headquarters in March 2023, presented my work, learned a lot, and actually this gave me a lot of experiences. With this project, there was given an immense responsibility to me. मुझे अब as a young water professional मेरे इंडिया के लोगों को youth को motivate करना था for working in SDG 6 or water sector. So and why I'm sharing this slide, because I received immense support from Nasi Rajasthan also in this project. I launched this project called Waterathon this year. The idea is every drop count and every idea matters. तो हमारे यूथ में बहुत अमेजिंग ब्रिलियंट टैलेंट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की बस जरूरत है. इफ दे हैव एनी आइडिया फॉर SDG 6, this was launched in June, and we organized a conference with Nasi Rajasthan chapter in Jaipur on June 5th, World Environment Day, and Dr. Rajendra Singh ji, called Waterman of India, launched this campaign called Waterathon with Loya sir and other. Chairman Masar was also present. So this conference was then, this campaign was then circulated nationwide, and I'm happy to share that we also conducted a one-day national conference, especially on water, and motivated a lot of youth. Then the idea hackathon happened on online mode. We got a lot of entries across the world. So 60 plus ideas were received even just in 2 months, because this was a short project. 30 ideas were phased out. Then 29 ideas presented, top 15 ideas were awarded, and 40 plus ideas are now published in a compendium that you can see. I've shared this compendium across national and international organizations, even UN. So this meeting was held in Denmark as a part of my fellowship, and now I'm also going to Africa in December to culminate this fellowship. So this side of my story, अभी तक जो आपने देखी वो थी as a research scientist. बहुत लोग सोचते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं तो हम पेपर पब्लिकेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ला सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए. But one thing that always affected me was ये चीज जो कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट इस सोसाइटी में नहीं जा रही है. जब भी मैं सोसाइटी में जाती थी या एसटीपीज पे जा रही हूँ, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. या वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर ऑफ जीरो वेस्ट myself, and I'm on this journey since 3 years. तो मैं देखती थी कि लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे. there was a huge gap. और यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी कि one of my student inspired me. I was teaching wastewater treatment in my class, second year students, and when I was telling them कि ऐसे होता है, ये treatment strategy है, तो he stood up and said, "Ma'am, you are wrong." He outrightly said on my face, and I said, "How can you say that?" तो he said, "Ma'am, आप मेरे गाँव आके देखो, जो आप ये बोल रहे हो solid waste, ये सब कुछ नहीं होता." I said, "Okay, let's go." और हम उस village में गए. That village was Andi village, and I was shocked. I was shocked because मैं कभी इससे पहले villages में नहीं गई थी. Problems were different. Now we actually conducted a holistic baseline survey of this village, 550 households, with my team of young volunteers, students, and we found out lot of problems. So I'm not going to details कि हमने बहुत सारे aspects पे सर्वे किया, what they eat, what they drink, what is their lifestyle, what are their habits, etc. etc. But finally I was able to identify that problems बस ये 3 categories में हैं. Improper solid waste management,
lack of water sanitation and health, lack of education and awareness, which is the most important thing, and lack of livelihood opportunities. This was another important thing for me because मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आप सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट करो, वो क्यों सुनेंगे? उनके पास में घर में इतनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, सो दे वर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So ये problems के हिसाब से we thought of let's have these solutions, nature-based green technological solutions in the village. So I'm happy to share that after pursuing this project for 2 years, now we are working on a DST funded project for making this village a zero waste model through green technology intervention. So I got the funding. This is my team. We are working and there are 3 objectives that I'll quickly explain. So पहली चीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है. So we adopted remote sensing and GIS data to monitor the whole drainage map of the village. Then we went on to find out कहाँ ये drainage सारा जा रहा है और उस जगह पर हम एक wetland बनाएंगे. So this is the site that we identified. This is the pond. It is in that bad shape. पूरी जगह कचरा था, pond बहुत गंदा था, algae थी, and now we are now converting this pond based upon these designs into a wetland. So this work is in progress, and I'm happy to share that now once it is ready, almost in another 10 days, this place will look really beautiful with those plants. So now, of course, aesthetically also it is good and appealing. Plus, the entire wastewater of the village will now be used for gardening purposes. फिर कुछ हमने सैंपल्स कलेक्ट किए. करंटली लोग अनट्रीटेड सीवेज को यूज कर रहे हैं एंड दे आर लाइक क्वाइट नॉर्मल विद इट. आई आस्क्ड दिस लेडी कि आप ये क्यों कर रहे हैं ये सीवेज को? तो शी सेड वेरी इग्नोरेंटली कि मैम आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये गेहूं मैं नहीं खाऊंगी, ना ही मेरे गांव वाले खाएंगे, ये तो हम शहर पे बेच रहे हैं. तो इट वाज लाइक जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शहर के लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है. So that was the mindset, that was the awareness. So the second technology that we have now used is vermifiltration. That was my dream come true. कि अब vermifiltration patent भी हो गया है. Let's have it in rural villages. So I'm happy to share that we have now installed this 10 kLD vermifiltration plant integrated with solar at one of the CHC in Andhra village. So this is already under, it's been developed and under research now. Like lot of studies are going on. The third technology is biogas desalination plant. We have also installed it with integrated with solar, and this is in one of the government school of Andhra. 36 cylinders जो आते थे every year, now they have been replaced with biogas with their own food waste and counter from nearby areas. So this is another implementation of science and technology. For solid waste management, we demonstrated them a rickshaw for collection of waste segregation into blue waste and green waste. And also we donated some dustbins. We partnered with some NGOs who can collect those recyclable waste. So ये सारे campaigns हम solid waste के लिए कर रहे हैं. This is the MRC, Build Material Recovery Facility with NADEP units for vermicomposting. Now this is very important, health checkup, because we wanted to see जो हम कर रहे हैं उसका effect long term में क्या है. So हमने before interventions एक health checkup camp किया. एक हम after the survey करेंगे, like after 3 years to see whether the change in the environment will actually affect the health or not. So यहाँ पर मैं आपको एक experience share करूँगी कि we collected a blood sample from 180 individuals and there was this lady who was not at all willing to give. उसको एनीमिया भी था तो भी वो blood नहीं देने को तैयार थी. And she said मुझे पाप चढ़ेगा, मुझे hell में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा अगर मैं अपनी body में सुई लगवा लूँगी. So these kind of stories actually makes me think क्या awareness level है, क्या mindset है लोगों का. So the journey was not limited to here. DST ने तो हमें science and technology का ही पैसा दिया है, but मुझे ऐसा लगा कि ये वर्क नहीं करेगा अगर हम इसमें कुछ एंगल और नहीं डालें. Science and technology will fail, और वो हमें fail होती हुई दिखती भी रही है because people will not adopt to new things that easily until we change their mindset. So now we amalgamated art, science, culture and spirituality also, because आप समझेंगे कि कर्मा से बहुत लोग डरते हैं ना कि कर्मा अच्छे होने चाहिए. So we also try to add that angle to it. So for that we launched various campaigns like Swachh Andhi campaign, Sundar Andhi Abhiyan. So the Sarpanch in the middle photo is himself coming with us and cleaning. So the students were motivated. हमने competition run करा दिया to who will collect ज़्यादा waste from school boys versus girls. So these kind of then do it yourself मटका composting
composting sessions we took. Now we gave them 1 month to make their own compost and come back and we will buy from you, and we actually bought it. So these were the things that gave them some support, some livelihood generation opportunities. Then awareness, a lot of awareness on segregation, Gila Kachra and all those campaigns. Nukkad Natak was done. These also, these were Sundar Gandhi Abhiyan. So some of the places we could actually clean, and Harit Gandhi Abhiyan, tree plantation drive from students on their birthdays. This was a cloth bag campaign where we encouraged them not to use plastics. This was done on sustainable farming practices on the occasion of Kisan Divas when scientists from RARI were invited there. So we were doing a lot of campaigns, but this particular initiative I want to mention, I've already applied a proposal in DST for establishment of Women Technology Park called Vice Center, Women Innovation for Strengthening Empowerment. But it's kind of my manifestation कि let's not wait for the fund and let's already start this project. तो वहाँ अभी under review है, but I've already launched this project in another village called Jahota, and I have named this project called Swaru. Swaru means knowing your own soul. तो हम लोगों को बोलते हैं women, we empower women, we tell them that you have immense potential. It's just you need to come, you need to bring it out. So these are the launch campaigns in both the villages, Andhi and Jahota. And we are majorly working on these 5 arenas right now: health and well-being, sustainable communities, hunger, education, and no poverty. This was by one of my favorite sessions where we did a meditation with them, and we asked them to think about what you really want in life, what is your passion, and we try to integrate them with their mission. So we invited Kumari's Foundation in one of the sessions. Then sustainable menstruation, because health is very important. We actually इसमें हम collaborate करते हैं. So I believe SDG 17 partnership plays a very important role. So I bring in a lot of partners. So this one company, as a part of CSR, donated menstrual pad vending machine and menstrual pad incinerator. So this was launched. Curious and important questions were answered and problems they faced during menstruation were being heard. So they were actually very curious. Yeah, I'm just minding. Almost. A session on good touch, bad touch, nutrition and cooking methods, art, yes, like mehendi competitions, rangoli competitions, teach mahotsav. And this, we also partnered with Pure India Trust. Pure India Trust already works as a women empowerment में, तो उनको women की तलाश है जो काम कर सकते. So we integrated them with those women from Jahota. So this was very important. This lady said कि मैं पहली बार आज पेन उठाया. This was a mandala art workshop that we did with them. So these 80 or 70-year-old lady actually did this mandala. It was so beautiful. We organized dance workshops for school girls. And this is yesterday's photo. Well, I am here, my powerful team, which I am so proud of now that I have built it for over 2 years. We're taking this workshop, Diya painting workshop, and Ye Diwali eco-friendly campaign that we launched just yesterday only, asking them not to burn crackers and to revamp. This is just last 1 minute, sir. This is a community that I run from last 4 years. So this is called Jaipur Mom Tribe. After being a mom, I realized that I cannot go to office. I didn't go for and at that time I was also feeling very low because कुछ करना था. So I started this community 4 years back, Jaipur Mom Tribe, to support urban women. And now I realize the importance of having this, because now I feel urban women can be a platform for rural women, and that's how we will empower the nation. So that's my another 5-year plan actually, or maybe more, I don't know. But this is what I live for. These smile and hugs matter to me the most. And of course, I got a lot of feature, but that is actually not important. Just to be here on one slide. And the impact that we created is, yes, 4 technologies, this amount of wastewater, number of females who are motivated to do composting, number of trees planted, and the social impact till now is 10,000 plus. So, हमारा सपना समृद्ध का हो. Thank you so much, and it is all And the last invited speaker of this session is Dr. Sufyan Khan. She is the Nasi Reliance Awarding 2025
and he has many patents, and he has been scientist technology, because our research sector, PhD, national award, transport, work in science technology, specifically. Respected Chairperson ma'am, Manju ma'am, all the dignitaries, scientists, my colleagues, a very good morning to each and everyone, and my dear students too. So today's talk, I will be sharing about my own journey, that how I built my own, from the own research labs to the spin-out company, that is the Drumlins Water Technologies Private Limited, and now how I will take my basic research to the applied research, and then next level is the commercial research. So I will be briefing about the arts and science of the academic entrepreneurship and academic spin-outs, a journey from the water research labs to the Drumlins Water Technologies Private Limited. So I will be briefing about the two aspects of the scientist, and this one is the art side and one is the business, and another is the art side. So in the because for the successful commercialization of any technology, you need both the aspects. You could be you need a very in-depth knowledge of the science and scientific spirit, as well as you must understand how are the other skill set that you need for the commercialization. So for the art side or business side, that's the entrepreneurial skill mind shifting, and the mindset of a scientist or a professor to become an entrepreneur. And earlier that all the scientists were used to handle the scientific teams, but how you will handle the diverse team from the different backgrounds, that is also a big challenge. And writing of the business proposal is also a very a different skill set that you require. And the writing of the grants for the company and how you make your company an investor ready, and the problems with the academic spin-outs. And in the scientific side, that I will deal about the different technology readiness level, that every level from the basic research to the next level, it contains the different values of death, and how you will overcome with these values of the death. And the story of the own spin out, and the technology ready for the commercial at different stages. And being as a scientist in our labs, where we are dealing with so many of the technologies, and how you will choose that which technologies you should choose and prioritize and take it to the next level, and the problems associated with the fundings, and mostly the problems of the women in this STEM. So I will be touch upon my own story regarding all these factors and all these lines. So this is the story of the spin-out company that has been originated from my own research center, that is the Center for Excellence Water and Energy. And I started my journey from the University Vidyapeeth, which is the world's largest residential women university, which caters the needs of the woman at every sphere of life, and it created the woman leader. So this is the story of many women entrepreneurs as well as many women scientists who are the part of my journey. So this is the story of failures, frustration, triumphs, and success. So it is the nurturing of the women scientists and entrepreneurs, a new way to go. And from this slide, I would like to take you 20 years back when I joined that university, which is situated at the fluoride endemic zone. Though I was trained as a molecular biologist during my PhD program, but to solve the problem of the fluoride contamination, I took a different path, and I took the research question after my PhD to solve this problem of fluoride. What I've seen in the surrounding region, that most of the youngsters has gone through the knee replacement and the dental and the skeletal fluorosis, and my own daughter Sanu was also suffered from that. Though we have an RO system,
from the day one from at our home. So in 2010, I took as a research question and I found that it is not a local problem, it is a global problem that 200 people suffered from the problem of fluoride contamination. And then I find out that what is the problem with the existing technologies and the already existing solutions available in the market that could not solve the problem of fluoride. Whether it is from the ion exchange, ultrafiltration, reverse osmosis, and phytoremediation. And through my research, what I find that most of the technologies target the bound fluoride, not the ionic fluoride. And this ionic fluoride has passed through the RO membrane sizes. So most of the technologies target only the bound fluoride, not the ionic fluoride. And the second most important, what I find that the concentration of the fluoride is different from the 10 meter or 100 meter range. So it's also a very big problem with the fluoride that you have to maintain the level of the fluoride, and there is no technology in the world that can maintain the levels of the fluoride because for our body, because this is the only ion that is required for your body and its excess amount is toxic. So you have to maintain a fair balance of the fluoride in your drinking levels. So I initiated our water research in the year 2014 when I got the Center for Excellence Water and Energy, and I have initiated the research in three main areas: development of the nano adsorbents and sensors, development of nano phytoremediation technology, and the effect of the toxicity levels of the nanomaterials on the plants. And how we can use these nanomaterials, because nanomaterials are also criticized for their toxicity levels. By doing a lot of hard work and lot of our teamwork, we came out with the 8 technologies. They are in the different level of their commercialization journey. So we have started, because here is the youth who is coming in, who is sitting in front of me. I would like to tell you that from the basic research, I started from a very simple question: how to solve the problem of fluoride. So I have to work on the what are the fluoride endemic area and what is the level of the fluoride in the upcoming region. So I did in the Rajasthan area and worked with my basic knowledge. And I addressed all the basic questions of the sciences, like how to improve the heavy metal and the fluoride removal efficiency and to speed up the process. How we can microbes and nanomaterials or other materials affect the plant biomass, growth factors, and how to make the process very sustainable. So these are the very basic questions that you have to address through the sciences. And so I worked on the improvement in the phytoremediation process with the help of the microbes, with the help of the nanomaterials, with the help of the quantum dots, and one is the hydrogel is also used. And we have improved the process efficiency around 15 to 20% in the field trials with the help of all these materials and the microbes. So this is all the basic research, and this concept was very validated. I found it very good for the nanophytoremediation. So we have field tested at the Banasli village of this technology, and we have patented the nanophytoremediation technology for the fluoride removal. So to carry forward all these technologies, I make a consortium, because I was working on the fluoride for the drinking water removal, as well as from the removal for the soil and all. I came to this conclusion that I can't myself solve this problem, and being as a biotechnologist, I need the different discipline. So I make a consortium project in which there is a chemical engineer, mechanical engineers, people from the chemistry and from the agriculture background, and we got this product of the DST consortium project that is undergrowing, and it is a low-cost renewable domestic wastewater treatment solution. And in this, we have took this technology TRL 4 to TRL 6 stage. It means that we have validated our concept at the pilot scale 2. And this is the consortium that we have made. And our field trials are also going with the GB Pant Agriculture University, in which we are doing the already field tested our technologies. And this is the pilot scale facility that has been developed at the Pandit Deendayal Energy Institute with one of my collaborators, and we are we have developed this pilot scale for this project. So up to till stage, we are continuously working hard to improve the fluoride removal efficiency. Mainly my niche is the fluoride removal efficiency, because
fluoride is a very big problem of solar voltaic waste also. Lot of the effluents contains lot of the fluoride. So in the wastewater, you also need the removal technology for the fluoride, and for the drinking water aspect, you also need fluoride removal technologies. And I'm proud to say that the Tata Swachh, Top Line, and other very big brands, like big companies, are coming to me to solve the problem of fluoride. And with the hard work of my team, that we have published more than 100 papers with the cumulative impact of the 5, and we have filed 7 patents and the 5 books, and our work is undergoing in this manner. So I would like to share from this that how I began with the spin-out journey. So the idea behind is that, because I belong to the Vanasri Vidyapith, which is situated in the fluoride endemic region. So one is that I would like to solve this problem with a very simple or innovative technology. And second, during my pathway, I have trained because many women during my way. And one of my postdocs came to me, and I find that a lot of the women cannot go to their postdoc due to their marriage or other obligations to outside the country. So one day she came and she came, ma'am, please help us how you can create opportunities. So the second thing is coming in my mind, that how I can create the opportunities during my way. So these are the 2 key things and motivators that I established the spin-out company. So the one day that one of my PhD scholar came to me that I'm facing the problem of the leaching of the nanometers. How can I do? The tea bags is in front of me, that I have given them idea like how we can we develop this kind of technology that we have to dip in the water and the fluoride will be removed. So this idea got scientifically validated. We have validated this concept very well, and it's called wide media attention. At to this stage, it was like year 2017, because it was the removal capacity is only for the 300 ml of water capacity. But this idea has a lot of because it's a kind of innovation that I would like to take it to the next level, and luckily I got I have a confidence in myself that one day it will be a big success. So to create the opportunities, I just I write a grant to the BIREC for establishment of this company, and the idea brings with this a small step to create the opportunities for my postdocs as well as a PhD scholar, that the Brahmins Water Technologies Private Limited, and our mission is to make the India a fluoride-free country in the next 3 to 5 years. And I founded this with my very passionate co-founder, who is my student, is Samina Khan, who is a very excellent experience in the business. And these all are my postdocs, and I'm very proud to say that all these 4 postdocs have made me proud, because they have taken they are also very well known in their own area, and these are the part of my team. And certainly we are moving in the next direction, because I have already told you that the path of you is not very easy. You have to find your own way. So we have launched our first product in the Vanasli area, in the 200 houses, that we have come with a smart universal defluoridation nanorod that is equipped with the sensor. And in the prototype first, because when we want a very commercial success, you have to build a minimum viable product from your prototype that is completely a market fit model. And this also needs a lot of funding also, and different kind of expertise from your side. So we have built from a very T-Rex like pouches to a rod-like system, and then we are in the process to test it in the water tanks. And one day that you will get the water, and our operations do not require water and electricity for the operations. And one day we can replace the RO, because it does not require water and energy. It does not release the brine in the environment. It is completely sustainable. But the very big challenge we are facing is with the TDS, as well as with the large amount of the water that we are addressing. Our team is working, and we are constantly trying to get more funds to get to the next level. So from the journey from science to technology, as far as my knowledge, it takes like 15 to 20 years when you are working on a deep tech technology. So first, from this slide, you can easily see that we have crossed research and development part from my own research.
Product development bench level we have already developed, and the process development, the scale up, pilot scale is also like we have developed, and techno commercial viability and modeling is also in the process. So here my new joining at the Shriram Institute of Industrial Research came. I would like to carry forward this to the next level, in which all the commercial success will, I believe that with the help of the Shriram Institute of Industrial Research, I can take this technology to the commercial success, and I believe so that I can do this very well. So I am presently the Deputy Director of the Shriram Institute for Industrial Research, and my idea to build this institution is to bridge the gap between the academia and the industry, and we would like to take up all those technology which has reached to the technology 3 to 4 levels, and from the startups, from the SMEs, from the academia, and we would like to take it to the next level, because we have a very good industry backup with us. So this is a uniqueness that is why we like to create this institute. And our first area is in the 5 domains we are working: high performance materials and clean energy, phytochemicals, new materials for the infrastructure, and environmental engineering. And I am very open to all of you to for the collaborations and join hands with us. If you have any technology which has reached up to these levels in these 4 or 5 domains, please contact us to take it to the next levels. So I am also working in this the next, because first is the fluoride, second is the zinc, and then I already got the project also. And zinc is also a very big problem of the rayon factories, and I would like to remove the zinc from the water, and this is also at the completely commercial level. Fluoride is also at very commercial level. So these are the 2 things that in the next 2-3 years will be a commercial success. And my team also working on because I have experience of the nanomaterials. So we are building the smart nanomaterials for the hydrogen storage, and my dream is to guide my team to give a very good technology in the transport of the hydrogen rather than production and the storage. So in these 3 vertical, currently I am moving forward. So the progress we have still, because despite of so many of the failures, we got so many of the accolades during my way, and it motivates me and my team during the way that this journey is not so easy, but if you consistently work hard and you have identified your own purpose of living, and if your intentions are very clear, you will find your own way to do that. So we got in 2021, we got the Nasir Reliance Platinum Jubilee Award, and this year I am the selected Self Fellow too, and all the BIREC grants and the BIREC TIE Winner Award I also got. And not only I raised the grants for the COE, Center for Excellence, and my projects for the UG DST, but for this company also. And for society to, for the technology to the society, I conducted so many of the workshops. And there are several challenges I find that we have missing role models. And I found that you can lead only by your examples. So so this is my way, that if I can set an example how to build and from this scratch to this level, that it certainly motivates many of my students. And the different technologies and different problems, another problem we are facing is that the policy matters of the IPRs. Suppose I can give one of my examples. Suppose I was when I'm a professor in the Manasri Vidyapeeth, and I find that how I could start my entrepreneurship journey. So I work hard on the policy and make the faculty entrepreneurship policy at that place, which helps the students, university, and the faculty also. And similarly, we find the problem in the because the patents are from the Banasri and the Brahmins, how we take it to the next level through the Shriram. This is another policy issue that we have to address. So these kind of the policy issue, but I am very, very sure that I will find my own way to solve this policy issue, and it could give a very good set of example to the government of India also, that how we can take it and bridge the gaps of all these things. So in the last slide, I would like to say to all the youngsters that Sara Kamal Dard ka hai, you will koi Mirza Ghalib bana nahi hai. So
every challenge, you have to go through a lot of challenges, struggles, and if you have a dream to do this kind of works, so be ready for the brutal journey. But I'm sure towards the end of your life, it will be very, very satisfying that you have done this kind of job, this kind of things, and you have moved toward that path that no one has traveled. It needs a lot of daring, a lot of courage, and a lot of hard work, I can say. But for every woman and for every student who are sitting in front of me, I will just close my presentation with only one remark, with two things. आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं, आईआईटीज में हैं, टेक वन स्टेप. Only take one step. People will support you after that. आपको अगर सोचोगे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, आपको कोई फंड ला के देगा, आपको कोई सिखाएगा, ऐसा नहीं होता. You have to show your just great first, and you have to show the courage to take it forward. आपका पहला कदम आपसे होना चाहिए. उसके बाद आप उम्मीद करेंगे आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी, आपके हस्बैंड आपको हेल्प करेंगे, आपके बाकी लोग हेल्प करेंगे. So this is the first step, and second, you should fall in love with yourself because it's a journey, and you should enjoy your journey rather than to achieve its because all the things like all the achievements are the byproducts, and ultimately what matters is the satisfaction you carry with yourself towards the end of your life. That's it. So good luck to you. And the last but these all, I'm thankful to all the women, all the PhD scholars, postdocs who I nurtured during my way, and I'm very proud that I'm a very blessed teacher on this earth. They are doing so well. We are entrepreneurs too now, and I'm very, very thankful to Manju ma'am also. With her guidance, I'm just developing the Shriram Institute of Industrial Research Gurugram Center, and that would be the unique center. And I need all of your blessing from all of you. My sir, SD Purohit, is sitting in front of me, sir. I need all your guidance, and I'm very, very thankful to you. हमारे जो teachers होते हैं वो हमारे आदर्श हैं, और आज मुझे बहुत proud है कि मैं आज 20 साल बाद उसी जगह पर देख रही हूँ जहाँ पर मैंने जो है अपना career उधर से start किया था, और मेरे teachers मेरे ही सामने बैठे हैं. So I feel so blessed, and thank you to each and everyone. And Manju ma'am, you are amazing, you are inspiring, and we need more women just like Manju ma'am, because her inspiration is so contagious, her motivation is so contagious that it bounds every woman to stand up and to work for the society, work for the others, and enable the other women to take it to the next level. Thank you so much, ma'am, and thank you, Parijit ma'am, Ajay Verma sir, and Roya sir, and all the dignitaries who are sitting in front of me, Alok sir, and all of us. Thank you so much. We are proud of you. We are proud of you being our student. I'm really very happy and celebrate this occasion that we are having you as a student. From 25 years ago, we had the first batch of students in Department of Biotechnology when we started it. And now I'm very happy to see Sophia growing to this height. And I wish you all the very best. And I hope that you progress more and bring more greater name to the Department of Biotechnology and more University. Thank you so much. Now I would request all the speakers for the presentation of memento. I would request the chairpersons to please come over here so that we have the memento presentation. I request Dr. Dhawan to please receive the memento. ऐसे कैसे होगा?
ये मोबाइल से खींच दिया ये ऐसा बड़ा मुश्किल से मौका मिले Now I request Dr. Patna, please receive the memento. Just सामने Thank you. It is not only Dr. Medavi, please come forward. Just सामने Just मैम सामने मैम इधर Thank you. Dr. Sudipti. Yes ma'am. फोन से ले लीजिए One second. थैंक यू सो मच And Dr. Sophia. आप भी आ जाओ. Yes. Sir, इधर. One second. Thank you. So friends, we are breaking for tea and reassemble after 15 minutes so that we do not waste the time and rejoin again.
एक्सक्लूसिव। ये मैडम सारी महिलाएं जो है या तो हनी कलेक्शन में या जामुन के प्रोसेसिंग में सीताफल आम का अच्छा काम कर रही है। हाँ, मैडम के साथ। बिल्कुल। भैया ऊपर लिया, ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आइए। चंदन जी, थोड़ा अरे वो फोटो किसको दिखते हैं वो क्यों? Yes, sir, इधर 1 second. विनोद साहब आप भी चले जाओ, चले जाइए। आपने कितना डेटा दिखाया आपने। Yes, इकबाल इधर गवर्नर साहब नहीं है क्या? मैं खड़ा हूँ भाई, जहाँ होना चाहिए वहीं खड़ा हूँ। गवर्नर साहब आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन आपने फोटो नहीं दिखाई, इसमें 2 चीजें मिली। ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूट 1986 में यूरोपियन साइंटिस्ट पड़ रही है ना। तो शूट पे नहीं मिली, शूट पे का कहीं शूट पे नहीं मिली, हमारा नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं मिला। चालू है नहीं, चालू है अरे उसका We are starting the session. सेशन की शुरुआत से ही प्रोफेसर मैडम परमजीत कोरोना मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चेयर करें सेशन को। डॉक्टर सतीश शर्मा आपके साथ चेयर कर रहे हैं और रिकॉर्डियन के रूप में हमारे साथी नरेश बेलारिया सर जो है वो प्रोसीड्यूर को रिकॉर्ड करेंगे। इस सेशन में हमारे पास 4 स्पीकर्स हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हम उनको सुनेंगे कि वो रियल फील्ड ट्राइबल्स के साथ, रूरल पॉपुलेशन के साथ किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से उनका आर्थिक समृद्धि उत्पन्न करने की वो कैसा काम कर रहे हैं। ये सेशन जब समाप्त होगा उसके बाद हम एक फेस टू फेस रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरेक्शन करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग कहीं जाए नहीं और यहीं पे उपस्थित रहें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं विज्ञान को किस प्रकार से इनके साथ जोड़ करके इनकी भलाई के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। सो वी ऑल साइंटिस्ट सिटिंग ओवर हियर कैन थिंक अबाउट दैट कि वो कैसे काम करते हैं, वो अपना काम बताएं और हम उनको बताएं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अच्छा सेशन होगा। मैडम मंजू शर्मा उस सेशन को चेयर करेगी। हम चाहेंगे कि आप प्लीज कहीं भी जाएं उस सेशन में। दैट विल बी द वेरी वेरी वंडरफुल सेशन। सो आई नाउ हैंड ओवर द डायस टू द चेयरपर्सन एंड
मैं आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं और प्रोफेसर पद्मा श्रीवास्तव मैडम मेरे साथ हैं और साथ ही हमारे जो रिमोट एरिया है, हमारे गांव के जो क्षेत्र हैं वहां से हमारी बहुत सारी माता बहन और बुआएं आई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा भी प्रोफेसर ने कहा कि एक एक अलग तरह का सेशन है, तो इस सेशन में हम आज बातचीत करेंगे किस तरह हमारे इन रूरल एरियाज में क्या क्या उद्यम हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्यम, और उनसे किस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आज के हमारे जो स्पीकर हैं सुनील दुबे साहब, जो कि जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड एक्शन आयला के, मैं उनसे आग्रह करता हूँ आए और अपना डिलीवरी दें। सुनील जी, और बड़ा टाइम का कंसंट्रेशन अभी से आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में आप कहने लगे थोड़ा टाइम सभी को 15 मिनट। सर माइक ऑन एकेडमिक गुरु मेरे प्रोफेसर एस डी पुरोहित सर हैं, और जो मेरे फील्ड के गुरु हैं जंगल के, वो डॉक्टर सतीश शर्मा सर है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैंने एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी किया और उसके बाद मैंने 10 साल पढ़ाया पीजी लेवल पर। मैंने जंगल भी बचाए और उन जंगलों को अब एंटीलोप सेंचुरी भी वो डेवलप हो रहे हैं। जोजरू में 1048 हेक्टेयर का जंगल हमने बचाया, उस पर काम किया, और वहाँ ताल छापर चूरू से 500 ब्लैक बक और चिंकारा आ रहे हैं, और वो जल्दी ही कंजर्वेशन रिजर्व से एंटीलोप सेंचुरी डिक्लेयर होगा। ये हमारा सपना है। तो जब एनवायरमेंटल साइंस में हम लोग काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हमारे दिमाग में ये था कि हम किताब के अलावा, जब किताब का ज्ञान है तो उसको बाहर कैसे समझें, ये बड़ी समस्या है। और उसको समझने के लिए भाग्य से मैं जंगलीपन था, नैसर्गिक जंगलीपन था। कुछ क्लासमेट्स हम लोग भटकते थे नेचर के बीच में, और हम बस लोग खोजते रहते थे जो हमने किताब में पढ़ा, डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स, ये सब क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय क्रमण, सबने पढ़ा। लेकिन फील्ड में देख के बताना कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी स्टेज है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है पढ़े लिखों के लिए। मैं ये प्रेजेंटेशन, मेरी माता बहनें कोटड़ा से आई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ कि पढ़ाने के बाद मैं 2013 से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ पूरे देश में, 15 राज्य घूम चुका हूँ, बंगाल की खाड़ी से गोवा के जंगल, पश्चिमी घाट के, और हिमालय से लेकर के केरल के जंगलों तक। ये जो वेलकम स्क्रीन में आप देख रहे हैं, सविता मौशी है, महाराष्ट्र में, जिनके हम जाते हैं, और जो बाजरे की मठरी है वहां नहीं बनती है, जो हमने उनको बताया और इन्होंने बनाई। तो ये स्लाइड मैंने इसीलिए रखा कि सविता मौशी की तरफ से आपको बाजरे की मठरी प्रस्तुत है। और जो खाना, जो अलग अलग चीजें आप देख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने महायात्रा करी गुजरात में 80 गांवों में 12 दिन तक, और वहां पर हमने इंडिजिनस जो भी प्लांट रिसोर्सेज थे उनको इकट्ठा कर करके, बाद में आपको और भी चीज बताऊंगा कि हमने पकाए भी, बनाए भी आइटम्स, और ये चीजें भी हमने डिस्प्ले पर रखी 80 गांवों में। 12 दिन तक हम भटकते रहे, घूमते रहे, और ये हमने उनको बताने की कोशिश करी कि यही आपकी धन दौलत है, संपदा है, जिससे आप जिंदे रह पाओगे, स्वस्थ रह पाओगे।
जैसे अभी एक फ्लोराइड की समस्या थी, तो वही शेखावाटी रीजन झुंझुनू सीकर चूरू का, जहां पर जो लोग कम दही छाछ खाते हैं उनके पैर फ्लोराइड से ग्रसित है, गठिया, शरीर नाटा, फ्लोरोसिस। और वहीं के जो जाट राजपूत हैं, जो खेतीहर हैं, भैंस पालते हैं, वो बाजरे की रोटी सुबह, ठंडी रोटी सुबह दही में चूर करके खा के निकलते हैं, वो 6-6 फीट के हैं। और उसी झुंझुनू सीकर ने कारगिल में सबसे ज्यादा शहीद किए। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा किस तरह से इंपॉर्टेंट है, हमारे वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज, हमारे इंडिजिनस प्लांट रिसोर्सेज हमें कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। और रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर मुझे 2-4 मिनट ज्यादा भी चाहिए तो मुझ पर कृपा करें। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि इंडिजिनस प्लांट रिसोर्सेज, वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्हीं से हम हमारी हेल्थ को सही रख सकते हैं। सिंपल, इंडिजिनस प्लांट रिसोर्सेज से ही हम हमारी हेल्थ को सही रख सकते हैं। कोरोना काल में अश्वगंधा का चूर्ण ढूंढने के लिए लोग फड़फड़ा के घूम रहे थे, नीम गिरोय चोर चोर करके ला रहे थे लोगों के घरों से, ठीक है। अतिबला जो सड़क के किनारे लगती थी, पुनर्नवा जो टाइफाइड का सर्वोत्तम इलाज है, वो सब गायब हुई सड़क से। अब हम टाइफाइड होने पर डॉक्टर की अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, जबकि इस सीजन में पुनर्नवा फैली हुई है लेकिन उसकी पहचान नहीं है और उसको पीस करके उसका रस पीने की गुण नहीं है हमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तकलीफ के दिनों में सहजन, मोरिंगा, उसके पत्तों का रस 50 ml प्रति रोज पी लिया जाए तो वो पीड़ा को कम कर देता है। नहीं, वो नहीं समझ में आता क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। तो ये चीजें हैं कि हमें इंडिविजुअल वेल्थ की तरफ जाने की जरूरत क्यों है। उसके बाद में जो हमारे वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज हैं, जो जंगली हमारे, जो वन प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जो हमारी माताएं बैठी हैं, वो इन सब के बारे में जानती हैं। उनकी देशी भाषा में पूछेंगे बहुत ज्यादा जानती है कि जो जंगली रिलेटिव्स हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं लोग वो ये पढ़ सकते हैं कि ओरिजिनल जीन्स, और जब बीमारियां होती हैं फसलों में तो वाइल्ड जीन से ही फसलों के उपचार की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है। उसके बाद वो केमिकल फ्री है, डिजीज रेजिस्टेंस उनमें गजब का होता है, इसलिए वो बेहतर जीते हैं, बेहतर होते हैं। यदि उनका सेवन किया जाए तो वो हेल्थ को बेनिफिट करते हैं। वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं क्योंकि वहां पर एडिशनल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं दिया जाता, उनको आवश्यकता भी नहीं होती है। ये आवश्यकता होती है जब मोनोकल्चर प्लांटेशन होता है, एक ही प्रजाति की आप एक कल्चर लगाते हैं, एक ही तरह का उसको न्यूट्रिशन चाहिए, कंपटीशन होता है, तब आपको सप्लीमेंट देना पड़ता है गेहूं के खेत में, मक्का के खेत में। लेकिन जहां जंगल में, प्रकृति में मिक्स प्लांट्स उगते हैं, मिश्रित अवस्था में वेजिटेशन उगती है, तो उनका जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, जो प्लांट साइंस के लोग हैं, उनके माइक्रोराइजल की जड़ों के साथ एक दूसरे का जो सह संबंध है, एक प्रजाति दूसरी को जीने में मदद करती है। किलोमीटरों तक से वो पानी और न्यूट्रिएंट लाते हैं। इसीलिए अरावली के पहाड़ों पर गर्मी में भी आपको पहाड़ पूरे चोटी तक पेड़ों से ढके हुए क्यों दिखते हैं, कैसे जीते हैं, ये उनका आपसी एसोसिएशन है। इसी तरह से वो हर तरह की मौसम की अवस्थाओं को जीने में सक्षम होते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। उसी तरह से उनका न्यूट्रिएंट बैलेंस भी अच्छा होता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट खुद प्राकृतिक रूप से लेते हैं, संचय करते हैं और वही आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से बहुत सारे गुण हैं जिनके आधार पर वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए गजब का इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे बड़ा हमारा पशु जो आज चारे के लिए भटक रहा है क्योंकि उसके लिए इन्वेजिव स्पीशीज ने हमारे रोड साइड को, हमारे चरागाहों को, हमारे जंगलों को ढक दिया, तो उसको चारा कहां से मिलेगा? वो किस पे मुंह मारेगा? सीताफल के पत्तों पर, जिसका पल्प आपको पसंद है, फ्रूट आपको पसंद है, लेकिन जिसका पत्ता चरा नहीं है, बकरी भी नहीं खाती है। या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिसे आप उगने देते हैं, बढ़ने दे रहे हैं, विलायती बबूल, लेकिन हमको उसे उखाड़ने का या इरेडिकेट करने का हमको ख्याल नहीं आता है। या वो लेंटेना जो वर्ल्ड की वन ऑफ द 10 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, उस लेंटेना को हम उखाड़ना उचित नहीं समझते हैं, तो हमारा पशु क्या खाएगा? अदरवाइज अगर आप नेचर में देखें तो नेचर में हर तरह की घास वनस्पति होती है, लेकिन हमारा पशु सेलेक्ट कर करके खाता है।
हमारी गाय भैंसे हर तरह की घास पे मुंह नहीं मारती हैं, वो जानती हैं कौन सी पैलेटेबल है, कौन सी नॉन पैलेटेबल है। तो अगर हम देखें तो भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज जो ज्ञात हुई है, उसमें से 17,000 प्रजातियां फूड रिसोर्स के तौर पर प्राइमरीली काम में आती है। उनमें से अगर देखा जाए पूरे विश्व में, यदि देखा जाए फूड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए गेहूं, मक्का और चावल 50% सोर्स बनाते हैं, 50% हिस्सा बनाते हैं। हमें रोज 30 से ज्यादा विटामिन और मिनरल का कॉम्प्लेक्स चाहिए हमारे फूड में। 12-13 तरह के विटामिन, 18-20 तरह के मिनरल। क्या हम हमारे फूड में सब लेते हैं रोजाना? तब आपको बाजार में मिलता है, बिना व्यायाम करे वजन घटाएं मात्र एक गोली रोज से, वो कुछ नहीं है, इनका पैकेज है। अब यही पैकेज आपको नेचर में कैसे मिलता है? नेचर में हमें ये पैकेज कई सोर्सेस से मिलता है। जंगलों में है, समुद्रों में है, नदियों में है। जो नदी, तालाब, झील हमारे बने हुए हैं, उनमें हमारे फूड सोर्सेस हैं। जहां दो इकोसिस्टम, पानी, जमीन या जंगल, घास स्थल, ये दो इकोसिस्टम मिलते हैं, जिसे इकोटोन कहते हैं, उस रीजन में हमारे फूड सोर्सेस मिलते हैं। या जो कॉरिडोर्स होते हैं, वाइड कॉरिडोर्स, आप ये मत समझिए कि टाइगर, एलिफेंट, लॉयन के ही कॉरिडोर होते हैं। ये कॉरिडोर फ्लोरा के साथ जुड़े हुए हैं, वेजिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी एनिमल का माइग्रेशन उस फूड के साथ होता है। मांसाहारी जानवर यदि कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके हर्बीवोर वहां प्रेजेंट होने चाहिए, और हर्बीवोर यदि होंगे तो फिर वहां पर उसके एडिबल प्लांट्स होंगे। कॉरिडोर को समझें, खाली शेर के संबंध में शेर के राजमार्ग को ना समझें कि सड़क है और शेर जा रहा है, उसके प्रे और प्रे का भी फूड, वहां तक आपको समझे। तो ये वाइल्ड प्लांट सोर्सेस वहां से भी मिलते हैं। कृषि से भी हमें फूड मिलता है। कृषि के अलावा खेतों की मेड़ पर बहुत सारी चीजें प्राकृतिक रूप से लगती हैं, बहुत सारी चीजें। ये सामा, राजगिरा, ये सब जो आप खाते हैं, ये तो यूं ही से खेत की मुंडेरों पर लग जाता है, जिसे अब खरपतवार मान करके फेंक दिया जा रहा है। ये बाकी के जो निजी चरागाह है, पास्चर लैंड है, इत्यादि सब जगह पर हमें हमारे वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज मिलते हैं। जो ये लिस्ट 1000 प्लांट की हो सकती है, मैंने आपके सामने जो लिस्ट बताई है वो कुछ प्लांट्स की बताई है जो हमारे वाइल्ड फूड का रिसोर्स हो सकते हैं, जो हमें पोषण देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और उनमें यदि देखेंगे ये जो आप देखेंगे यहाँ कई नाम आपके लिए जानकारी, मतलब आपको पता है, खेजड़ी, महुआ, चिरौंजी, चिरौंजी जैसे अचार भी कहते हैं एमपी में, बहेड़ा, हरड़, धावड़ा, ये कम लोगों को मालूम है। सफेद धौंक, जिसका गोंद सर्वोत्तम क्वालिटी का गोंद है, और बच्चे के जन्म के बाद माता जो बत्ती सा खाती है, उसका जो लड्डू बनता है, उसमें ये सफेद धौंक का गोंद, सर्वोत्तम गोंद, वही मिलाया जाता है। इसके अलावा टीमरू, जिसके पत्ते से बीड़ी तो बनती है, लेकिन उसका फ्रूट शानदार फॉरेस्ट फूड है, जिसे खाके हम लोग दिन भर 10-15 टीमरू खाके दिन भर जंगल नाप सकते हैं। उसके अलावा बेलपत्र, अर्जुन, रायण। अब रायण कितने लोगों ने देखा होगा? मनेलकारा, हेक्सांड्रा, बस कुछ नाम होंगे, और कुछ समय बाद ये हाथ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि रायण का हैबिटाट जैसे नष्ट हो रहा है, और रायण पर डिपेंडेंस हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारा जो वाइल्ड फूड है, वो खत्म। उसका इतना शानदार टेस्टी फ्रूट है, लेकिन वो अब हमें दिखाई नहीं देता। आंवला, अमलतास, कड़ाया, कड़ाया गम कतीरा पेट की गर्मी को शांत करने के लिए सबसे बेहतर है। इसके गोंद को दरदरा करके पानी में डालें, फूल जाता है दही की तरह, उसे खा लें, गर्मी पूरी आपकी निकल सकती है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसकी पूरी गर्मी, बदन की गर्मी, इस सब के लिए गजब का कूलेंट उसका गोंद है। इसके अलावा उम्बिया, मिलियोसा टोमेंटोसा,
ये तो शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ सदर अरावलीज में इसके शानदार पेड़ हैं और इसके फ्रूट इतने शानदार पलती हैं जिनका जैम और जेली बहुत अच्छा बन सकता है। तो इस तरह से ये, और नीचे मैंने कुछ क्लाइंबर्स भी आपको दिए हैं। आप सोचेंगे ये नाम क्लाइंबर्स के, ये हमारे फूड रिसोर्सेज से गजब की चीजें बनती हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले सहजन। सहजन से मैं आपके सामने, मुझे कुकिंग का शौक है, मैं अच्छा भोजन बट्टू हूँ, ठीक है, तो मैं सहजन के पत्ते, फूल और फली से 200 तरह के व्यंजन बना सकता हूँ। मेरे पास 200 तरह की रेसिपीज है, ओनली मोरिंगा की, सहजन की। और जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मैंने सहजन की फली को उबाल के शरबत, उसका सूप बनाया, उसका पाउडर बना के रखा, उसका चिलड़ा बनाया, उसका रोटी बनाई, पराठा बनाया। उसके अलावा थेपला, जो आप थेपला बाजार में भी बिकता है, वो सहजन का थेपला हम लोगों ने बनाया। उसके साथ में ये गांठिए, पकौड़े, ये सब चीज सहजन के पत्ते की चटनी, पुदीना, मिर्ची, धनिया के साथ में बहुत 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 शानदार और टेस्टी होती है। मुठिए, गट्टे और ये खाखरा, सहजन का खाखरा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं सहजन की आपको बता रहा हूं। इसके अलावा 200 से ज्यादा चीजें सहजन के पत्ते, फूल और फली से बन सकती है, मैं खुद जानता हूं। यानी आपके पास अगर कुकिंग स्टाइल है, आप जस्ट कुकिंग का शौक रखते हैं, तो आप उससे 50 तरह की चीजें बना सकते हैं, बस यही इसका मतलब है। दूसरा, डायस्पोरिया बंदी फेरा, बहने जानती है, अरीठी कहते हो, क्या कहते हो कोटड़ा में? अरीठा कहते हैं। आलू का बाप है, आलू आयरलैंड का है। आप 4-5 अरीठे रोस्टेड चूल्हे में सेक करके खा लीजिए, दिन भर भूख नहीं लगेगी। मैंने उत्तराखंड के हिमालय के जंगल नापे हैं, बंगाल की खाड़ी में घुमा हूं, केरल के जंगल नापे हैं, वेस्टर्न घाट के, गोवा के, कर्नाटक के जंगल नापे हैं। ये सेके हुए अरीठे 4-5 खाए और दिन भर पहाड़ चढ़े। ये गजब का न्यूट्रिएंट है, भूख मिटा देता है, थोड़ी सी मात्रा आपके पेट को भर देती है। नाउ इसकी सब्जी तो बहुत जगह बनती है, उबाल करके और बस आलू की तरह सब्जी फ्राई कर लीजिए। हम लोग अभी होम साइंस कॉलेज उदयपुर की एक टीचर है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है, वो यहाँ तैयार कर रही है। अभी ये सीजन में अब अरीठे आएंगे, बेल सूख जाएगी और ये गिर जाएंगे, तब इनकी चिप्स बनाने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो और ये फोटो मैं आगे और बताऊंगा, कि मेरे बच्चे हैं रावत भाटा के भीलों के बच्चे, जिनके साथ में मैं वहां पर हफ्तों तक रहता हूँ, खाता पीता हूँ, तो ये अरीठे सेक करके खा रहे हैं, मेरे पास एक भी नहीं बना। दूसरा, चकोतरा, ये नहीं देखा होगा, गोदड़िया नींबू भी कहते हैं। सबसे बड़ा बिजोरा नहीं है, सिट्रस मैक्सिमा, बिजोरा नहीं है, ये फुटबॉल साइज का है, आपके सिर की साइज का है, किलो 1.25 किलो साइज का होता है, मोटा छिलका होता है, स्पॉन्जी, और अंदर इतनी बड़ी कली वो नरमी की तरह निकलती है। एक एक कली को छीलेंगे, ये मैंने पूरा प्रोसेस फोटो डॉक्यूमेंट किया है मेरे घर पर ही। मैं महाराष्ट्र से ढोकर के लाया हूँ कट्टा भर के, बाकी यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़, यहाँ पर भी कहीं लग रहा है। बीइंग एन इकोलॉजिस्ट, हम ये भी जानते हैं कि कौन सा फूड प्लांट कहाँ उगता है, किस हैबिटाट में उगता है, ये हमारा फायदा है। तो चकोतरा का शरबत मेरे पिताजी पी रहे हैं, इसके छिलके मैंने सुखाए और ये मैंने कल रात को ही पीसा, फेस पैक। अब मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला लो, बेसन के साथ मिला लो, आटे के साथ मिला लो और लगा लीजिए, फेस पैक, बॉडी पैक, आप जो भी पैक कहना चाहो। यानी ये नींबू, बिजोरा, संतरा, माल्टा, नारंगी, उनके अलावा चकोतरा का छिलका भी उसी तरह से फेस पैक में काम आ सकता है। अभी इसका कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, फालसा, ग्रीविया एशियाटिका। फालसा भी नहीं देखा होगा, आई एम श्योर, मेरे सतीश सर के अलावा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फालसा का शरबत गर्मी में इतना शानदार ठंडक देता है, और ये हमारी बहू रानी है, हमारे मित्र हैं, उनकी भाभी हमारी बहू रानी है, जहां पर ये फालसा बहुत अच्छा आता है बाजार में। तो बस इसको पानी में मसला, निचोड़ा, बीजों को रख लिया आगे बोने के लिए, और उस पानी को छाना और फालसा का शरबत शानदार कूलेंट है। तो ये आज गायब हो गया बाजार से और घरों से। इसके अलावा इसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो ज्यादातर ये जानते हैं कि इसको लट्टू की तरह घुमा करके खेलते थे बचपन में।
लेकिन ये फूड एंड न्यूट्रिशन का गजब का सोर्स है और इसकी भाजी बनती है। ये राजस्थान में बहुत कम इसकी भाजी बना करके खाई जाती है, कुटला की। हमारे एक मित्र है चौरई, गवर्नमेंट कॉलेज छिंदवाड़ा चौरई में, मध्य प्रदेश में, विकास शर्मा, ये उन्होंने इसके फोटो डाले हैं और ये उनको मैं क्रेडिट देता हूं। ये कुटला हमारे खेतों की मेड़ पर यूं ही चलता है, उदयपुर में भी लगता है, अगर सतीश सर मुझे करेक्ट करें तो, यहाँ पर भी खूब लगता है, लेकिन हम पहचानते नहीं है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। इसे हम प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कमल ककड़ी, मैंने कमल ककड़ी का अचार खुद बनाया, मैंने कमल ककड़ी की 2 तरह की सब्जी बनाई, मैंने कमल ककड़ी को उबाल करके उसका रायता बनाया। ये सारी चीजें हम खाते हैं, खाते थे, लेकिन अभी ये हमारे यहाँ से खत्म हो गया। अब हम बाजार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में वेज रायता ऑर्डर देते हैं, उसमें पाइनएप्पल कट के आता है, खट्टे के साथ और खट्टा। अगर आप विरुद्ध आहार को पढ़ लें तो उस वेज रायते में पाइनएप्पल नहीं आना चाहिए। विरुद्ध आहार को अगर आप पढ़ रहे हैं, जो विरुद्ध आहार होता है, दूध के साथ प्याज नहीं लेना, दूध के साथ में नमक की चीज नहीं लेना, जो विरुद्ध आहार है, गलत कॉम्बिनेशन। लेकिन हम उस वेज रायता को चाव से खाते हैं जिसमें दही में पाइनएप्पल भी डला हुआ होता है, उसकी बजाय हम ये नहीं खा पाते जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध है। हमारे यहाँ कल रेस्पेक्टेड सतीश सर ने बोला बहुत सारी वेटलैंड्स हैं जहाँ कमल उग सकता है। कमल के फूल का तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था, कमल ककड़ी का मेरे भरोसे छोड़ा उन्होंने। वो जानते थे कमल ककड़ी का यूज है, लेकिन मैं बताऊंगा उनको मालूम था कमल ककड़ी का गजब का यूज हो सकता है, लेकिन कमल ककड़ी को लोग पसंद नहीं करते। भिंडी जैसा स्वाद आता है, शानदार चीज है। और ये अचार मैंने मेरे घर पर ही डाला, मेरे माता पिता खाते हैं, मेरे पिता 90 to 93 इयर्स के हैं, बिल्कुल सीधे सरल, बहुत बढ़िया चलते करते हैं। दोनों को कोई आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द वगैरह, डायबिटीज, बीपी ऐसा कुछ नहीं। 56 रोज खाते, खट्टा मीठा तीखा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा रीडिया हाइपोक्रिटिफॉर्मिस, फांग बेल जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, इसके पत्ते से मुठिया, चिलड़ा, थेपला, पराठा, पूड़ी, मठरी सब कुछ बन सकता है। जो आप बनाना चाहें, जो बनाने का आपको गुण आता हो, उसके पत्ते का यूज कर लेगा। ये फांग बेल का चीला, मठरी, ये मुठिए, ये हम लोगों ने बनाए, ये हम लोगों ने गांवों में खिलाए, लोगों को खिलाए, महायात्रा गुजरात में करी। जहां भी हम जाते हैं वहां पर हम ये लोगों को जो वहां पर मिल रहा है अपने खेतों की मेड़ पर ढूंढते हैं, अच्छा चलो बनाते हैं। इसके अलावा अमलतास, अगर छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसको कब्ज हो रही है ज्यादा, इसकी पकी हुई फली को तोड़ते हैं और उस पकी हुई फली में बीच बीच में जो गूदा है, गुनगुने पानी में थोड़ा सा मसला और पिला दिया। आधे घंटे बाद ट्रैफिक साफ, आधे घंटे में ट्रैफिक साफ। गजब का लक्सेटिव है इसका, लेकिन खाली लक्सेटिव नहीं है, इसकी मिठाइयां बनती हैं। जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 हो, टाइप 1 हो या कोई टाइप हो, वो अमलतास के गूदे से बनी हुई बर्फी तबीयत से खा सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें भी हम लोग बनाते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। नेक्स्ट, गुड़मार। गुड़मार को हम समझते हैं कि इसका एक पत्ता खाया तो उसको खाने के बाद में मीठा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन गुड़मार का पराठा, थेपला या ये खाखरा, ये अगर व्यक्ति खाए तो उसको जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज और मिलेंगी वो और भी अलग होंगी। तो डायबिटीज के लोग गुड़मार की पराठा, खाखरा, थेपला, मुठिया कुछ भी खा सकते हैं, खाली पत्ता खा के शुगर को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। उसके अलावा शतावर आप जानते हैं, मेरा बच्चा, दूसरा बच्चा 12 साल के गैप पर हुआ, पत्नी को दूध नहीं उतरा तो कुछ नहीं, मुझे मालूम था, शतावर का पाउडर लाया, उसको पानी में घोल के, हमारे पास यहाँ दूध है नहीं तो पानी में घोल के 1 चम्मच शतावर की जड़ का पाउडर सुबह शाम दिया, गंगा जमुना बहने लगी 2 दिन में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ मैंने फोटो नहीं डाला, शतावर की जड़ का हमने आंवले के साथ में अचार बनाया, बहुत शानदार अचार होता है। और रीडिया हाइपोक्रिटिफॉर्मिस, फांग बेल के थेपले के साथ में हमने ये फूड वर्कशॉप में दिल्ली में लोगों को खिलाया,
कितने छोटे छोटे 2 थेपले, 1 चम्मच शतावर आंवला का अचार, जानते हैं कितने में बेचा? दिल्ली में 200 रुपए। सो उस तरह से ग्वार पाठा तो बहुत लोग जानते हैं कि इसका यूज क्या है। इसके अलावा सीताफल का ये जो शरबत है, ये गजब का कूलेंट है, लेकिन लोग बाग उसे बस जबरदस्ती खाता हूं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो वाइन फूड्स के हैं, जहां आप टिंगरू देख रहे हैं, बीड़ी पत्ता जिसका फ्रूट गजब का एडिबल है, आंवला का पाउडर है, कीकोड़ा बहुत कम लोग जानते हैं कि कीकोड़े को काचरी की तरह स्लाइस करके सुखा करके भी रखा जा सकता है और ऑफ सीजन में कीकोड़ा को खाया जा सकता है। चीकू की चिप्स बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन चीकू की चिप्स भी हम लोगों ने ट्राई करी है सक्सेसफुली। इसके अलावा लिसोड़े का अचार तो जानते हैं, लेकिन जो पचकोटा गैर सांगरी जो हमारे बनता है, उसमें लिसोड़ा भी सुखा करके रखा जाता है। कुछ नहीं, महुआ का मुझे 2 मिनट से थोड़ा 2-3 मिनट और ज्यादा चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ जाएगा और मेरी तमन्ना पूरी इनकी तमन्ना पूरी रहने दी सर। तो ये भांग, अब भांग को लोग समझते हैं कि शिव कुटी तो बस एक ही प्रयोजन में काम आती है, लेकिन सर्दी के मौसम में भांग के बीज को रोस्ट करके उसकी चटनी धनिया मिर्ची पुदीने के साथ बना करके 2 चम्मच चटनी खाएंगे, रजाई फेंक देंगे। उत्तराखंड में मैंने फेंकी है रजाई, उत्तराखंड में खाई है और राजस्थान में भी लाके मेरे माता पिता को खिलाई। भांग के बीज की चटनी गजब की गर्मी देती है, शरीर को ताकत देती है सर्दी के मौसम में, और ये हिमालयन जोन में परंपरागत रूप से भांग के बीज की चटनी खाई जाती है। सो ये गजब का है। मैं बस कर दूंगा ये 1-2 मिनट में। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको फील्ड के बता रहा हूं, जो क्योंकि हम लोग किताबी ज्ञान में रुचि नहीं रखते। मैं खूब पढ़ा लिखा हूं, IUCN के 5 वर्ल्ड कमीशंस में मेंबर हूं, मिनिस्ट्रीज की कमिटीज में मेंबर हूं, लेकिन मेरे गांव की अवस्थाएं जो मैडम ने देखा, इन मैडम ने कि गांव के पानी की हालत क्या थी, तो उन्होंने गांव पर फोकस किया। वही चीज मेरा काम है, मैं देशी तरीके से उन लोगों के साथ जीता हूं जिन लोगों के साथ में फूड एंड न्यूट्रिशन की समस्या है। उनका जीवन जीने के साथ में समझ में आता है कि वहां क्या क्या उपलब्ध है जो वो लोग खुद भूल गए। 40-50 साल तक की जनरेशन उस ज्ञान को भूल चुकी है, गांव में भी, ट्राइबल्स में भी, शहर तो छोड़ दीजिए, शहर तो गया भी था। ये एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने लगातार, ये रावत भाटा का डैम जो है, रावत भाटा जो लोग जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डैम है, उससे 25 किलोमीटर ऊपर भीलों के गांव है, वहां पर उन्होंने मुझे एक कमरा भी दे रखा है जो यहाँ पर दिख रहा है। वहां पर भी मैंने चूल्हा डाल रखा था और वहीं पर माता बहनों के साथ में मैंने वर्कशॉप्स करी है। बाजरे की ठोटी बनाई, वही मठरी, बाजरे की सामा की खीर बनाई और राजगिरे के पकौड़े बनाए, और वहीं पर बूढ़ी माताओं ने खाखरे के पत्तल दोने बना लिए पलाश के, और उसी के अंदर ये सबको सर्व हुआ। इस एक्सरसाइज में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बूढ़ी माताएं भी शामिल हैं और जवान बहुएं भी शामिल हैं, और सब ने इस चीज का मजा लिया। ये एक एग्जांपल है, ऐसे मेरे पास में 200 स्लाइड बन सकती है एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल लेकिन मैं आपको अलग अलग लैंडस्केप का दिखा रहा हूं, वो एक्सक्लूसिव लेडीज के साथ का एक्सरसाइज, लेकिन जो रोज मैं बच्चों के लिए खाना बनाता था रोज शाम को वहां पर, और वो बच्चे मेरे साथ में ये खाना खाते रहे हैं। ये फूड एंड न्यूट्रिशन, तरह तरह की चीजें बनाना, वहां पर अरेकी है, बच्चे उसे सेक के खा रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे सेक के खा रहे हैं, जो मैंने आगे भी पहले भी फोटो दिखाया, डायोस्कोरिया बल्बी फेरा, उसे सेक के खा रहे हैं, उसकी सब्जी बना रहे हैं। वहां पर खेतों पर हमको जो भी चीज मिली है वो हम ला करके खाते हैं। यही एक्सरसाइज मैंने उत्तराखंड में करता हूँ, मध्य प्रदेश में करता हूँ, बंगाल में करता हूँ, गोवा में करता हूँ, महाराष्ट्र में करता हूँ, गुजरात में करता हूँ। जहां भी बच्चों के साथ में हम दिन बिता रहे हैं, महिलाओं के साथ बिता रहे हैं, हम ऐसे ही खाते पीते हैं। इसके बाद ये श्री रामपुर तालुका गांव भोकर जो शिरडी से 30 किलोमीटर दूर है, ये वहां का एक्सरसाइज है। ये दंतमंजन बना रहे हैं, बबूल, नीम, इनकी छालें, ये अमरूद के पत्ते, नीम के पत्ते, कुछ और कंटेंट। लेकिन अभी वहां पर
नीम की ये सारा हमने दातुन भी ये मंजन बनाया। और ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ मंजन का, इस फोटो में इसके चारों तरफ महिलाएं झपट पड़ी थी इस थाली पे, तो इसको ऊपर पकड़ रखा है बचाने के लिए। हर कोई इसमें से मंजन लेना चाह रही थी। ये पूरी एक्सरसाइज, इसके अलावा अपराजिता जो आप जानते हैं, क्लाइडोरिया टर्नेटा, किसी को भी क्रोनिक कफ है, पुरानी खांसी है, कफ आता है, कुछ नहीं, 1 कप गर्म पानी में 2 फुल क्लाइडोरिया टर्नेटा के डालिए, वो मुरझा जाए, निकाल दीजिए और उसको पी लीजिए। कुछ कसेला लगे तो गुड़ मिला लीजिए, मिनटों में खांसी बंद। मिनटों में आप आइसक्रीम खा करके गला बैठ जाए, फिर इसको ट्राई कर लीजिए। सो ये एक्सरसाइज भी बच्चों के साथ में, ऐसा नहीं है, ये एक एग्जांपल है, लेकिन हम हर जगह बच्चों के साथ में एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह से ये उदयपुर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान सिर्फ हम ट्राइबल को ही सिखाने का ठेका है। ट्राइबल का बहुत ज्ञान है, असली ज्ञान की जरूरत है शहरी को, असली ज्ञान की जरूरत है उस विलेजर को जो आधुनिक हो गया है। ट्राइबल जो प्योरली नेचर के बीच में रहता है, अभी भी बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जानता है, करता है, फूड एंड न्यूट्रिशन में भी, हर चीज में वो सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है ट्राइबल आज की। लेकिन विलेजर और उसके ऊपर अर्बन, ये सबसे ज्यादा खराब है। सो ये ऑस्ट्रेलिया के नेचुरोपैथी के स्टूडेंट जो उदयपुर आते हैं, ये उनको भी ये रेसिपी सिखाई, जिसमें उन्होंने आलन, बाजरे के जो पाउडर होता है उसको पानी में उबलते पानी में पकाया, मेथी डाली और सूप की तरह, आलन कहते हैं हम उसको, बाजरे का महीन दलिया उसको पकाते हैं, वो बनाया। बाजरे की मठरी बनाई, राजगिरा के पकौड़े बनाए और थेपले बनाए। ये सारी एक्सरसाइज हम उनको भी सिखाते हैं। और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि उदयपुर डिवीजन के आयुर्वेद आचार्य डॉक्टरों को लेकर के मैं जंगल में गया, तो उनको दवाई के नाम से प्लांट का नाम पता था कि सोचा पाक में क्या काम आता है, ठीक है, या द्राक्षावरिष्ठ में क्या काम आता है, लेकिन सामने खड़े थे, प्लांट पहचान में नहीं आ रहा था। वो हम उन लोगों को ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये और एक और एक्सरसाइज, ये साइंस की, मतलब टीचर्स के साथ में भी, जब मैं डीएसटी के साथ में 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एनसीएसटी से, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नेटवर्क, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और भी सारे प्रोग्राम एनसीएसटी से, तो उसमें टीचर के साथ में यश प्रोग्राम एक भारत सरकार ने चलाया था लॉकडाउन 2 के बाद में, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। उसमें भी हम लोगों ने उन टीचरों के साथ में ये मोरिंगा के प्रिपरेशंस, उनके साथ में राजगिरा के पकौड़े, मोरिंगा की चटनी, थेपले, ये उनके साथ में भी एक्सरसाइज, ये और जगह पर भी हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो गुजरात का मैंने बोला, 1 मिनट में कर रहा हूँ, गुजरात में जो हम लोगों ने करा, जो महायात्रा 80 गांवों में हम लोग भटके और हम लोगों ने वहां पर हजारों लोगों को इसके बारे में बताया। रात को हम लोग ये चीजें बनाते थे, जो भी चीजें, मैं खुद इनमें शामिल रहा हूँ बनाने में। कुलत की दाल भी है, थेपले, खाकरे, पराठे, मठरी, ये सब चीजें, महुआ के लड्डू, ये सब चीजें हम लोग बनाते थे। सुबह सुबह बनाते थे, तड़के, रात को बनाते थे और फिर हम लोग लेकर के प्रदर्शन करते थे गांव के बड़े लोगों के सामने, और उन्हीं के यहाँ के फूड रिसोर्सेज की प्रदर्शनी हम लोगों ने करी। ये प्रैक्टिस गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के अंदर हम लोग अभी भी जारी रखे हुए हैं। जो इश्यूज एंड कंसर्न्स है, मैं इनको सबको नहीं पढ़ रहा, लेकिन असली चीज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बीइंग एन इकोलॉजिस्ट, मेरा सबसे बड़ा थ्रस्ट यही है कि जो आपको नेचर से चाहिए उसका आवाज हम खुद नष्ट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा कहां से? अब आप हाहाकार करते रहिए, तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहिए, लेकिन आपका वाइल्ड प्लांट फूड सोर्स खत्म हो रहा है क्योंकि उसका आवाज नष्ट हो रहा है। और वो आवाज आप अपने बैकयार्ड में भी बना सकते हैं, अपने किचन गार्डन में भी बना सकते हैं, अपनी छत पर बना सकते हैं, अपने पास के गार्डन में बना सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी बना सकती है, हर कोई बना सकता है। लेकिन हमें इसके बारे में अच्छा दिखता है ऐसा करके कोई पेड़ लगाना वर्सेस ये इंडिजिनस और काम का है, ये सोच में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इसमें एक भोजन कल्प वृक्ष एक फेसबुक पेज है, हिंदी में उसका टाइटल है, अगर आप उस पर जाएंगे, इस पर एक्सक्लूसिवली केवल और केवल इंडिजिनस फूड रेसिपीज आपको मिलेंगी। मैं भी इसमें एडमिन टीम में हूं और ये सारा ज्ञान जो हम लोग कर रहे हैं कोशिश पूरे देश में, मैं घूम घूम करके कर रहा हूं, ट्राइबल्स के साथ, विलेजर्स के साथ, अर्बन्स के साथ में,
बड़ी बड़ी दिल्ली की फूड वर्कशॉप हो या गांव में भील आदिवासियों के साथ में, दरासियों के साथ में रहना और उस जिंदगी के मजे लेना। अंत में मेरा जो संदेश है और जो रिकमेंडेशन कल सर कह रहे थे कोई रिकमेंडेशन दीजिए, तो मेरा एकमात्र विनम्र रिकमेंडेशन है, सुझाव है, जंगली बन जाइए। जंगली बन जाइए, जंगली की तरह सोचिए, अर्बन की तरह मत सोचिए, कृत्रिम की तरह मत सोचिए, आर्टिफिशियलिटी की तरह मत सोचिए, अच्छा दिखता है मत सोचिए, काम का है और इंडिजिनस है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस जंगली बन जाइए। ये मेरी अपील है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील दुबे जी। थैंक यू, मेरी तमन्ना की आपने पूरी करी। नहीं, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी टॉक थी, आपने बहुत सारे इश्यूज इसमें कवर किए। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आग्रह करूंगा श्री राजेश ओझा जी से, जो कि जावती एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के हैं, वो कृपया आए, नहीं आए हैं तो मैं आगे बढ़ा अर्चित दशोरा को कृपया आए, और आप खुद मशरूम फार्म से केरला से आए हैं, तो आप आपका टॉक में जो है अर्चित दशोरा जी। मैं उदयपुर का लोकल हूँ और आज आप सभी के सामने मशरूम के ऊपर एक प्रेजेंटेशन आपके सामने इस मंच पे लेके आया हूँ, जो कि एसडी पुरोहित सर, प्रोफेसर सर की तरफ से मुझे ये स्टेज पे आने का मौका मिला है। आप सभी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों में से ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से किस किस ने मशरूम कभी जीवन में खाया है, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मशरूम कभी नहीं खाया, एक बार भी नहीं खाया जीवन में। तो काफी लोग यहाँ पे जैसे नजर आ रहे हैं। तो आज आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। So basically, these are the content points which I am going to cover. इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी आवाज आगे तक आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? इनके पास कॉर्नर माइक है। बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं मशरूम के बारे में आज आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि मशरूम एक प्रकार की फफूंद होती है, जो कभी हमने घर पे माता बहनों में सभी ने देखा होगा कि कभी कभी अचार में से तेल उतर जाता है, जो सफेद सफेद ऊपर लग जाता है, खाना बाहर पड़ा रह जाता है गर्मी के अंदर, तो उसके ऊपर जो सफेद सफेद फफूंद लग जाती है, वो भी एक प्रकार की फफूंद होती है। लेकिन मशरूम ऐसी प्रकार की फफूंद जिसको खाया जा सकता है, जिसकी खेती होती है और जिसके मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स काफी होते हैं। तो आज अब जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मशरूम कल्टीवेशन क्यों जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे कि मशरूम कल्टीवेशन क्यों जरूरी है, कितने प्रकार के मशरूम होते हैं, क्या इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या इनकी गुणवत्ता है, मशरूम कल्टीवेशन का भारत में क्या स्कोप है, किस तरीके से हम मशरूम को किस प्रकार से एक लघु उद्योग कोई किसान अगर किसी गांव से चाहे बहुत ही छोटे स्तर पर कुछ 2-5 किसान मिलकर किस तरीके से इस मशरूम की खेती को किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ बताऊंगा। इसके अलावा किस तरीके से मशरूम की फसल के द्वारा बाय प्रोडक्ट्स या उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको किस तरीके से बनाया जा सकता है और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दूंगी। सबसे पहले मशरूम क्यों जरूरी है, क्यों मशरूम के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो हमें ट्रेडिशनल खेती मतलब जो हमेशा से हम गेहूं मक्का और जो जितनी भी सफल सब्जियां हैं उसके मुकाबले में मशरूम को क्यों एक तरह से हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कि ये स्टेज है आज तो क्यों माता बहनों के लिए ये अच्छा है कि वो मशरूम की खेती करें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है कि सबसे पहले मशरूम की खेती के अंदर जितना भी आपका रॉ मटेरियल लगता है वो हर गांव खेड़े में और हर मतलब बहुत छोटी से छोटी जगह पर जहां पर गाय भैंसे हैं गेहूं की खेती होती है ऐसी जगहों पर जो मोस्ट ऑफ द इसके रॉ मटेरियल्स है कच्चा माल है वो मशरूम की खेती के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल लगता है वो सभी गांव के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि इसका सबसे मेजर पार्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है भूसा सूखला जिसे हम गांव में कहते हैं। तो इसी के साथ में गेहूं का चापड़ मुर्गी की पीठ घोड़े की गाय की भैंसों की जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है सप्लीमेंट्स के तौर पे। तो इस तरीके के जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये हमारे गांव में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ में जितने भी एग्रीकल्चर के हमारे वेस्ट होते हैं जैसे कि आपका भूसा हो गया शुगर केन बगासी हो गई इसके अलावा जितनी भी हमारी खलियां होती है दालों की इसके अलावा फसलों की पत्तियां जितने भी हमारी जितनी भी और जितनी भी खलियां फसलें इसके अलावा जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो मशरूम की खेती के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक मेजर बड़ा पॉइंट है जो कोविड के बाद में सभी लोगों के सामने आया कि मशरूम की खेती और उसका स्कोप क्या है। ये कोविड के बाद में काफी माताएं मैंने अब इसको ऑफ करने लगी है। कोविड के बाद में काफी ऐसे एनजीओ और कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स हुए हैं मेरे भी जहाँ पे इस बारे में फीमेल जितने भी किसान हैं और गांव के जो किसान हैं उनको इस बारे में एजुकेट किया जा रहा है अवेयरनेस बताई जा रही है क्योंकि गांव के लोगों के लिए आज भी ये सांप की छतरी है कुकुर कुत्ता है तो लोग पहचानते नहीं है इसको लेकिन ये अपना आप में इतनी गुणवत्ता वाली चीज है जो हम आगे देखेंगे। अच्छा इसकी एक खास बात ये है कि मशरूम की काफी अलग अलग वेराइटीज होती है जो कम से कम साल के 7-8 महीनों तक उगाई जा सकती है। सिर्फ 3 या 4 ऐसे महीने होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट की वजह से हम उसको नहीं उगा पाएंगे लेकिन मशरूम की काफी ऐसी वेराइटीज होती है जो लगभग कम से कम 7-8 महीनों के अंदर उगाई जा सकती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि काफी प्रकार के अलग अलग एडिबल मशरूम्स होते हैं जैसे कि जिसमें से है बटन मशरूम क्रीमीनी मशरूम पोर्टोबेला मशरूम शिताके मशरूम ओयस्टर मशरूम जिसे ढींगरी भी कहा जाता है इनोकी मशरूम्स बीच मशरूम एंड मेटाके मशरूम्स। ये मशरूम की करीब 15,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पूरी दुनिया भर में पाई जाती हैं और उसमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एडिबल होती है जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है जिनके उनके अंदर कुछ ऐसी गुणवत्ता वाली चीजें होती है जिसको कंज्यूम करने से या दवाइयों जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उनमें से 7-8 टाइप की जो मशरूम की वेराइटीज हैं वो आपके सामने है। ये इसी के साथ साथ ये अगर उगाई जाए तो इसका होटल इंडस्ट्री में जितने भी जैसे कि हम उदयपुर में रहते हैं ये एक टूरिस्ट सिटी है
तो यहाँ पे जितने भी होटल चेन्स हैं वहाँ पे इस चीज का इन मशरूम्स की वेराइटीज का कंजप्शन होता है। और उदयपुर के बाहर से कई अलग अलग सिटीज से जहाँ पे इस चीज का कल्टीवेशन होता है वहां से इसकी आवक होती है। जिस तरीके से मैंने बताया मशरूम के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, जैसे प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्पेशली माताएं बहनों के लिए खास करके, कि मशरूम एक ऐसी फसल होती है और मेरे ख्याल में सिर्फ इकलौती ऐसी फसल होती है जिसको खाने से आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी आप लोग सभी जानते होंगे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए काफी जरूरी एक विटामिन होता है और जो कि हमें धूप से मिला करता है। तो माता बहनें जो घरों में काम करती है, अपने दिन भर के क्रियाकलापों में व्यस्त रहती है, घर के बाहर नहीं निकल पाती, तो उनको मशरूम का सेवन उनको रिकमेंड किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप मशरूम खाया कीजिए। विटामिन डी आपको डायरेक्ट ओरली आप उसको विटामिन डी को कंज्यूम करते हैं। इसी के अलावा जिस तरह से विटामिन डी, कॉपर, सेलेनियम, पोटेशियम और इसके अलावा काफी अदर मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। लो लेवल्स ऑफ फैट, कैलोरीज एंड सोडियम एंड नो कोलेस्ट्रॉल। तो स्पेशली घर में अगर कोई हमारा इस तरीके का कोई अगर जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इसके अलावा या जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वो अगर मशरूम को कंज्यूम करे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, कुल मिलाकर अपनी डाइट में इस मशरूम को शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपको इसके सारे जितनी भी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यूज हैं उसका फायदा मिल सके। ये है मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया कि जितनी मैंने आपको 7-8 टाइप की आपको एडिबल मशरूम्स की आपको टाइप्स बताई, उसमें से सबसे मेजरली उगाई जाती है बटन मशरूम, जिसको सफेद खुम्बी कहा जाता है हिंदी में, और बटन मशरूम कहा जाता है। ऑयस्टर डिंगरी मशरूम है, मिल्की आपका एक और टाइप का मशरूम है जो हमारे इस रीजन में ही उगाया जाता है, जिसको मिल्की मशरूम कहा जाता है। इसी के साथ और भी तरीके के मशरूम, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वैरायटी की मशरूम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजरली खाई और लोकप्रिय जो मशरूम की वैरायटी है वो है व्हाइट बटन मशरूम, जिसको अमूमन सिंधी फैमिलीज में, पंजाबी फैमिलीज में एज ए नॉनवेज का अल्टरनेटिव मान के उसकी अच्छी स्पाइसी सब्जी बनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी भी प्रकार से ये नॉनवेज नहीं होता है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, क्योंकि काफी लोगों को मशरूम के बारे में जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार से ये मशरूम नॉनवेज नहीं होता है, इसकी खेती की जाती है। अब मैं आपको मशरूम की, ये व्हाइट बटन मशरूम जो है, इस बटन मशरूम की खेती को किस प्रकार से किया जाता है, इसका मैं आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, काफी जल्दी क्विकली कवर करूंगा। तो मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा भूसा होता है, सूखला होता है,
स्पेशली बटन मशरूम। अभी हम बटन मशरूम कुंभ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आप सभी माता बहनों को बताना चाहूंगा जो गांव से यहाँ आई हैं उनके लिए एक ये बहुत अच्छा आवक आमदनी का स्रोत हो सकता है मशरूम की खेती। इसको ज्यादातर इसको सूखले से बनाया जाता है। सूखला भूसा जो हमारे खेतों में हमारे गांव में हमको आसानी से उपलब्ध होता है, उस सूखले को पानी में भिगा के और उसके अंदर और भी तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और भी तरीके की वस्तुएं उसके अंदर डाली जाती है, जैसे चापड़ हो गया, मैंने आपको बताया, गोबर की मात्रा कुछ होती है। अगर आप ब्यौरा में जाएंगे तो काफी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से मशरूम की खेती की जा सकती है। बेसिकली मशरूम की कंपोस्ट बनाने के लिए भूसे को भिगाया जाता है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और हर 2-3 दिन के बाद में इसकी टर्निंग की जाती है। जो पाइल फॉर्मेशन होती है, जो मशरूम की खाद का बेड बनाया जाता है, उसके अंदर उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, उसको अच्छे से आपस में खाद को डिकम्पोज करने के लिए हर 2-3 दिन के अंदर उसकी खाद की पट्टी लगाई जाती है और उसके खाद को लगभग 27 से 28 दिन के अंदर उसको तैयार किया जाता है। और ये काफी बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और अगर गांव स्पेशली खास करके मैं कहना चाहूंगा माता बहनें जो यहाँ पे गांव से आई हैं, बैठी हैं, वो यहाँ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितने भी मशरूम की खेती है उसकी अगर आपको मशरूम से अगर आपको आमदनी करनी है तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इस तरीके से अगर एक कच्चा एक शेड अगर कोई किसान बनाना चाहे तो कम कॉस्ट के अंदर ऊपर पॉलिथीन की शीट लगा के, आसपास बम्बू के स्टैंड लगा के, इस तरीके से कच्ची झोपड़ी बना के, नीचे सीमेंटेड का एक लेप करके और इस तरीके से एक कच्चा सेटअप बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर मशरूम का खाद काफी गुणवत्ता के साथ बनाया जा सकता है। इस तरीके से मशरूम का जो फाइनली जो खाद बन जाता है उसके अंदर मशरूम का स्पॉन मिलाया जाता है। मशरूम का कोई किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं होता है, इसकी एक तरह से स्पॉन होता है। इसको गेहूं के बीज के ऊपर उसका एक तरह से दही का, जैसे हम जवान दूध के अंदर डालते हैं और वो पूरा एक तरह से दही बन जाता है, तो उसी तरीके से गेहूं के बीज के ऊपर मशरूम के स्पॉन को चढ़ाया जाता है। और जैसे ही उस गेहूं के बीज को जिसपे स्पॉन चढ़ाया हुआ है मशरूम का, उसको जब कंपोस्ट के अंदर डाला जाता है तो वो फंगस, वो फफूंद उस पूरे कंपोस्ट के अंदर फैलने लगती है। और जैसा कि आप देखेंगे इस फोटोग्राफ में कि किस तरीके से मशरूम के स्पॉन को खाद के अंदर, ये गेहूं का खाद है, जो गेहूं के भूसे का खाद है, गेहूं के भूसे से जो बनाया हुआ है। भूसे का रंग बिल्कुल हल्का पीला होता है। कंपोस्ट बनने के बाद 28 दिन के एक तरह से क्रियाकलापों से गुजरने के बाद में उसकी जो रंग हो जाता है उसका गहरा भूरा हो जाता है। उसके अंदर स्पॉन मिलाया जाता है। इस तरीके से 6 से 10 किलो की उसके अंदर उसकी थैलियां बनाई जाती है और उसको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के अंदर, उसको सही तापमान, सही आर्द्रता और सही कंडीशंस के अंदर उसको रख के और इस तरीके से उसके बैग बनाए जाते हैं और उसको रखा जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे ये जो बैग है मशरूम के, यहाँ पे काले नजर आ रहे हैं, यहाँ पे खाद ये काला नजर आ रहा है। और आगे आप देखेंगे तो ये फफूंद पूरा उसके अंदर, जो मशरूम की फफूंद है वो उसके अंदर फैल चुकी है और ये बैग आपको सफेद नजर आएगा। इस तरीके से मशरूम की खेती को किया जाता है। और अगर हम गांव की बात करें तो इस तरीके से कच्चा झोपड़ा बना के और किसान उसके अंदर मशरूम का ग्रोइंग रूम बना सकता है और काफी कम कॉस्टिंग के अंदर उस चीज को जोड़ा जा सकता है। ये बेसिक एक इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे जोड़ के बताई है कि किस तरीके से कोई अगर किसान है तो वो कम से कम पैसों के अंदर उसको पूरे शेड को सेटअप कर सकता है, कंपोस्ट बना सकता है, खाद बना सकता है, बीज, उसका हर रॉ मटेरियल कवर करके, और जो उसका खर्चा बैठ रहा है वो आप देखेंगे 80,000 रुपए का। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन अगर सारा मतलब आज के समय को
भी ध्यान रखें तो इस रेट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा और कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का एक क्रॉप के अंदर, एक फसल के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए का एक किसान फायदा ले सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से मशरूम जब खाद के अंदर पूरा मशरूम की फंगस फैल जाती है और किस तरीके से उसकी पिंस डेवलप होती हैं, मशरूम की फसल धीरे धीरे करके उगती है, उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है इकट्ठा करके, यहाँ पर उसके पीछे से उसके डंठल काटे जाते हैं और उसको फिर पैक करके बाजार में इस तरीके से पैकेजिंग करके उसको बेचा जाता है। इसकी मार्केट में आज भी आप देखेंगे तो कम से कम 150 से 250 रुपए किलो के भाव से ये बिकता है। ये है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जिसके अंदर गर्मी के समय में माता मैंने अगर इस मशरूम की फसल को अगर प्रिजर्व करना चाहे तो ठंडक में इस तरीके से कच्चा जमीन में खड्डा खोदकर और उसके अंदर उसको वो प्रिजर्व कर सकती है, जिससे वो 1 या 2 दिन तक लास्ट कर सकता है। इस तरीके से ये प्रोसेसिंग जो मशरूम की प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग प्रकार के जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जैसे कैन पैकेजिंग होती है, मशरूम का अचार होता है, मशरूम का सूप पाउडर, मशरूम का बिस्किट, केक, मशरूम की चिप्स, मशरूम के पापड़, मशरूम के नगेट्स बड़ी जिसे कहा जाता है, मशरूम केचप, मशरूम की कैंडी, मशरूम का मुरब्बा, मशरूम के नूडल्स। अब ये फाइनली ये हमारी ये फाइनल स्लाइड है जिसके ऊपर मैं आपको ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये क्यों रूरल वुमेन के लिए, क्यों ये गांव की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा एक एम्पावरमेंट का क्यों है। इसके सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। सबसे पहले कि ये बहुत सिंपल है, जितना भी कम जगह के अंदर काम करना है, बड़े बड़े खेतों के अंदर खुली धूप में मौसम का सामना करते हुए इसको काम नहीं करना है और इस तरीके से महिलाओं के लिए ये काफी अच्छा एक तरह से वो है। ठीक है, ये मेरी खुद की मशरूम की खेती की जर्नी है जो आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मैंने खुद ने यहाँ पे मशरूम की खेती एकदम जीरो से स्टार्ट करी थी। आज मशरूम कल्टीवेशन का एक राउंड द ईयर कल्टीवेशन का एक प्लांट सेटअप है जो बेतला में उदयपुर में स्थित है और यहाँ पे हम राउंड द ईयर मशरूम की खेती करते हैं। तो काम यहाँ जीरो से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करते करते कि कोई भी किसान या कोई भी माता बहने अगर चाहे तो इसको कवर कर सकते। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अशोक जी, इतने सुंदर आपके प्रेजेंटेशन के। अब मैं निवेदन करूंगा राजेश ओझा जी से आए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और अपना प्रेजेंटेशन भी दें। नमस्ते, मेरा नाम राजेश ओझा। मेरे कंपनी का नाम है जोवाकी एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बचपन से मैंने एक देखा था कि हमारे जो फॉरेस्ट अराउंड रेंज है उसमें सीताफल, जामुन, आंवला इस तरह के जो फॉरेस्ट फ्रूट है ये काफी मात्रा में होता है और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं इनको टोकरों में भर के पहाड़ों से तोड़ते हुए 10 से 20 किलोमीटर दूर गांवों में या रोड किनारे बेचने के लिए जाते हैं और वहाँ ये फ्रूट जो होते हैं जंगल में होने वाले जितने भी सीताफल, जामुन, ये इनकी लाइफ जो होती है वो एक ही दिन होती है और ये फ्रूट या तो बिकेगा, लोग खाएंगे या फिर उनको बाहर फेंकना पड़ता है। और जितने भी आदिवासी भाई बहनों की रोजी रोटी जो है वो इसी जंगल में होने वाले जितने फ्रूट है इनको बेचने से ही इनका जीवन यापन चलता है। ये देख के मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना इन जो एक दिन की दिन फ्रूट्स की लाइफ है और हमारे जो भाई बहन है जो इनका खराब हो रहा है उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने 2017 में हमारी कंपनी का इस आइडिया के बेस पे स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने सीताफल को प्रोसेस करना क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ एक ही दिन थी तो हमने यूनिवर्सिटी से, मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली जिसमें साइंस का डॉक्टर रामावतार कौशिक जी ने मुझे काफी ट्रेनिंग दी, हेल्प किया और उन्होंने बताया कि इस फ्रूट्स का जो एक दिन की सेल्फ लाइफ है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो वो हमने 2017 में स्टार्ट किया था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ।
tribal women. In India, tribal people have been and around the forest for many centuries. Communities heavily depend on these forests for their livelihood. Many types of naturally grown seasonal fruits are available here. Tribal women harvest these fruits and travel 15 to 20 kilometers to sell them on roadsides of nearby villages. Because of the highly perishable nature of these fruits, the bargaining power of women sellers are very less, and they tend to sell at whatever cost they get. Because of lack of knowledge and non-availability of storage technology, almost 60% of fruits get wasted. Also, the tribal community cut these valuable trees for fuel. To address these issues, we developed a value chain of these underutilized fruits. At present, women are involved in plucking, processing of fruits, the whole process of collection, grading, sorting, washing, scooping, processing, packaging, and freezing are completely done by tribal women. We have also developed innovative, germ-based healthy Ayurvedic eatables. These efforts have helped in increasing the shelf life of fruits and have provided a much-needed bargaining power to tribal women. Also, the awareness among the community has improved, which is supporting us to save the fruit trees from cutting. Hence, the project is also supporting environmental conservation. Our mission is to empower the underprivileged tribal women farmers of India by providing them with a sustainable means of livelihood throughout the year. तो जब स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, ट्रेनिंग लिया, वहाँ से स्टार्ट किया। 5 गांवों की 75 वुमेन को जोड़ा था जो कलेक्शन और प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। आज हमारे पास 1800 वुमेन का 24 गांवों में प्रोसेस का हम वर्क कर रहे हैं। साथ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम कुछ एनजीओ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग सपोर्ट और टेक्निकल गाइडेंस भी हम दे रहे हैं। तो इस तरह से जो एक शुरुआत छोटी हुई थी वहां से लेके हम यहाँ तक हम आए हैं। आज हमारा जो टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर प्रोजेक्ट है वो 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर और आगे ये टारगेट है कि हम इस जो ब्रांड बनाया है, जैसे जामुन एक फ्रूट सीजनल फ्रूट है, साल के 1 से 2 महीने बड़ी मुश्किल से मिलता है और वो जामुन फ्रूट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसके पूरे पेट में डायबिटीज से जिससे उसको सीड डायबिटीज के लिए काफी फायदा करता है। उसका फ्रूट में डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम काफी ज्यादा होता है। तो ये फ्रूट जो सीजनल फ्रूट है उसको हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी हेल्प जिसका लिया है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी हमारे साथ में टेक्नोलॉजी में रिसर्च में साथ में है और उसके हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो साल के 1 महीने आने वाले फ्रूट्स को साल भर तक लोगों के लिए कैसे पहुंच जाए। हम लोग अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोडक्ट है और tribalveda.in करके हमने वेबसाइट बनाई और उस पे हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक-एक चीजें जो सीजनल थी उसको हमने बनाया। कस्टर्ड एप्पल के अंदर हम देश में जितने भी बड़े आइसक्रीम ब्रांड हैं उनके पास हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी भी जा रहा है। तो इस तरह से B2B और B2C दोनों सेगमेंट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और आगे इस ट्राइबल वुमेन के जो ब्रांड है उसको हम आगे लेके जाएंगे और एक तरफ ब्रांड आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ इन ट्राइबल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी होगा और उनके रोजगार का जो साधन है वो एक गांव लेवल पे उनको मिलेगा। तो यही हमारा बहुत धन्यवाद ओझा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कमलेंद्र सिंह जी को। कमलेंद्र सिंह केंद्र कोटा है और अपना प्रेजेंटेशन नमस्ते सभी को। 2 दिवसीय सेमिनार की अंतिम प्रेजेंटेशन और इसके जस्ट बाद का खाना तो थोड़ा
जब भी मैं इसको मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ और फॉरेस्ट का काम करता हूँ और विज्ञान की सेमिनार में अपनी बात रख रहा हूँ। तो एक संयोग है, ये हमारी एरिया है, ये जो हमारी कम्युनिटी है जिसके साथ हम काम करते हैं। हमारी शुरुआत 1990 से हुई है। मैं पिछले 33 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ और शुरुआत हमारी तेंदुपत्ता से हुई है। तेंदुपत्ता का पहले भी 2-3 बार जिक्र आया है, इससे बीड़ी बनती है और इसके कलेक्शन रेट को लेकर के हमारा जो मेन काम है वो लोगों को सशक्त करना है। हम किस प्रकार से सब्सिडी दे करके या उनको सहयोग इस तरीके से दे करके काम है, हम पहले उनको सशक्त बनाते हैं, उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि उनकी आय संवर्धन के लिए हम काम करें। और अगर व्यक्ति सशक्त है, समझदार है, तो उसकी आय उसको काम आएगी। अदरवाइज क्या होता है कि आय तो आप देते रहते हैं लेकिन वो उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। तो हमने तेंदुपत्ता से शुरुआत करी 1990 से। उसके बाद में हमने सीताफल पे काम शुरू किया। राजेश जी ने बताया कि इन्होंने इसको खूब आगे ले गए। हम इस काम को करते हैं, मतलब सीताफल का जो रेट कैसे मिले लोगों को, हमारा काम वो है। और राजेश जी ने इसको और आगे बढ़ाया कि उसको प्रोसेस करके ज्यादा रेट दिलाना, तो वो हमसे आगे एक स्टेप निकले हैं, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं शास्त्री सर्कल का फोटो है। वहां पे अगर आप कभी आते जाते उस मंदिर के सामने देखते हैं तो पहली बार जब सीताफल बेचने के लिए हमने 2006 में कम से कम में 10-20 लोगों को वहां से लेकर के आए हम देवला से और यहाँ शास्त्री सर्कल पे बिठाया। तो यहाँ के जो लोग, जो व्यापारी हैं, जो पूंजड़े हैं, उन्होंने उनको वहां से भगा दिया क्योंकि आप वो उनका व्यापार इससे प्रभावित हो सकता था। तो फिर वहाँ के जो ट्रैफिक वाले थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इनसे तो ट्रैफिक जाम होता है। तो फिर मैं जाकर के एसपी साहब से मिला और उनको बताया कि ये 1 महीने के काम है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद में वो 8-10 लोगों को वहाँ बैठने दिया और आज आप देख सकते हो शास्त्री सर्कल से लेकर के पूरे शहर में जगह जगह लोग बैठे हुए हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। फिर हमने रतन जोत पे काम किया, जिसको आप कल की बात कर रहे थे, बायोफ्यूल, जिससे बायोडीजल की बात कर रहे हैं। जब बायोडीजल का खूब बूम था, कलाम साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने आनंद में एक उसका उद्घाटन किया प्लांट का। उसमें हमने यहाँ से 20 टन रतन जोत कोटड़ा से कलेक्शन करके वहां पे हमने भेजा। और अब विज्ञान से हमको ये मदद चाहिए कि ये जो रतन जोत है इसको फोड़ने में काफी मेहनत लगती है, तो क्या हम ऐसा कोई टेक्निक इजाद कर सकते हैं कि इसको फोड़ने में मदद मिले। फिर हमने एक काम शुरू किया हनी, जो कि मेरे उसमें नाम भी लिखा हुआ है कि हनी पे विशेष तौर से है। ये हमने 2005 में शुरू किया और यूएनडीपी की मदद से हमने इस काम को शुरू किया था। और शुरुआत में ये था कि भाई शहर जो लोग लेते हैं वहां पे व्यापारी छोटे छोटे, तो असल में क्या है कि शहर जब आदिवासी जब जंगल से लेकर के आता है तो वो उसी दुकान में बेचता है जो उस कस्बे की फर्स्ट दुकान है, फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि उससे आगे जाने की वो कोशिश नहीं करता। कारण ये है अगर उससे आगे जाएगा तो या तो उसको कोई पुलिस वाला मिल जाएगा या फिर कोई जंगलात वाला मिल जाएगा और वो उसको पकड़ सकता है। तो जो भी रेट मिल गई उस कस्बे में उसको वो उस रेट में बेच देता था। तो हमने इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करी, हमने इसका पूरा पता लगाया कैसे क्या है इसका सिस्टम। तो हमने 2-3 ग्रुप तैयार किए और एक दूसरा इसमें काम किया है कि ये जो शहद जब उतारते हैं तो जलाते हैं, धुआं करते हैं, जला देते हैं। तो अगर एक छत्ता जलता है तो उसमें लगभग 40,000 मक्खियां जलती हैं। तो हमने इसको रोकने के लिए एक कोशिश करी और इसके लिए हमने कुछ मध्य प्रदेश में भी जाकर के हमने एक एक्सपोजर किया, वहां से हम सीख करके आए ट्रेनिंग। तो अब ये लोगों के क्या है कि वो जो शहद का आपको जो छत्ता दिख रहा है उसमें सिर्फ हनी का एक पार्ट है, वो काट के निकाल लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं होती है, मक्खियां नहीं मरती है। और इनको सेफ्टी के लिए जो भी ट्राइबल कलेक्टर्स हैं उनको सेफ्टी के लिए हमने स्टिंग प्रूफ ड्रेस प्रोवाइड करी है। इसके लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मदद करी और 700 लोगों को हमने इसके लिए ट्रेन किया और ये हमारे उसका ट्रेनिंग का कुछ। अब आऊंगा मैं कलेक्शन रेट पे, क्योंकि हमारा काम ये है कि लोगों को उनकी मेहनत पूरी मिले, उन्होंने जो मेहनत करी है उसका दाम पूरा मिले।
तो ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं 2005 से लेकर के 2023 तक, जब और उसके पास में रेट है गवर्नमेंट के, जो भी जनजाति निगम आपका कोऑपरेटिव फेडरेशन निगम प्रतापनगर में है, पहले वही खरीदता था। फिर उसके बाद में 2005 में हमने शुरू किया, तो लगभग 2010 आते आते तो स्थिति ये हो गई कि वो हमको रोकने लगे कि आप कलेक्शन मत करो। तो हमने कहा कि हम कलेक्शन करेंगे और इसके लिए हमारे पास में राइट्स है। तो हमने जो पैसा कानून है उसका उपयोग किया, उसके बायलाज उनको बताए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अलावा कोई इसको हनी कलेक्शन कर नहीं सकता। लेकिन हमने उनसे लड़ाई लड़ी और ये कलेक्शन हमने जारी रखा। एक समय ऐसा आया कि कमिश्नर खुद बुला करके हमको पूछता था इसका हमारी रेट क्या है, फिर हम उसके हिसाब से रेट तय करेंगे। तो ये हमारा एक सफलता है, हम ये कह सकते हैं। और 25-50 रुपए से हमने जो शुरुआत करी, अभी 250 पहुंची है, और सरकार को भी हमने मजबूर किया है कि वो 230 रुपए तक की इस रेट को प्रति किलो के हिसाब से लाने में सफलता मिली है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि शहद कलेक्शन की जो रेट है पूरे भारत में सबसे ज्यादा उदयपुर में हम दे रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे एक मोबाइल वैन भी है। ये जो हमारे को स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद में दी, 15 लाख रुपए उन्होंने इसके लिए सपोर्ट किया, और ये मोबाइल वैन हमको मिली। शिल्प ग्राम में हमको ट्राइफेड की तरफ से, जनजाति विभाग की तरफ से फ्री में स्टॉल मिलती है। और ये रुमा देवी जी हैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे, तो उन्होंने भी हमारे ब्रांड का एक प्रमोशन करने की कोशिश करी है। सेक्टर 5 में हमारा एक आउटलेट है। ये जामुन जो अभी राजेश जी बता रहे थे, तो जामुन का जो सिरका बनाते हैं और जामुन का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इसमें सारी महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं। हमारे समूह से लगभग 15 महिलाएं भी यहाँ आई हुई है, मौजूद है। आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। और ये हमारे जामुन को संग्रहण करने की रेट, जामुन जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो एक फर्स्ट बारिश में तो पकेगा और दूसरी या तीसरी बारिश में खत्म होकर के नाले में बह के चला जाएगा। तो उस जामुन को रोकने के लिए उसको कैसे हम काम में लें, तो उसके लिए हमने सिरका बनाने के लिए एक ट्रेनिंग ली, और इसके लिए हमको मदद मिली थी होम साइंस कॉलेज से, जहाँ से हमने सिरका बनाना सीखा और उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी। अभी हम इस सालाना लगभग 1000 लीटर सिरका और बनाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इससे डायबिटीज खत्म हो जाता है, लेकिन मौखिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिसको भी इंसुलिन चल रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, अगर वो जामुन का सिरका या काम में लेगा तो 6 महीने में उसको उसका प्रभाव नजर आएगा। ये हम विश्वास दिला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ कुछ नहीं। फिर एक प्रोडक्ट हमने काम किया, वो है हर्बल गुलाब। हमारे यहाँ पे खूब पलाश होता है, सेमल होता है, तरह तरह के जो फूल होते हैं जंगल में, उससे हमने हर्बल गुलाब बनाने की शुरुआत करी थी। और इसमें एक विशेषता ये थी कि जो वंचित वर्ग है, जिसके ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं, ये हर्बल गुलाब बनाने का काम हमने डूंगरपुर में शुरू किया। और ये सारे दिव्यांग हैं, सभी विकलांग साथी हैं जो बैठ करके काम कर सकते हैं, उनके लिए हमने इस काम को शुरू किया। और अभी साल में हम लगभग ज्यादा नहीं 2-3 क्विंटल बनाते हैं और आपस में इधर उधर काम में ले लेते हैं। तो आशा है इस कार्यशाला के बाद में कुछ लोग संपर्क करेंगे तो हम और इसको ज्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे। सफेद मूसली सब लोग जानते हैं, सब लोग काम में लेते हैं। इसकी खेती शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से, और इतना बूम आया कि जो 3000 रुपए में सफेद मूसली बिकती थी, वो 300 रुपए में खरीदने वाला कोई नहीं मिला। तो एक हर चीज का एक समय होता है, और उस समय के साथ में हमने भी इस सफेद मूसली की खेती को अभी हमने रोक दिया है, अभी हम नहीं करते हैं। कोई अगर विशेष रूप से कोई कहता है कि हमको इसमें मदद चाहिए तो हम उसकी मदद करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं करते हैं। लेकिन सीधा ये सफेद मूसली के लिए भी हमने लगभग 500 परिवारों के साथ में कोटड़ा और तंदुरपुर और चाड़ों में काम किया है। ये पलाश, ये तो लगभग सब जानते हैं। पलाश का फूल सब जानते हैं। पलाश के फूल की खासियत ये है, इसको हमने एज ए टी, इसको हर्बल चाय के रूप में काम में लिया है। आपको चाय पत्ती नहीं डालनी है, आपको दूध नहीं डालना है, खाली पलाश के 2 पत्ती फूल डालने हैं और शक्कर या गुड़ डाल करके काली चाय बना करके पी सकते हैं। इसका फायदा यह है महिलाओं के लिए, विशेष तौर से अगर आपका मासिक धर्म इधर उधर है, ठीक नहीं है, इसको आप 1-2 महीने तक रेगुलर कीजिए,
उसका आपको समाधान मिलेगा। इसके अलावा उसके पलाश के जो पत्ते हैं उससे हमने पत्तल दोने बनाने का भी काम किया। इसके लिए भी उनको जनजाति विभाग जो केंद्रीय सरकार का है उससे मदद की। आंवला सब जानते हैं, सब काम में लेते हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि इसको जो हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है वो ठीक हो। एक जब सामान्य जगह पे जब आंवला लगा होता है तो आपके घर में लगा है तो आपको सिक्योरिटी है भाई मैं कल तोड़ूंगा परसों तोड़ूंगा, लेकिन जब जंगल में लगा है आपको नहीं पता कल आप जाओगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर से क्या है कि लोग कच्चा तोड़ देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने सीताफल में भी काम किया, तेंदुपत्ता में भी काम किया, आंवले में भी काम किया कि जो इसका सीजन आए और इसको तोड़ने लायक हो जाए तभी आप इसको तोड़ना है। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं और ये आंवला के कुछ प्रोडक्ट भी हमने बनाने का काम सिखाया लोगों को, लेकिन एज सच प्रोडक्ट हम इसको तैयार नहीं कर रहे। महुआ इसके नाम से बदनाम है क्योंकि महुआ क्या काम आता है, लेकिन अगर आप एक किलो महुआ खाते हैं तो आपको 10 किलो किशमिश खाने की जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि एक साल में कम से कम 1 किलो महुआ हर व्यक्ति खाए, किसी भी तरीके से खाए, उसको सेक करके खाए, उसको आटे में गूंद के खाए, कैसे भी खाए। और इसकी जो ताकत है वो आप हमारे पीछे जो महिलाएं बैठी हुई आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या ताकत है। और एक और आपको बताऊंगा, जब हमारे गांव में गाय भैंस और जब बीमार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, उनको सहारे की जरूरत होती है, तब हमको महुआ खिलाया जाता है और महुआ खाने के बाद में वो उठ खड़ी होती है। एक प्रयास हमने हैंडलूम का भी किया था, ये वैसे थोड़ा सा अलग से हटके है। ये जलावर में हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई महिलाओं की जो हैंडलूम का काम भी करती है। देशी बीज जो कल बता रहे थे कि महिलाएं बीज को बचा सकती है और ये सच है, इसके लिए हमने प्रयास किए हैं। इसका एक वर्मी कंपोस्ट का भी एक काम हमने शुरू किया और वो ड्राई लीव्स का भी हमने काम किया। तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिन पे हमने काम किया है, कुछ में सफलता मिली कुछ में असफलता मिली, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकता हूँ कि सफलता मिल गई। हमारा प्रयास जारी है, कार्यक्रम जारी है और अगर ये सारे काम हम साल में एक बार एक सीजन में एक बार करें तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। तो वो हमारे पास में नहीं है, इस वजह से हम छोटे छोटे जगह पे इसको छोटे छोटे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ जो फोटो है हमारे ट्रेनिंग मीटिंग्स और इसमें महिलाओं की भागीदारी देख सकते हैं, काफी महिलाएं पीछे भी बैठी है जो इसमें शामिल है। प्रोडक्ट हमारे जो उपलब्ध है वो कोटागिरी, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, मुंबई, दिल्ली, जोधपुर, उज्जैन और सेक्टर 11, सेक्टर 5, बेतला और फतेहपुरा, यह हमारा प्रोडक्ट उपलब्ध है। आप चाहें तो कभी भी इसका उपयोग करें। और हमारे प्रोडक्ट का जो एक बार शहद या जामुन जो भी उपयोग करेगा उसके बाद में दूसरा शहद नहीं खा सकता। एक बार इसको खा करके आप जरूर देखें, उसके बाद आप मजबूर होंगे कि आप दूसरा शहद नहीं लाएंगे, किसी को देना पड़ेगा। और कुछ चैलेंजेस हैं तो ये तो बात करने का है कि इसका उत्पादन बराबर मिल जाए, इसका वैल्यू एडिशन सही समय पे हो जाए, मार्केटिंग हो जाए। अभी हमारा तो मुख्य कंपटीटर हम तो रामदेव को तो हमको मान नहीं सकते क्योंकि उनका अपना एक है। हम तो साल में लगभग 10 टन शहद कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पूंजी की कमी की वजह से हम 4 टन शहद सालाना इकट्ठा करते हैं और ज्यादातर हमारा शहद साउथ इंडिया में जाता है और वहाँ अच्छी हिस्ट्री की बात है। और कुछ मुद्दे हैं जिसमें यह है कि जो कानून बने हैं आदिवासियों की मदद के लिए उनको दर पे लागू होना चाहिए। और पुलिस और वन विभाग दो विभाग ऐसे हैं जो इन सारे कामों में कुछ न कुछ कहीं न कहीं अड़चन करते रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सहयोग की जरूरत है। और एक ये है कि जो प्लांटेशन जब हम करते हैं सब जगह, तो जैसे हमारे पहले सुनील जी ने भी बताया कि पौधा वो लगाओ जो काम आए, पौधा वो मत लगाओ जो अच्छा लगे। तो वो पौधा लगाना चाहिए। हमारे घर के बाहर में भी अगर हम कुछ लगा रहे तो आंवला लगाओ, आम लगाओ, ऐसा इस तरीके से लगाओ। खाली वो एक शो पीस बना करके पौधे लगाने से कोई मतलब नहीं है। और जो हमारी नर्सरी वगैरह जो होती है, जो प्लांटेशन के जो काम होते हैं, उसमें ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि आजीविका वृद्धि हो। और ये कुछ हमारे ये
प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर भी ले सकते हैं। ये कुछ पब्लिकेशंस हैं, कुछ बुकलेट्स वगैरह हमने बनाई हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। तो आज हमारे प्रेजेंटेशन ये सेशन के समाप्त हो रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। जो सुनील जी ने, डॉक्टर सुनील जी ने बहुत सारी जो माइनर प्रोड्यूस किस तरह को फूड और न्यूट्रिशन का उपयोग किया जा सकता है, उसके ऊपर बड़ा डिटेल दिया अपना प्रेजेंटेशन। अर्चित दसोरा जी ने मशरूम को उगाने की जो इश्यूज हैं उनका बहुत ही डिटेल में बातचीत हमसे की। और राजेश मुजहर जी ने जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं उनके प्रोसेसिंग के बारे में काफी डिटेल हमें बताया। और अभी सिंह जी ने बहुत सारी चीजें रतन के बारे में, सीताफल, जामुन, कदम, गुलाब के बारे में बताया। तो अगर हम इन चीजों में आगे बढ़ते तो डेफिनेटली हम हमारे रूरल और ट्राइबल एरिया की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक या दो छोटे छोटे से पहले एक बार फेलिसिटेट करते हैं स्पीकर्स को। और अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग लंच के लिए केवल आधा घंटे के लिए ब्रेक करेंगे। कोशिश ये करें कि जितना जल्दी आप लंच ले सकें और वापस आए तो टाइम से अपन सेशन स्टार्ट करें। ये तो ये है। दूसरी चीज है टू डिस्ट्रीब्यूट गेस्ट एंड इनवाइटेड स्पीकर्स। इस सब के किए bills have been taken care of, and in the afternoon session we'll see that it is all paid. This is second. Third is in between me and him, so we'll take care. And finally, I hand it over to him for the speech. देखिए, आप ये बिल्कुल अलग सेशन था, अलग प्रकार के स्पीकर्स थे और उनको बहुत प्रोत्साहन की जरूरत है हम लोगों की। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उनको आज हम जब सम्मानित कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सम्मान हमारे लिए नहीं है कि ऐसे लोग हमारे पास आए हैं और वो आपसे कुछ पता और सीख जाते हैं। क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट में बहुत वेल्थ है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने अपने चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स और कंसर्न्स बताए। तो आज विज्ञान के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हो सकता है कि छोटी छोटी बातें जो उनका ज्ञान है वो अगर इनको मिल जाएगा तो ये कुछ और कर पाने में सक्षम होंगे। इसलिए हम तमाम लोग जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को प्रोत्साहित करें, ये जो काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करें। और उसी की कड़ी में मैं दोनों चेयरपर्सन और रिपोर्टर को कहूंगा कि प्लीज आए। सबसे पहले सुनील दुबे को। आपने स्टॉल लगाया होता, इतनी सारी आप चीजें दिखाई। सुनील ने मुझे प्रपोज किया था कि हम खाना जो है वो सब जंगली बनाना चाहते हैं, लेकिन somehow हम मेंटेन नहीं कर पाए। मुझे इस बात की खुशी है कि सुनील मेरा स्टूडेंट है और ही इज एक्सेलिंग मी। मैडम मंजू शर्मा मैडम के हैं। This is a real entrepreneurship which they are doing. You also join us. You are encyclopedia. Very nice. अब मैं अर्चित दसोरा जी से निवेदन करता हूँ। अर्चित दसोरा जो है बाय ट्रेनिंग इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ही हैज टेकन अप एंटरप्राइज क्योंकि आपके फादर एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं। He has encouraged him कि वो इस तरह का काम करें जो प्रोफेसर एलन दसोरा एग्रोनॉमी के प्रोफेसर रिटायर हो गए।
कम पढ़े वाली ज्यादा भाई यहीं पे हियर हाय नहीं आओ नहीं सर आप ही हाँ, और ये दूसरी की बात है कि पैसिफिक से निकले हुए हैं यहीं से एक चीज पे रखा ये हमेशा माता और बहन की बात करती है, भाई की बात उन्होंने एक बार देखी होने वाला लड़के पकड़ गया आगे ध्यान सर इधर वो भी किसी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश जी ओझा को, जो सबसे सफल एंटरप्रेन्योर है। मैं इनकी जाके जगह देख के आया हूँ, कितनी महिलाएं काम कर रही है, कितनी तरीके से, और इन्होंने विज्ञान और अपना ज्ञान दोनों को मिक्स करके काम शुरू किया है। और नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि ये बात ही पास में ये बॉम्बे गए अपना करियर तलाशने के लिए। बॉम्बे में जो एक्सपोजर हुआ, उनको लगा कि मैं मेरा खुद का उद्यम शुरू कर सकता हूँ, और उनको लगा कि यहाँ के फॉरेस्ट में बहुत पोटेंशियल है, और उस बात को उन्होंने छोटे से लेवल पे शुरू किया। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, होम साइंस में, जहाँ पे हम रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर रहे हैं, इसको यूज करते हुए अभी इनके पास इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे ये अभी सीताफल का फल इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन है। ये डायरेक्ट पीएचडी का एडवांस है सर इनको ऑनलाइन देने के लिए 3 लाख केजी फ्रूट को प्रोसेस करके जहाँ पे जामुन के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, और स्पेशली जामुन स्ट्रिप्स जो है, वो मैंने खाई है और इतनी टेस्टी है कि आप मतलब अगर डायबिटीज नहीं हो तो भी आप खाने में नहीं, वो तो कोई भी खा सकता है। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब इतना टेस्टी है। तो हम आपका स्वागत करते हैं। सर पास में आ गए Proud feeling being an Indian. मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमलेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम इस एरिया में किया है। हाँ, कॉमर्स टू साइंस एंड साइंस टू कॉमर्स। हाँ सर। और आपने एक्चुअल में साइंस के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे रानी को बचाया जाए, क्योंकि ज्यादातर ये होता था कि हनी भी कलेक्ट करने के लिए पूरे छत्ते को शायद कर देते थे, उसमें रानी भी मर जाती थी और दूसरी मधुमक्खियां भी चली जाती थी। आपने ट्रेनिंग ली, आपने सीखा कि विज्ञान यहाँ पे क्या काम आ सकता है। आपने एक अलग से इसका पूरा ड्रेस तैयार करवाया ताकि स्टिंगिंग ना हो, और अब जो है टन्स में कलेक्ट करके अलग अलग जगह पे सेंटर्स बनाए, और उनके विमेन जितनी भी कलेक्शन करने में उनके रिश्तेदार जो कलेक्ट कर रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने मुझे बताई कि जो है ऊपर जीजा चढ़ता है और नीचे साला डोरी लेके खड़ा रहता है जब हनी कलेक्शन होता है। तो मैंने आपसे पूछा ऐसा क्यों होता है, तो आपने कहा कि क्या होता है कि जीजा जी को कभी भी गिरने नहीं देगा साला। ट्राइबल की जो रिजल्ट जीजा को ऊपर चढ़ाओ और साला डोरी लेके खड़ा रहता है, उसमें रिस्क नहीं है। और उसका रिस्क इसलिए नहीं है कि वो अपनी बैल का पूरा नहीं चाहता। तो हम आपका स्वागत करते हैं। ये आपकी सुनाई स्टोरी जो मैंने आपसे मैं रियल सेंस में अभी जो सेशन हुआ था वो रियल सेंस में एंटरप्रेन्योरशिप का है, और खास तौर पे जवानी बहनें और माताएं
जो इस सारे एफर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनका हृदय से नासी की तरफ से, पैसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ से स्वागत करते हैं। आप आए सर, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हम सबसे बड़ा आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर पुरोहित साहब का, कि इन्होंने इतना अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी की काम किया। Thank you so much. We break for that.
चर्चा करना चाहते हैं ब्रीफली, उन लोगों को भी मैं कहूँगा, राजेश जी से, कमलेंद्र सिंह जी से, सुनील से, कि फील्ड में रियल एक्सपीरियंसेस के, हालांकि सुनील himself is a scientist, so he has done work using science and technology, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चर्चा है तो हम यहाँ पे निश्चित करेंगे। हम ये पूरा सेशन 15 मिनट में खत्म करना चाहिए ताकि उसके बाद में हम जो वैल्यूटी फंक्शन के लिए अपने कार्यक्रम कर सकें। मैडम मंजू शर्मा भी इनिशिएट दिस सेशन। माइक लीजिए मैडम। नमस्कार, और खास तौर से जो पीछे मेरी महिलाएं सारी फ्रेंड्स बैठी हैं, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ आए हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आप लोगों को, और आप लोगों का इतना इंटरेस्ट है इसमें। आज सुबह से जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं और कल के भी जो लेक्चर्स थे, तो एक चीज उसमें बड़ी सफाई से निकल के आती है कि अगर हमें विमेन एम्पावरमेंट के विषय में बात करना है तो उनके लिए हमें रोजगार की क्या क्या परिस्थितियां हैं जिसमें कि वो उन्हें रोजगार मिल सके, उनकी कुछ इनकम हो सके, आप लोगों को कुछ जैसे पैसे मिल सके, वो बहुत जरूरी है सोचना। कोई विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा जब तक कि उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी। मतलब आप लोगों को तब तक सशक्तता नहीं मिलेगी जब तक कि आपके पास कुछ आमदनी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में यहाँ और यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोगों को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि एक छोटा सा चाहे सेंटर बना लें जिसमें कि विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट दोनों चीज हो, और 3-4 महीने में एक बार इन लोगों की गोष्ठी करवा लें, वहाँ पे इनको बुलाएं, जो जो आ सकता है। उससे आप देखेंगे कि सी चेंज हो जाएगा, एकदम इतना अच्छा उसका असर होगा कि आप उनको, इन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं, इनसे इन्हें क्या फायदा है या है कि नहीं है। और दूसरी, इनकी बहुत सारी समस्याएं जो हम नहीं समझते हैं, यहाँ बैठ के हमको नहीं पता है कि इनकी घर में क्या समस्याएं हैं, पैसे की है या हेल्थ की है, या खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये समस्याएं भी हम लोगों के सामने आ जाएंगी, और अगर हम लोग सच्चे मन से उन समस्याओं का वो करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आमने सामने बैठ के आपकी समस्याओं को समझ लें। और मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग सब जो बैठी हैं यहाँ, आप लोग सिर हिला रही हैं, मतलब आप मेरी बात से सहमत हो रही हैं इस बात से। दूसरी एक बात मैं जो बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक बात को आपको, इन लोगों को सबको मैसेज करना है। में काम करते हैं, वहाँ के जो आपके चीफ हैं, कि विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बगैर विज्ञान के कभी भी किसी हालत में ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। जो दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड कंट्रीज वर्ल्ड के हैं, वहाँ पर आप देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग, मतलब सबसे ऊपर पहुँचा हुआ है इसका ऑर्डर। एजुकेशन के सिस्टम में देखिए, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी इम्पोर्टेंस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज अ मेजर व्हीकल ऑफ द सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर रियल में हमें बदलाव लाना है तो उसमें हमें विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये बात बहुत अच्छी तरह से मन में समझ आएंगे। और जो हमारे फ्रंट लाइन सारे वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, उनसे मैं खास तौर से इस बात की
रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप ऐसे थोड़ा सा ग्रुप लेके किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक आप अपना विचार उनके सामने रखें और उनको ये बात बताएं कि विज्ञान जो है वो बेसिक्स है जो हमें तरक्की की तरफ ले जाएगा, उसके बगैर कोई भी चीज नहीं हो सकती है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई हैं और आप लोग सब गाँव से आई हैं और इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और चूड़ी मैंने देखी, कितनी प्यारी प्यारी पहन के आई हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे लिए जो मुख्य क्या कहूँ मैं इनको वैज्ञानिक को अगर नहीं सकूंगी, जो ये सामने की रो में लोग बैठे हुए हैं, जब भी इनको मौका लगेगा तो ये आप लोगों के पास जाके बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि अच्छी तरह से खाना पीना, अच्छी तरह से सफाई रखना, है ना, और अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब आपके भविष्य के लिए कितना जरूरी है। अगर आप खुशी भविष्य बनाना है और सांस की रोटी खानी है ना, वो भी तो होता है ना, अगर उस सब से बचना है तो आपको यही काम करना चाहिए, देखना पड़ेगा कि आप अपने घर को कितना साफ रखती हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती हैं, और जहाँ तक हो सकता है ये कोशिश करिए आप कि कोई भी पढ़ाई की उम्र कुछ नहीं होती, किसी उम्र में भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर आप मुझसे इस उम्र में भी कहेंगे कि कहीं कोई अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है तो मैं चली जाऊंगी, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आप लोगों को जहाँ जहाँ आपके यहाँ सुविधा है, जैसे स्कूल है या कोई शिक्षा का, आजकल ग्रामीण शिक्षा उद्योग बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ जाके 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करें, समय बिताएं, तो आप देखेंगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है। और हमें अगर थोड़ी सी भी तरक्की करनी है तो हमें ये सब समझना पड़ेगा, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। जहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध हो कि आप जाके और देख सकती हैं और कुछ समझ सकती हैं, उसको कभी मत छोड़िए, जरूर जाइए वहाँ। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग कोशिश करके, अब जैसे यहाँ आप आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि आप लोगों में ये इतनी इच्छा तो हुई ना कि इस तरह की गैदरिंग में आए आप और कुछ अच्छी बातें सुने। और वहाँ हमारे जितने वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सब लोगों ने चेष्टा की कि वो हिंदी में बोल के आपको समझाएं जो चीज आपको ठीक से समझ में आ सके। आखिरी बात में जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और स्त्रियों के खास तौर से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर उनको अपनी खुशी चाहिए, अपने परिवार में खुश रहने के लिए मौका चाहिए, तो उन्हें कुछ न कुछ काम करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी अंग्रेजी में कहते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इंडिपेंडेंस, रादर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब आपके पास कुछ पैसा, चाहे 200 रुपया हो, 400 रुपया हो, हाथ में आपके होना चाहिए। उससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके बच्चे आपको पूछेंगे, आपके पति आपकी इज्जत करेंगे, आपके सास ससुर आपको मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, जो भी आपको सहूलियत लगे, जब भी ग्रामीण महिलाओं से या कॉलेज गर्ल्स से या शहर की स्त्रियों से, तो मेरा उनको एक ये मैसेज हमेशा होता है कि कैसा भी काम हो, कुछ नहीं तो आप जाके कहीं पे गार्डनिंग कर लीजिए, मतलब वो बगीचे का काम कर लीजिए, खेत तो बहुत मतलब जीवन बिताने में मदद। और एक बात जो मुझे बहुत महसूस हुई है हमेशा, और जब भी मैं ग्रामीण महिलाओं से मिलती हूँ, कि आपकी जो स्वास्थ्य है ना, उसके विषय में मुझे बड़ा कभी कभी चिंता होती है कि आप लोगों को ना तो पूरी तरह से उपचार
उपचार होता है आपका कि आप तो बीमार हैं तो अरे ठीक है चलो जाओ भाई खाना बना लो, बीमार हो तो उसमें गर्म पानी पी लेना। इस तरह का जो नजरिया है आदमी लोगों का वो बहुत ही गलत है। तो आप लोगों को इस बात के लिए जम के लड़ना चाहिए कि अगर हम बीमार हैं तो हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार है तो हम डिस्पेंसरी जाएंगे। ये नहीं कि जाओ गर्म पानी पी लो, जाओ सौंफ का पानी उबाल के पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप काम कर सकती हैं, और काम कर सकती हैं तो आपकी आमदनी होगी, और आपकी आमदनी होगी तो आपके परिवार वाले भी आपकी इज्जत करेंगे और आपसे खुश हैं। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पर मेरा आप सब लोगों को, जो महिलाएं आप लोग आके बैठी हुई हैं, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोग हमारी इस संगोष्ठी में आए हैं, और मैं भविष्य में भी आशा करती हूँ डॉक्टर लोहिया कि आप इस तरह से इन लोगों को बुलाते रहेंगे, और कभी कभी जो जब भी मौका लगे, ये नहीं कि इतना हम लोग को इनवाइट करने की जरूरत है, जब कभी भी डॉक्टर कटोच है, मैं हूँ, परमजीत है, डॉक्टर बलराम भार्गव है, जो भी इस शहर में आए मौका देख के इनको पकड़ लीजिए और ऐसी गैदरिंग करवा के एक दो इनकी से बात करवा दीजिए। लेक्चर की भी जरूरत नहीं है। अब अगर डॉक्टर बलराम भार्गव है, उनको बात इन लोगों से करनी है तो वो इनको बताएंगे कि इनको किस तरह की बीमारियां हो सकती है, कैसे ये अपना बचाव कर सकती है, क्या खाना इनको चाहिए, ये सब। तो इस तरह से जो मौका लगे, जिसको मौका लगे, आपको ये जरूर करवा लेना चाहिए, है ना। ये मैं सोचती हूँ कि एक अच्छी चीज हो जाएगी, और एक हम लोगों के इस कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा रिजल्ट आएगा कि 6 महीने बाद हम इन बच्चियों को और इन महिलाओं को दोबारा अपने सामने देखते हैं और इनसे एक बार बात करने का मौका हमें मिलता है। तो आशा है आप लोगों ने मेरी बात को कुछ समझा होगा। और अच्छा, कहिए आपको क्या कहना, जो कहेंगी मैं जवाब खड़े होके बोलो हमारे ये जिला उदयपुर, तहसील कोटरा और राजस्थान के हमारे ये शैम्पू शताब्दी पर जमाने में ये मुख्यमंत्री ने ये टीम पैदल संगठन ये 15 साल तो भी अगर मोबाइल के साथ ये पर्सन का अपडेट हुआ और अपडेट होता उधर ये कोई अपन अरे ये कोई आपने लेता टिग्रोन ने कोई जोंगू ने कोई आपने बड़ा जगह खून अब यार इससे भी ये ये 15 साल तक के महीना कमर्शियल बारे में धंधो की दो रोजगार हमारा साल हो गया तो रोजगार हमारा नहीं हो तो ना बाद में रोजगार साल की दो भी ये जाने जेठा पास में है ये अभी राजू भाई है, राजू आके सीतापुर भेजवा वास्ता के लिए सीतापुर 9 साल में मैं सीतापुर वास्ता है राजू भाई भरे और ये संगठन है पूरा सरकार से तो मदद ये देखो ये हमारे कोई हमारे तो कोई है ही नहीं कि रोजगार हमारे नहीं साथ तो आके क्या बेसिक पॉइंट वाके है ही नहीं कि हम करा तो ये सब करा तो कहते कोई मजदूरी हमारे सोच रोजगार नहीं साथ होगा ऐसे ऐसे हमारी तकलीफ आ रही है और मैं कई तरह का चाहिए थोड़ी सूचना दे रही हूँ और दूसरी जगह बोल जो इन्होंने ऐसा बताया है कि सबसे पहले हम 10 साल तक या 15 साल तक जो शहर के संगठन में काम किया था इन्होंने महिला ने और उसके बाद में अभी जो बोल रहे हैं तो हमारे श्रीमान जी राजेश जी बैठे हुए हैं इनके साथ अभी सीतापुर के साथ में काम कर रहे हैं तो पहले तो हमारे पास में जो शहर का जो काम चल रहा था मतलब उनके शहर के बारे में काम कर रहे थे मतलब रोजगार मिला था अभी तो कह रहे हैं कि जो सीतापुर के बारे में है तो उसके बाद में बोल रहे हैं कि सरकारी जो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम आगे क्या करें इसके बारे में सोच रहे हैं बोल रहे हैं डॉक्टर लोहिया आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने जो कहा है इनको इस बारे में थोड़ी जानकारी जो अच्छी तरह से हिंदी में समझा सके करवा दीजिए कुछ अरेंज अगर संभव है तो अच्छा रहेगा। ये लोग भी खुश होंगे कि यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आने का कुछ फायदा हुआ।
कंसल्टेशन प्रोफेसर पुरोहित एंड अरे डॉक्टर पुरोहित आप जरूर करवा कोठारी सकते साहब के हैं। साथ में। हाँ हाँ, तो ऐसे जरूर। तो आप लोगों ने जो कहा है वो हमारे जो यहाँ के विशिष्ट अधिकारीगण हैं वो लोग जरूर आपकी बात के ऊपर कुछ ध्यान देकर और कुछ करवाएंगे। मैं तो नहीं यहाँ रहती हूँ, मैं तो बाहर दिल्ली से आई हूँ और हमारे ये सब लोग भी, पर फिर भी हम इस बात को जो है वो अपने मन में रखेंगे और 4-6 महीने बाद हम डिस्कस भी कर सकते हैं, इन लोगों से चर्चा भी कर सकते हैं कि कुछ आप लोगों के ऊपर कुछ फायदा आप लोगों को हुआ कि नहीं हुआ। मेरा खास जो उद्देश्य है आप लोगों से बात करने का वो यही है कि जो भी 2 सेंटेंस भी 2 वाक्य भी जो मैंने कहे उससे अगर आपको कुछ फायदा हुआ है तो बहुत अच्छा है बस। और मैं आप लोगों का एक बार हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ इतनी अच्छी मात्रा में आए और हम लोगों की बात सुन रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ भी उस पर थोड़ा सा अमल कर सकें। धन्यवाद बहुत। नमस्कार सभी को, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके और स्पेशली आप लोगों को देख के आमने सामने कि आप लोग कितने में इंटरेस्ट लेके आए हैं यहाँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जहाँ आप सारे परिवार का ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आप किसी और का ध्यान नहीं रख सकते, है ना। तो अपने लिए आपको 2 चीज़ें मेजर है, एक कैल्शियम एक आयरन, यही सब जने बोल रहे हैं। कैल्शियम तो आपको नॉनवेज से भी मिलता है, दूध में, दही में, इन चीज़ों में मिलता है और भी बड़ी चीज़ें सब गुप्ता अहमदाबाद के हैं। वो कहते हैं मैं महिलाओं को कहता हूँ कि घर में स्टील के बर्तन की बजाय लोहे की कड़छी, एक लोहे की कड़छी, तो जब भी दाल मिलाएं कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई रखें और उस कढ़ाई में बनाएं शुद्ध तेल में, सरसों के तेल में, वो बेस्ट तेल है। वो कहते हैं बाकी कोई नहीं। और जब आप लोहे की कड़छी भी यूज़ करेंगे ना तो उससे लोहा उसके अंदर खाने में चला जाता है और उससे आपकी सेहत की फर्क पड़ता है, आपको गोलियाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई ऐसे छोटी छोटे जो नहीं है कि ये आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लंच से पहले, लंच के बाद हम आए, एक महिला अपने से ही कोई अपने स्मार्टफोन पे किसी से वीडियो चालू कर रही थी। तो मैंने कहा मैम ये है हमारे स्टेट की टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स आप में इंफॉर्मेशन और से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की वो जिज्ञासा है। तो जब आप दूसरों के साथ चैट करते हैं, आपको फ़ोन यूज़ करना आता है, ये बहुत बड़ी स्किल है। ज़रूरी नहीं है हर काम के लिए आपको डिग्री चाहिए हो या सर्टिफिकेट चाहिए, आप अपने से सीखते हैं, ऐसे सीखे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सही नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें। और अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो आपको उसमें सिर्फ मतलब डांस शो और क्रिकेट और ये सब देखने के बजाय आप उससे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आजकल जिसको स्मार्टफोन यूज़ करना आता है ना, तो उसके हाथ में मतलब ऐसा वो है कि वो जो आपको जिस विषय पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वर्ड डालिए और सर्च करिए और आपको ढेरों सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन बड़े बड़े लोगों की जो मेन करने वाले, जैसे हम कहते हैं कि हम तो चांद पे चले गए, जी हम वहाँ भी चले गए, लेकिन दूसरी तरफ गाँव वाला कहता है जैसे मेरा क्या हुआ, मुझे क्या बना, उसे इतना तो पता है कि हम चांद पे गए हैं, इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है कि आप फोन लेते हैं। अगर आप फोन को सही से यूज करें, फोन आपके हाथ में जैसे अलादीन का चिराग है, आपको पता होना चाहिए इसको कहाँ मलना है, कितना मलना है और क्या वर्ड डालना है कि उसको ढूंढनी है। जिस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो वर्ड लिखिए और ढूंढिए। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज बिफोर मैं इससे पहले कि दूसरों को भी कि आप में कई महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया, जैसे इधर बैठी हुई हैं बड़ी सारी लेडीज हैं, जेंट्स हैं। तो महिलाएं तो ये सबसे आगे बैठी है,
एक वो हरी चुन्नी में बैठी हुई है ना। तो कई बार क्या होता है, ये तो बहुत ही अच्छा एक है जो इनसे कम किया है, तो उनको अपना देखिए कि उन्होंने कैसे किया। आप देख के उनके बारे में जितनी जागरूकता लेंगे, आपको भी पता चलेगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपके फ़ोन पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि किन महिलाओं ने क्या क्या किया, और ज़रूरी नहीं महिलाएं हों, आप पुरुषों से भी सीख सकते हैं। जो भी सक्सेसफुल हुआ है आप उससे सीखिए, कहीं का भी हो। अगर वो ऐसे कर सकता है तो अगर दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बस इतना ही, फिर सब काम हो सकते हैं। आपको इतना और हौसला रखना चाहिए। थैंक यू। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है कि यहाँ पे आप लोग आए हैं, जैसे पर मैं एक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है? बैंक के खाता है सबके पास, सबके पास है। मोदी जी ने सबका कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें जमा करती होगी, करती है, करती है ना? आपके हस्बैंड उसमें से निकाल के ले तो नहीं जाते हैं? ले जाते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर होने का सबसे पहला ये है कि आप अपना जो इनकम है, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, ये तो बहुत अच्छी तरह से मुझे मालूम है कि महिलाएं ज्यादा काम करती है और आपके लेवल में रोजगार ज्यादा करती है, और आपके फैमिली के जितने भी मर्द हैं, पति हो, ससुर जी हो, पता नहीं बेटे भी हो, तो वो निकाल के लेते हैं और अपने ऊपर खर्चा करते हैं। तो ये आपको और शक्ति दिखानी चाहिए कि अपने लिए वो भी रोजगार करें ना, वो भी अपना खाता खोले, वो भी अपना जमाए, ऐसे बोलो ताकि आपके पास भी संचय हो और आप अपने पैर में, जो सही मायने में अपने पैर में खड़े हो। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, यू नो। आई मीन इन जनरल आई हैव आस्क्ड पीपल, व्हेन यू अर्न, व्हेन अ वुमन अर्न्स, वेयर डज दैट मनी गो? वो पैसे कहाँ जाते हैं जो घर में जाते हैं? बट आई एम जस्ट आस्किंग कि उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए कि ये इससे तो मेरा पूरा हक है, बाकी मेरे भी हक है, पर इसमें तो डेफिनेटली मतलब है कि अपना पैसा अपने घर पे लगाइए, पीने पे लगाइए, बच्चों को लगाइए, हस्बैंड को भी दे सकते हैं, लेकिन पीने के लिए गलत काम के लिए मैं ये भी गलत काम के लिए उसके लिए। और ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ, ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जैसा काम करते हैं, सीधा फल आपने कहा, वो तो 2-3 महीने का होगा, जो फल है वो भी 2-3 महीने का होगा। तो आप अपने राजेश जी से पूछिए कि और क्या काम है जो आप पूरे साल तक कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी काम आजकल धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो उस अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार खुद अपने काम को बंद करके और दूसरों को ऐसे ही पार्ट टाइम, जिसको कहते हैं कि थोड़े से वक्त के लिए देते हैं, और परमानेंट जॉब अभी कम ही हो गए। तो अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए और अपनी व्यवसाय, अपना इनकम करे, तो वो सबसे बेहतर है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में आई हैं आज, उनका मैं नमन करता हूँ। आप लोग को धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर आया और आपका बहुत सारा काम उन्होंने सुना, आप उतना अच्छा काम करेंगे। कुछ 2-3 बातें मैं कहूँगा, काफी लोग यहाँ पर बोल चुके हैं। एक तो ये कि आपने बोला कि सरकारी नौकरी हमको मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग एक जैसे राजेश के साथ मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा बना सकते हैं
कोऑपरेटिव जैसा बना सकते हैं, तो आप लोग इतना पैसा कमाएंगे सरकारी नौकरी से भी ज्यादा होगा और आप अपने पैरों पर खड़े अपने टाइम में आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 9 से 5 काम करिए, आप जब चाहेंगे तब काम करेंगे। उससे आपकी आमदनी बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आप बच्चों की देखभाल घर पे रह के कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, अगर आपको सुनो, लिज्जत पापड़ एक पहले आता था पापड़, ठीक है, बहुत छोटे से शुरुआत हुई थी, पढ़ते 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 पूरे हिंदुस्तान में वो इसी तरह महिलाओं ने शुरू किया था, महिलाओं के जरिए बढ़ता चला गया। तो आप लोग के पास इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर राजस्थान में जो इस प्रकार का आपके मदद करने को तैयार है। हमारे दुबे जी ने आज बहुत अच्छा, दुबे जी आप ही तारीफ कर रहा हूँ, आज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया था जिसमें इतना अच्छा खान पान बताया, जो गाँव की महिलाएं जंगल से छोटा छोटा ला के एक अच्छा खाने की सामग्री तैयार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आप राजेश जी और लोग इस प्रकार के लोग मिले तो जो बाकी समय को 7-8 महीने में अगर फल नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से अगर ये लोग आप इन लोग को अपने साथ जोड़ेंगे तो इनको और आमदनी बढ़ेगी। जहाँ तक शोभना जी ने कहा कि पति को पैसा न दे या आप लोग का पैसा कहाँ जाता है, तो पता लग रहा है पैसा कहाँ जाता है। मैडम ने पहले बोला बहुत अच्छी साड़ियां पहने, बहुत अच्छी चूड़ी पहने, आपको अच्छी बात है, अपने ऊपर जरूर खर्च करिए, अपनी सेहत पे खर्च करिए, बच्चों की सेहत पे खर्च करिए, उनको पढ़ाइए जरूर। मैं समझता हूँ जितना आप लोग पढ़ते जाएंगे या आपके बच्चे पढ़ेंगे उतना आपकी जो समृद्धि बढ़ेगी, आपकी स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और दुबे जी से एक निवेदन जरूर मैं करूंगा कि आपने जितने भी फोटो दिखाई सब में चूल्हे में खाना बन रहा था और बच्चे बगल में बैठे, तो आपसे निवेदन से ये, क्योंकि पटोल साहब से वहाँ डिस्कशन हो रहा था कि आप या तो अपना गैस सिलेंडर साथ में ले जाया करें, वो बेहतर होगा। बच्चों को धुएं से बचाएं, आप महिलाओं से भी कह रहा हूँ, अपने आप को धुएं से बचाएं, बच्चों को धुएं से बचाएं। अगर आपको खाना पकाना हो ये चूल्हे में अगर, तो आप बाहर, घर के बाहर बनाए जहाँ बच्चे ना हो और धुएं में जो धुआं है खुली हवा में निकल जाए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम लोग आज बहुत लाभान्वित है आपके आने से, और आपका द्वारा किया जा रहा है जो काम है, चाहे वो शहद का हो, चाहे सीताफल का हो, चाहे जो मोरिंगा का हो, इतनी चीजें इन्होंने बताई, जामुन का काम है, तो हमें बहुत अच्छा लगा इस तरह का काम यहाँ हो रहा है। और शायद मैं इतनी विस्तार रूप से मैं पहली बार इस तरह की चर्चा में शामिल हुआ हूँ, तो मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। और जो हमारे पैसिफिक यूनिवर्सिटी से लोहिया जी हैं, पुरोहित जी हैं, आपका मैं बहुत आभारी हूँ, नमन करता हूँ आपको इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो जैसे आपने बताया कि बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक में ही पैसा आए, तो उस टाइम में इनको ऐसा था कि हर 2 दिन में मतलब पैसे दे दो, ट्रस्ट भी कम था, नया नया स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे 1 साल तक यही लगा कि हम लोग भी कैश नहीं देना था, क्योंकि सिस्टम है उस हिसाब से। उसके बाद 2018 से हमने धीरे धीरे अकाउंट में इनको ट्रांसफर करना स्टार्ट किया कि मैं भी यही बोलता था कि मुझे आगे से पैसा नहीं आता है, बैंक में ही आता है, कैश नहीं दे सकता। तो इस तरह से करके आज की तारीख में हम पूरा ट्रांजैक्शन लगभग 80 लाख रुपीस का हमने फूड खरीदा था पिछले साल की बात, और पूरा ट्रांजैक्शन बैंक के अकाउंट में और हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। और लगभग 22 लाख रुपीस का बिजनेस बना हुआ था, तो वो भी हमने टोटल हर एक के खाते में अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। कंप्लीट हमारा ट्रांजैक्शन 99% अभी बैंक में होता है। और ये लोग भी जो एक दिन में मांग रहे थे, अभी ये लोग बोलते हैं कि हमें आराम से पूरा जब इकट्ठा हो जाएगा तभी दो, आराम से दो, क्योंकि इनके भी सेविंग हो जाता है, उनको भी एक सेविंग करने का तो एक ये चेंजेस हुआ। दूसरा आपको बता रहे थे कि हम देखो हमारा मॉडल यही है कि हम सीजनल फ्रूट्स को प्रोसेस करते हैं। ऐसे तो 12 महीने मिलने वाले भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन उसका ऑलरेडी हो रहा है। तो जो सीजनल है इसकी सेल्फ लाइफ 1 डे है, और इनके लिए प्रॉब्लम है कि 20 किलोमीटर दूर गांव में बेचने जाना है। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए सीताफल से हमने स्टार्ट किया था। उस गैप को जैसे 2 महीना सीताफल हुआ, फिर जामुन में किया, कुछ आंवला में किया। इनके वहाँ पे किकोड़ा होता है, जो आयरन की आप बात कर रहे हैं, किकोड़ा के अंदर इतना आयरन है कि मतलब 15 दिन का हो गया था, उसका आयरन का 12 मिनट कभी नहीं हुआ, इतना वेजिटेबल के अंदर है। तो उसके भी हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा एक आता है कि मार्केटिंग हम कोशिश कर रहे हैं,
जितना हमारा मार्केट बढ़ेगा उतना साल पर काम तो चलता रहेगा। तो ये भी एक अभी तो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं पूछूं आपसे, ये इनकी से पूछना है कि आप बैंक का कर सकते हैं अपने आप या अपने बच्चे के पास जाना पड़ता है? इनके वहाँ पे ई मित्र कर सकते हैं ना अपने आप? थोड़ा सा बताना चाहती मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, पर थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम का और थोड़ा सा ये पैसे के लेन देन के बारे में मैं जरूर कुछ जानती हूँ, राजस्थान स्पेसिफिक जो है। अब आप लोगों का जब ये हुआ कि जैसे आपको मैडम बता रही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आपके यहाँ आशा तो होंगी, आपको मिलने आती हैं, आप जाते हो आशा के पास? नहीं, तो वही मैं पूछ रही हूँ, आपके पास अगर आते हैं उनके पास ये सब क्या है वो बता सकती हैं आप? नहीं, आंगनबाड़ी तो उसके ऊपर है, पहले आशा और आशा सहयोगिनी, सहयोगिनियां तो आती है ना आपके पास? हमारे नहीं आवे, आशा के नहीं आवे नहीं, तो हर 1,000 जहाँ पर भी प्रतिनिधि रहते हैं वहाँ पर एक आशा होती है। आप पता करो आपकी सहयोगिनी कौन सी है, आपकी पीएचसी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको जो ये मालूम पड़ेगा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, और सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का भी, उनका टीकाकरण हुआ कि नहीं, उनको सही खुराक मिल रही कि नहीं, मतलब उसी सहयोगिनी आपको हेल्प करेगी। आपके तो सरपंच भी कई औरतें हैं, आपकी सहयोगिनियां सारी ही औरतें हैं, आपकी आशा सारी ही औरतें हैं, उसी तरह एएनएम भी सारे ही औरतें हैं। तो आप उनसे अपनी वार्तालाप कर सकते हो और अपनी भाषा में कर सकते हो, इसीलिए आपको उनके संपर्क में रहना चाहिए, उससे आपको और भी पता चलेगा। जैसे सर बोल रहे थे, आप लोगों के ये वाले फल वगैरह इकट्ठा करना, बेचना, उसके बदले में थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाना, ये बिल्कुल बहुत सही है, ये जरूरत, इसमें कोई वो चीज नहीं है। पर इसी तरह से स्वास्थ्य का भी, पहले आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास भामाशाह कार्ड है? किसके पास है? और वो सब औरतों के लिए है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली औरत है, आदमी नहीं है। पैसा नहीं जाएगा आदमी को, सिर्फ औरत को जाएगा, और उस फैमिली के हेल्थ की जिम्मेवारी उसी औरत और वो भामाशाह कार्ड होल्डर, वो दिखाओगे आपकी सब चुन जाएगी। आयरन फॉलिक एसिड चाहिए, बच्चा बीमार हो गया, बुखार हो गया, या आपको कोई ऑपरेशन कराना है, कोई चीज हो गई, कोई पथरी हो गई, कोई रसोली हो गई, कुछ है, आप सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, आपकी नेक्स्ट सेंटर में जाने के लिए भी उसमें पैसा निमित्त है, तो उसको उपयोग करो। आप समझो कि इस भामाशाह कार्ड का क्या उपयोग है, और ये आपको सब आशा और उसकी सहयोगी सब बता सकते। जिसके पास नहीं है वो अपनी संजीवनी कार्ड बनाए। तो वही मैं आपको बता दूं कि ये वाली चीज आपके लिए है, और ये सरकार ने खोली है आपके लिए। कोई आए सरकार, कोई जाए, पर सरकार सब ग्रामीणों का फायदा करना चाहती है, इसीलिए ये कार्ड दिए। आप वो कार्ड लेके जाइए, अपने सरपंच के पास जाइए, अपने वार्ड पंच के पास जाइए, अपने किसी भी पंचायत में चले जाइए। अब तो औरतें भी सरपंच है, जाके बोलो हमारे पास ये कार्ड है, हमें ये सुविधा चाहिए, मिलेगी आप। उसके ऊपर आपको मिलेगी, पर आपको मालूम होना चाहिए कहाँ जाना। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आपको वो किधर जाना है। और ये बैंक अकाउंट तो आप सबके पास है। भामाशाह का तो जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ और हेड ऑफ द फैमिली औरत, तो इसीलिए वो तो आपको ही करना है। तो अपना ध्यान रखो, और सिर्फ अपना नहीं, अपना कुपोषण मत होने दो।
जो आप जैसे औरतों और सबके साथ में होता है। आप सोचते ये वाला पैसा भी बचा ले या उसमें डाल दे, चलो इसे, पर अपना पोषण और अपने परिवार का पोषण आपके हाथ में। कोई आदमी नहीं आएगा बोलने को, ये मैं पक्का बोल देती हूँ आपको। आपको अपना ध्यान रखना, और सरकार इसलिए आपके बैंक अकाउंट को, इसलिए कार्ड आपके नाम बनाती है ताकि आप देख सको। आप तो नहीं देख सकते कि बच्चा बिलक रहा है और कोई कुछ उसको दूध नहीं दे रहा या उसे कोई खाना नहीं दे रहा। आप तो नहीं, आप तो अपना भी पेट काट के उसको खिलाते। तो ये नहीं करो, ये अपना भी को पोषण मत करो और बच्चे का भी नहीं। ये इसीलिए। दूसरी बात, आप जैसे आशा और उनके पास जाएंगे, सरकार की नीतियां हैं वो बताएगी कि आपके पास 5 साल से 10 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई मुफ्त में होगी गवर्नमेंट स्कूल, उनको मिड डे मील मिलेगा, उनको आहार मिलेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। हम जब जाते हैं गाँव में वो बोलते हैं हमें तो पता नहीं। वो बुजुर्ग महिला होती है, वो सुबह से अपने सारी बकरियां भेड़ सारे गाय लेके चली जाती पहाड़ पे उनको खिलाने। उसे पता ही नहीं है कि उसका आंख में नहीं दिखाई दे रहा, उसके मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन कराना है, वो ठीक से देखने लगेगी। जरूरी नहीं है चश्मा पहने जैसे मैं पहनी, ऑपरेशन के बाद जरूरी नहीं है, सिर्फ कुछ दिन के लिए वो, ताकि आपका आई का प्रोटेक्शन रहे, ताकि उसको रख सके। पर उसका ऑपरेशन तो सरकार लेगी, उसका सब कुछ हो सकता है। तो आपके बुजुर्गों का, आपका, आपके बच्चों का, इन सब की देखभाल सरकार के पास है, पर आपको उन योजनाओं का पता नहीं। इसलिए मैं आशा और आशा सहयोगिनी का नाम ले रही हूँ। यहाँ की नहीं कर रही, दूसरी कर देगी, दूसरी नहीं कर रही वो पंच कर देगा, वो वार्ड का पंच कर देगा, कोई तो कर देगा। इतने सारे लोग हैं आपके, तो चुपचाप हाथ जोड़ के मत बैठो, खुद स्वावलंबी बनो, तभी आपको दूसरा भी आपको और पैसा देगा। आप स्वावलंबी नहीं बनोगे, आप डरते रहोगे, आपके अंदर ये नहीं होगा कि मैं कैसे मांगू। अरे आपका हक है, मांगिए, पता करिए। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीज आप कर सकते हैं। ये लोग जरूर आपकी सहायता कर रहे हैं, ये लोग सब भी आपकी सहायता कर रहे हैं, पर सबसे पहले सहायता आप करोगे। आपका पानी नहीं मिल रहा है, आप बोलिए ना सरपंच को कि यहाँ नलके का इंतजाम करो। सरकार की इतनी योजना है, क्यों नहीं आ रहा यहाँ पानी? हम नहीं देंगे तुम्हें वोट, तुम पहले हमें पानी। हमारे पास ये नहीं है, अभी तो आ गए आपके लोग। आप ये बोलिए कि हमारे पास, हम लकड़ी से क्यों बनाए खाना, हमें एक गैस का सिलेंडर दिलाओ, दिलाएंगे। सरकार की नीति है, और सिर्फ आपके राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की। एक नहीं रहेगा, दूसरा देगा, पर लाभान्वित तो पूरी प्रजा होगी ना। आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या नीति है, क्या क्या मिल सकता है, और आप उसकी डिमांड करें। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे नहीं मिलेगा। बच्चा भी जब तक रोता नहीं है, आप उसे दूध नहीं पिला, वो रोता है तब जाके आप दूध पिला। इसीलिए खड़े हो, अपने खुद के हक ढूंढो, खुद खड़े हो। अब बहुत सारी नीति है, जरूरी नहीं मैं आपको सब बता सकूं, पर ये लोग आपकी सहायता कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर वो करिए कि हम कर सकते, कोई ना कोई चीज तो होगी। जाइए, पूछिए, करिए, और फिर इस तरह से आगे तरक्की करिए। भगवान सबका, जैसे मनरेगा भी, वो कोई पूरे 365 दिन के तो पैसे नहीं देता है ना, 180 दिन के देता है ना। तो ये लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे ही हो रहा है कि आजकल वो गया जमाना कि आप छुट्टी ले लो तो भी आपके घर में पैसे, ऐसा नहीं है सरकार। अब तो हम खुद स्वावलंबी हो गए, और हमें पता है हमें क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, तो हम वो डिमांड करें। ये मेरी आपसे अनुरोध है, और मैं यही जिज्ञासा आप सब में पैदा करूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो महिलाएं जो आई हुई है वो भी इतनी जागरूक है कि शायद हमारे शहर की महिलाएं किसी स्कीम के बारे में नहीं जानती होगी, उससे ज्यादा स्कीम के बारे में उनको जानकारी है। वो
शहर की महिलाएं कभी पार्षद से नहीं मिली होंगी, इसमें से कम 10 महिलाएं ऐसी है जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगले चुनाव में उसके क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं और क्या हमारी समस्या है वो वहां पे देखी आएगी। एक बात, एक आपने जो कहा सरकारी, ये सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि अभी फसल ज्यादा बारिश होने से फसल खराब हो गई है और नरेगा का काम भी अभी नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ काम चालू है, सहायता नहीं चाहिए। और नरेगा में जब ये काम करते हैं तो सिर्फ इनको 160 रुपए पर डे मिलते हैं और उसमें भी वो इतने खुश हैं कि वो 2 दिन निकाल करके यहाँ आकर के बैठे हैं। धन्यवाद। बात मैं एक मंत्री करें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। जो सीताफल हम तोड़ते हैं, आप सभी जानते हो कि जब तोड़े तो उसकी आंख खुल जाए, आपको सब पता है आंख क्या होती है ना, उससे पहले तोड़े तो काला पड़ के खराब हो जाता है। जो हमारी रतन जोत है उसको हरा जो फल हो, हरे को मत तोड़ो, जब वो पीला हो जाए तब उसको तोड़ो। कीकोड़ा आप जो तोड़ते हो, 2001 में देवला में रोजाना 6000 किलो कीकोड़ा पैदा होता था, अब 2000 हो रहा है। तो कीकोड़ा कम क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि सारा कीकोड़ा तोड़ देते हो, उसमें हर बेल में 5 कीकोड़े छोड़ो ताकि वहां बीज गिरेगा तो अगले साल नया कीकोड़ा भी तो आना चाहिए। सारा नहीं तोड़ना है, 2-4 छोड़ दो। एक और चीज कि जो अपना पलाश का फूल आता है, खाकरे का फूल आता है, उस खाकरे के फूल को नीचे गिर जाए उसको इकट्ठा कर लो, ये दिखता है। जालौर में सुंदर माता में 10 दुकान सिर्फ यही काम को चीज उस फूल को बेचती हैं। पेड़ के ऊपर से नहीं तोड़ना है, पेड़ के ऊपर से डाली काट के तोड़ोगे तो फिर फलियां नहीं लगेंगी, फलियां नहीं लगेंगी तो नया खाकरा नहीं उगेगा। फूल को खिल जाने तो नीचे फूल गिर जाए, उसको इकट्ठा करना है ताकि फलियां भी आ जाए और नए पेड़ भी उगते रहें। जो अदरक होते हैं, उस अदरक को कोई एनजीओ अगर उनकी मदद करे तो सन ड्रायर लगा दें, अदरक को, फालतू अदरक को सुखा के सौंठ बनाओ, सौंठ को सारे साल में जब मौका मिले जब भेजो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को हम लोगों से कुछ प्रश्न पूछने हैं, कोई सवाल पूछना है जिसका आप जवाब जानना चाहती हैं? जो आप महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं आगे, कुछ पूछना है? आप पीछे वाली भी पूछ सकती हैं। आप लोग अगर झिझक के हमसे पूछ सकते हैं। मारो नाम ने पाई ना रावल तुली का कहता है और बेंसा तुमकावास जिला उदयपुर तहसील कोटरा और मैं आंगनबाड़ी है, कोई ने आशा है कोई यहाँ पे है कोई नहीं है, हमारे नोनी भी है टाइम का कोई है बे धरो नहीं हो के हम गांव में नेता देकर कहती नहीं लाने उन्हें नौकरी दा करने कोई नहीं दूसरा को मेरे है ते मो क्या ते हम क्या हमें ये आंगनबाड़ी ले जाए ते बारे में क्या के थारबल वाला कोई सेल का नहीं है, मैं सरकार से नौकरी वाला मुझे ना मिला कोई नहीं, ठीक ऐसे बोलता है। बाद ये हमारा एक साहिबा नेपाल या कहता कि बेटे ना करवाली 100 रुपए डबल की कितने लोग देते हैं, ठीक है हमारा कोई ना बोलो से मतलब बोला पड़ते में कोई हमारे अधिकार नहीं है बोला यू जरा आप बताएंगे कि क्या कहा ये से बता रहे हैं जो आंगनबाड़ी वाले हैं, जो जितने भी समूह चलाते हैं वो कोई भी जवाब पूछते हैं तो उनको जवाब नहीं देते हैं। अगर ये ज्यादा बोल देते हैं तो कोई कुछ काम होता है जिनका खुद बंद कर लेते हैं, ये जो पूछ रहे हैं। तो समूह वाले होते हैं एएनएम से बात करो,
लेडी हेल्थ विजिटर से बात कर। नहीं, सबसे बात की है। नहीं मैडम, मैंने भी बातचीत की है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी ग्रास हूँ, तो हमने कई बार एमएलए कई तक एसडीएम तक पहुंचा इस बातों को, लेकिन कोई मानने को नहीं तैयार नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, लेकिन रिपोर्ट में लाया नहीं हूँ अभी तक। एक मिनट देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने कहा हमसे, ये आपकी स्थानीय समस्या है आपके क्षेत्र की, इसका न मैं कोई निवारण नहीं कर सकता है ना। इसको जो आपके वहाँ के मुखिया हैं गाँव के, उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि हमारी ये समस्या है। मुखिया इसीलिए होता है, सरपंच क्यों होता है कि उन्हें आपकी समस्या पता चलनी चाहिए, फिर वो उस समस्या को लेकर शहर में आए या किसके पास भी जाए, या कोई पॉलिटिशियन राजनीतिक के पास जाए, मिनिस्टर के पास जाए, पर समस्या को आपको उन्हें समझाना है। मुझे बताने से हम झूठ कहेंगे कि हम आपको कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए। हमने आपको सुझाव दे दिए, पर आपको अपने स्थानीय लोगों के पास, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का जो मुखिया है, जो सरपंच है, उनके पास जाना चाहिए। बहुत दफा क्या होता है कि गांव वाले, खासतौर से महिलाएं, वहाँ तक पहुँचती ही नहीं, जाती नहीं है। तो आप यही कोशिश करिए कि आप लोग उनके पास जाके उनको अपनी समझ, और अगर मान लीजिए ऐसा है कि उन्होंने आपको नई समस्या में कर दिया, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। फिर गाँव वाले मिलके उनके बारे में कहेंगे कि भाई वो ये हमारी सुनते नहीं है, तो फिर सरकार देखेगी कि क्या करना है ना। एक तरीका होता है हर काम करने का, ये नहीं कि यहाँ से उनके यहाँ आ गए, यहाँ से उनके वहाँ चले गए। एक एक कदम कदम उनके कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये करना है आपको। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, आप लोग बैठिए। बच्चों से बोलना चाहते हैं, आप पीछे जो हमारी इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बच्चों आप लोगों को कुछ कहना है किसी एक को भी? श्योर? आप लोग सब खुश हैं बिल्कुल? वेरी नाइस। अच्छा, खाना अच्छा मिला। ठीक है, तो फिर करते हैं सेशन को। तो हम लोगों ने आप लोगों से, महिलाओं से बात करने की कोशिश की, आपको कुछ सुझाव दिए हैं, पर ये अंत नहीं है आपकी समस्या का, या आपके जीवन में क्या करना है आगे। इसको अभी बहुत चीजें आपको करनी होगी, तो आप धीरे धीरे ये एक संदेशा इस ग्रुप की जो बात हुई है उसे ले लीजिए कि आपको जब कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो घर में चुप करके नहीं बैठना है। जो आपके गांव का मुखिया है या मुखिया की पत्नी है, अगर मुखिया के पास भी जाना चाहते, वहां जाके आप बताइए, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या कष्ट है, क्या परेशानी है आपको। तो ना तो आपके घर में बैठने से सुधरेगी, उस समस्या का हल होगा, और ना ही आपके आपस में बात करने से कुछ होगा। आपको जाना पड़ेगा अपने गांव के सरपंच के पास, मुखिया के पास, अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे यहाँ जो बहुत सारी गाँवों की महिलाओं की समस्या है, जिनका आज तक हल कभी नहीं निकला है, उसका कारण एक यही है कि वो अपनी समस्या को लेके घर में बैठी रहती है। उनको डर है कि उनकी सास कुछ कहेगी, तो ससुर कुछ कह देंगे, कुछ उनका पति कुछ कह देगा, वो बेचारी चुप रहती है। ये चुप रहना बंद कर दीजिए, है ना, कि हम चुप मार के बैठ जाएंगे, ये मत करिए। आप जाइए, अपनी समस्या को बताइए, तभी उसका हल निकल सकता है। तो और बच्चे, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग सब बहुत खुश हैं हम लोगों की 2 दिन की सेमिनार से जो है वो। तो अब मैं बच्चों आप लोगों के लिए ही कुछ एक खास बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको कि आपको मान के चलना पड़ेगा। और मैं इसको एक श्लोक के रूप में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों के पास पेंसिल कागज है तो लिख भी लीजिएगा क्या श्लोक में आप लोगों को कहूंगी। काव्यचेष्टा बहुध्यानम्
श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थ्यं पंचलक्षणः विद्यार्थ्यं पंचलक्षणः। अब समझे, आप कुछ समझ में आया? विद्यार्थियों के 5 क्या लक्षण है? कौवे की भांति चेष्टा करते रहना चाहिए। कौवे को अगर अपना कोई भी पेड़ चाहिए ना तो रुकता नहीं, करता रहेगा, चोंच मारता रहेगा, तो वो हो गई काक चेष्टा। आप लोगों ने सुना होगा बगुला भगत का, उनका ध्यान कंसंट्रेशन कितना होता है, तो उनकी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। बको ध्यानम श्वान निद्रा। और डॉग को तो आप जानते हैं ना, अगर एक कंकड़ी भी फेंक देंगे उठ के खड़ा हो जाएगा बात करने, तो कितना अलर्ट होता है। तो श्वान निद्रा तथैव च, उस कुत्ते की तरह हम लोगों को जागृत रहना चाहिए कि क्या हो रहा है चारों तरफ हमारे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है ना। तो ये हम आप लोगों से कहना चाहते, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। अल्पहारी से मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ कम खाइए, अल्पहारी के मतलब ज्यादा फस मत करिए। अगर मम्मा ने घर में आलू टमाटर की सब्जी बना दी है तो उसी से हम खुश हैं। मान लो पनीर नहीं भी बनी है, डजंट मैटर, है ना। तो जो चीज हमें सामने आ जाए हम उससे खुश रहेंगे। अल्पहारी। ग्रह त्यागी के मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दीजिए। ग्रह त्यागी से मतलब ये है कि जो ये अननेसेसरी आजकल बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें हो रखी है ना, कि हमें सिनेमा जाना है, मॉल जाना है, इस तरह की ड्रेस पहननी है, और ये इस मैचिंग ये कपड़े पहनने हैं, सैंडल मैचिंग होना चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर जब तक आप विद्यार्थी हैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का ये काम नहीं है। तो ये जो 5 लक्षण है, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, जो मैंने कहा ना, विद्यार्थ्यम पंच लक्षण। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन कितना आसान हो जाएगा आगे बढ़ना, और आपको खुद कितनी सफलता मिलेगी हर एक कदम पे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस श्लोक को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और नहीं तो लोहिया जी से कहेंगे आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। और हमेशा मन में रखिए कि हमें इन 5 चीजों के ऊपर चल के आगे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, पढ़ना है, खूब सफलता प्राप्त करनी है, माँ बाप का कहना मानना है, और सोसाइटी में, समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में बड़े होना है। ठीक है ना, बस। तो अपनी सेशन, अब ये सेशन खत्म कर रहे हैं, और मैं जो है मैडम को तो कहूँगा कि आप यहीं विराजे हुए रहें, और वेलकम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर बलराम राठौर साहब, आप प्लीज आइए। लोहिया साहब, आप वर्मा साहब, और संतोष जी प्लीज आप आइए। नहीं, आपके लिए प्लीज। हमें मालूम है कि आप बहुत थक चुके होंगे, और हम चाहेंगे कि सेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 2 दिन की सेमिनार का समय थोड़ा कम होता है, तो हमने बहुत सारी बातें जो है 2 दिन में करने की कोशिश की, उसके आप लोगों को जो थोड़ा सा ज्यादा हमें सुनना पड़ा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वैलिडिटी का जो कार्यक्रम है वो जल्दी समाप्त हो जाए। कटोर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पधारें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है प्रोफेसर वाल्को कर रहे हैं, और मुख्य अतिथि मैडम शर्मा है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कटोर साहब और लोहिया साहब से मिलने को कृपया ऊपर आए। आप सभी लोग मेरे से बड़े हैं, मुझे मैं आग्रह करता हूँ कि हम ये कार्यक्रम को जल्दी से समाप्त कर दें। स्वागत के लिए बहुत ही जल्दी क्विकली हम ऊपर ना उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्लावर बुके से स्वागत करके आप प्लीज आइए।
मैं जोया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसमें एक थोड़ा सा पार्ट ये था, जहाँ तक वेलकम का सवाल है, तो इससे बढ़िया वेलकम क्या हो सकता है। जिस ढंग का इवेंट हुआ और जिस ढंग का पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया और ये इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज बीइंग डन इन ए मोस्ट मेटिकुलस मैनर। लेट अस पुट हैंड पहले ये कहना चाहूंगा कि सारे इवेंट के अंदर प्रोफेसर हमारे साथ का इतना सहयोग, इतना इन्वॉल्वमेंट, एक बड़ा मेटिकुलसली माइन्यूटली देखने का परिणाम मिलेगा। साथ ही के अंदर मैं कहूँगा कि जो हमारे साथ हैं इतने एक्टिव हैं, इतनी मेटिकुलसली हर चीज को मॉनिटर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई चीज में कमी न रहे। तो मैं कभी ढूंढ रहा था तो मैं फेल हो गया, मतलब कहीं कोई किसी चीज में नहीं, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से देखता है। अब आता है इशू रिपोर्ट का। अब मुझे साइड रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, पर मैं ये सोचता हूँ कि सबको पता है कि रिपोर्ट क्या होनी चाहिए। रिपोर्ट सिंपली ये है कि दोनों दिन के जो मैंडेट था वो सबसे पहले मैं चाहूंगा मंजू शर्मा मैडम यस करे कि वो मैंडेट मीट हुआ। एंड वी हैव नासिक ऑनरेबल नासिक प्रेसिडेंट प्रोफेसर बलराम भार्गव साहब। तो हमने ये इंश्योर किया था कि जो इवेंट होगा वो केवल इवेंट के पर्पस से नहीं होगा, इट शुड बी मीनिंगफुल इवेंट। एंड हम लोग काफी टाइम तक अभी साथ भी थे और शेयर कर रहे थे। आई एम श्योर दैट he is the president of NASI. He conveyed that he is very much contented. It means he is very much satisfied. जिनका जो इवेंट था अब ये आता है कि हमारे पार्ट पर हम ये कहेंगे कि ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता अगर इतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो सारे स्टूडेंट्स, सारे स्कॉलर्स, सारी बहनें माताएं जिन्होंने इसमें भाग लिया, वो सब हमारी तरफ से बधाई के पास। ताकि सभी ये कहा गया कि बहुत शॉर्ट में करना है, तो मेरा टाइम हो गया। आई हैव कन्वेड। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को भी ये फील करता हूँ कि जो इवेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं गुना अच्छा रहा। Every speaker, I would like to convey, every speaker, every invited speaker, every guest who have taken pains, कितना उन्होंने तकलीफ देख के, कोई बॉम्बे से आए, कोई लखनऊ से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई जयपुर से आए, सब जगह हम सोच सकते हैं इन सब लोगों के लिए कुछ घंटे निकालना मुश्किल है, 3 दिन बनाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। पर उसके बावजूद भी हम जानते हैं, जब मैडम मंजू शर्मा मैडम से बात हो रही थी, कह लगे भाई बलराम तो बहुत मुश्किल है, वो तो 1 मिनट भी उनका लिए वहां से एंड छोड़ना मुश्किल है। पर उसके बावजूद भी हम we would convey our gratitude to all of them कि despite their tremendous commitment, उनको लगता है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन को छोड़ना, अपने कमिटमेंट को छोड़ना, ये सब बहुत मुश्किल है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला। आए सबका हम बिना इनके पार्टिसिपेशन के ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। और जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिए वो इतने एक से एक प्रेजेंटेशन इतना यूजफुल था कि सबको मजा आ गया। और खास तौर से आज में जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने जिस ढंग की शेयर की अपनी, उसको
लोगों का कहानी स्टोरी जो भी ये कर रहे हैं उन सब के बारे में पर्सनली जान के, खासतौर से हमारी बहने माताओं से जानकर कि वो किस तरह से इन्वॉल्व है। हमारी शुभकामनाएं सबको कि आगे आने वाले समय में जो कहा गया है, जो आपकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो सब होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि केवल आप लोगों को ही इस तरह की दिक्कतें हैं। हम लोग जो कि वर्षों से कई चीजों में काम कर रहे हैं, वो उतार चढ़ाव सब जनों को आज भी फेस करना पड़ता है। और उसके बावजूद जो हमारी किरण मैडम ने जो सेफ चीज है वो बहुत असरटिव है। वो कहती है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, और यही एक अच्छा अप्रोच है। आप लोगों को भी मन में सोचना पड़ेगा, कभी दिक्कत आई फेस करेंगे और निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि अब नाउ आई हैंड इट ओवर टू हिम, द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, क्योंकि शायद कुछ फेलिसिटेशन वगैरह बन रहा एक लाइन, हाउ यू फील। तो सबसे पहले तो मैं अपनी महिलाओं को कहूँगी, आप लोग यहाँ आए हैं तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, तुम लोगों के रहने से यहाँ इस हॉल में इसमें एक तरह की जागृति आ गई, स्फूर्ति आ गई कि इतने सारे हमारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जिनके चेहरे में देख रही हूँ कि खुशी से फूले समा रहे हैं। हमारा आना यहाँ सचमुच में जो है वो ठीक हो गया कि अगर आप लोग इतने खुश हैं और आप लोगों को कुछ मिला। और इस जो पूरा इसका समारोह का जो उद्योग किया है, जो संचालन किया है, डॉक्टर टोबिया जी ने, हम लोग सब उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर टोबिया, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ये सब कुछ करने के लिए। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारे वेरी एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जिनको कि बिल्कुल समय नहीं होता है, प्रोफेसर बलराम भार्गव जी बैठे हुए हैं, दिल्ली में आप उनकी शक्ल भी नहीं देख सकते हैं, इतने बिजी वो रहते हैं। और डॉक्टर कटोल सर और प्रोफेसर एच.एन. वर्मा, तो ये सब लोग जो है वो, और परमजीत मैम, जो वहाँ से आई हैं, सब लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, और सबने समय निकाला यहाँ आके और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आखिर में ये तो कहना ही पड़ेगा कि जो बच्चे बैठे हुए हैं और जो महिलाएं सब बैठी हुई हैं, आप लोगों के आने से ही हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। अगर आप लोग यहाँ न होते तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ था। तो आप सबको हम लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जीवन हमेशा सफल हो, खुश रहें, आप खूब पढ़ें, पर एक ही बात मन में रखें, हमें पढ़ना है बस, ठीक है ना। तो इन शब्दों के संग में अंत में टोबिया जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्हें हम लोगों को मौका दिया कि आप लोगों से हम लोग मिल सकें। धन्यवाद। आप सभी के साथ जो बिताए गए हैं, हमें बहुत सीखने का मौका मिला इसमें। बहुत सी चीजें इस तरह से हमने नहीं सोची पहले, इस तरह आने से पहले। तो आज जो 2 दिन में क्या लगा रही है, बहुत कुछ उपलब्ध है, जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो जिस तरह से कनेक्शन नहीं है। उस कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए अकेडमी क्या काम करेगी, भानु साहब और मैडम करेंगे, उसमें सहयोग देंगे। क्योंकि आपको उपलब्ध है, कितने लोगों ने फायदा पड़ा है। बहुत सारे जो यहाँ के लोगों की अपनी मन से दी हुई मेहनत है, सबकी आज के जितने प्रोजेक्ट है वो जो है व्यक्तिगत मेहनत से बने हुए हैं। वो इतनी सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, शहर की हैं, सारी शामिल है। लेकिन जितनी हमारे पास स्कीमें उपलब्ध है, आज हमसे 20% है पूरे
महिलाओं को 50% का टारगेट कितनी जल्दी से पहुंचना है, उसके लिए हमारी अकेडमी कैसे करेगी, बहुत सारा अभी हमें रास्ता दिखा करने का। तो लोगों के राज्य से जो युवा जो कर रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। करने वाले तो कुछ और आगे करना चाहते हैं, जो और अच्छा होगा, लेकिन उसमें से और कितना फायदा उठा के हम 2 गुना 3 गुना विकास या 3 साल में 4 साल में कर लेंगे, ताकि 2020 में सोचा है कि महिलाएं इतनी होगी, महिलाओं के लोग नहीं सकता नौकरियां मिलेगी, उसकी सरकारी स्कूलों में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरे वाले को एग्रीकल्चर की बातें थी, और हम हर चीज से क्या कर सकते हैं, साइंस से प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन गांव की हर एक या छोटे शहर की आम महिला के जीवन में क्या बदलाव, कितनी जल्दी से 50% के जो उद्योगी है उनकी मालिक होंगी और 17 से करोड़ लोगों को नौकरी देंगी, उसके लिए जो स्कीम है वो बढ़ना सभी का काम है। हम लोग भी जितनी कोशिश कर सकते हैं, मैडम जैसे रिजाइन कर रही है, हम करते जाएंगे, बाद में सब जितने तो उसमें रहेगा, आप जो कुछ कर सकते हैं हमारे राज्य में तो नहीं हुए साहब, तो मोमेंट ये हो चुका है। अभी नहीं हो अपनी बात रखिए, दमन साहब लो, शर्मा साहब लो, मैडम शर्मा को लो, प्रोफेसर शर्मा को लो, दुबे जी को लो, मैडम को लिया, हर किसी के ने अपना चयन कर रखा है इस जगह। तो मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत असीमित संभावनाएं, बहुत कुछ करने की संभावनाएं, लेकिन उसके लिए सप्ताह बेहतर। तो जो मैडम बार-बार स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, आप क्या करोगे, आपको भी करना भाई, आपने तो इस प्रोसेस को तेल डालना है, अपने लिए भी, अपने साथ की महिलाओं के लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि आप ही बताइए कि कौन सी चीज कामयाब हो रही है, कौन सी कामयाब नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, और आप ये भी उसके लिए कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो जागृति के लिए, जागृति के साथ भी कितना उससे कर सकते हैं, तो बहुत कुछ उपलब्ध है। बहुत सी स्कीमें तो 2014-15 के बाद ही शुरू हुई है, उससे पहले भी सैकड़ों में है, और सैकड़ों में किसानों में फायदा होगा। का बात है, राजस्थान में कितना हुआ, हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए हम उसका कैसे फायदा उठाएंगे, उसके फायदा फायदा बनाएंगे, मतलब हम उससे कितने सशक्त होंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आने के बाद लगता है बहुत कुछ करने का भी एक चारों तरफ का रास्ता खुल जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इतना मैंने नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ा और सब कुछ जब सुना उत्साह है उसके बाद, मैं तो बहुत कुछ महसूस करता हूँ अपने आप को आगे करने के लिए कुछ लक्ष्य बेटा, और मैं आपका धन्यवाद, आपका से रिक्वेस्ट है कि वो मैं सभी लोग सब कुछ कह चुके हैं, मैं थोड़ा सा नहीं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को, रवि साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी तरह से आप लोग से तैयार होकर के अपने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे पुरोहित जी जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने जिस तरह से ये कार्यक्रम का पूरा संचालन किया है वो मेरे ख्याल से सभी के लिए सराहनीय है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा और मेरे ख्याल से आप सब लोग अग्री करेंगे कि अगर इस प्रोग्राम में मैडम नहीं आती या ठाकुर साहब नहीं आते तो शायद ये प्रोग्राम में इस तरह से जो जिस तरह से लोग आज जो हमारे स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरह से अपने टॉक्स दी, उससे मुझे लगता है कि ये जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, इनको कुछ एक जरूर दिशा निर्देश मिला होगा और ये एक उत्साह जागरूक हुआ होगा कि भाई हम भी कुछ इस तरह से करें जिससे कि हम इस तरह और तो भाई बच्चों से
चाहूंगा कि जो कार्यक्रम हुआ है जिससे आपको प्रमुख के साथ सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन सबों के साथ मैं मुझे सबका धन्यवाद करूंगा, खासतौर पर आपके आने से जो एक गलत यहाँ पे मॉस्किल हो गया वो शायद ना होता है। और आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से अपनी समस्याएं रखी और जो उद्यमी आपके साथ एसोसिएटेड हैं जिस तरह से वो आपके साथ लगे हुए हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहूँगा कि वो इसी तरह से अपना कार्य करते रहे। और इन सबों के साथ मैं सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। Thank you very much for this event and for this successful event. लोहिया का आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरह से आपने हर चीज को निपटा करके यहीं पे कर दिया, इवन आपको जितने पेमेंट थे वो भी आपने निपटा दिए, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर बातों 2 मिनट के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई टीम पुरोहित लोहिया कोठारी, टीम जिसने पैसिफिक यूनिवर्सिटी और नासिक के सहयोग से ये जो कार्यक्रम और गोष्ठी आयोजित की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इस गोष्ठी से ये साबित हो गया कि भारत आगे बढ़ रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, राजस्थान के छात्र आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद। आपने बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों ने रात को देख करके काम किया। हमारा पूरा था कि हम सबको सर्टिफिकेट पे बांटने में समय का अभाव है, हम उनके काम को, उनकी सहायता को, उनकी हेल्प को बिल्कुल कम नहीं आते। और अगर जैसे ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मतलब नहीं है उनके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। वो हमें इस बात में यहाँ पर हम सिर्फ लोगों को सर्टिफिकेट मेडल्स दिलवाना चाहते हैं। इन्होंने हमें दिन रात सहयोग करके कार्यक्रम को सफल कराने के लिए सहयोग किया। और रात की घटना को लोगों ने
टीम पीजी ऑफिस के करीब 13 लोग हैं और आईटी की टीम में 5 लोग हैं। दिन रात मेहनत करके ये चालू किया। हम लोगों को धन्यवाद देते हैं काशी राजस्थान चैप्टर की तरफ से, और मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में धन्यवाद देता हूँ और उनको सर्टिफिकेट मैं पर्सनली प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। End for today, and Nasi Rajasthan chapter would like to acknowledge, recognize the immense contribution being made by Professor Kothari साहब। पहले उनसे निवेदन करूंगा कि आए और उनसे एक presentation and मैं ज्वाइन करूंगा और हमारे प्रेसिडेंट भी ज्वाइन करेंगे। One for your contribution, this event would have never been effective. And also on behalf of the university and university and especially Rajasthan chapter for giving university this opportunity. We have so many scientists from across India. अगर आप लोग नहीं होते तो ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलती। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर से बहुत लाभान्वित हुए और आशा करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह का सहयोग आपसे मिलता रहेगा। अच्छी इवेंट हम आगे भी कराते रहेंगे जिससे समाज और ओवरऑल स्टेट और उदयपुर है जो कि वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ सके। तो ये बातें से उन्हें आशा है। ये फेलिसिटेशन है ये on behalf of Nasi Rajasthan chapter, but not only to Professor Kothari, to Professor Kothari, to Executive University, entire staff who made this event possible. Now, last में हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। इसी में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनको रिसीव करें। I think group photo लेके चाय अच्छा जी so then the last item is group photo group photo के लिए यही है अच्छा नेशनल एनिमल का बता रहे हैं लास्ट ग्रुप फोटो के पहले नेशनल एनिमल सब खड़े हो जाइए प्लीज और फिर रुकिएगा ग्रुप फोटो सबके साथ में सभी के साथ सारे पार्टिसिपेंट जो भी इन्वॉल्व हैं each and everybody should join for a group photo जनगणमन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय कैसे अरेंज करना बताना चलिए